जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को मो ऑडियो आ वीडियो जदि मो ऑडियो आ वीडियो क्लियर अछि टिके समस्त चैट सेक्शन में मैसेज करो सर ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। जो हमें 60 नंबर क्लास सीरीज स्टार्ट करथिले एई 60 नंबर क्लास सीरीज रो आज हमें क्लास नंबर 12 पाखरे पहुंची जाईची। जो माने क्लास नंबर 11 पर्यंत देखिन और रिकॉर्डेड सेक्शन में वीडियो अछि समस्त ताको देखिदबो। आज टॉपिक कोन ना इलेक्ट्रिकल मशीन न प्रथम 5 चैप्टर जोटा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन हमर कंप्लीट हो जाइथिला। आज हम सेकंड टॉपिक को स्टार्ट करिबा जहार ना होची कोन ना डीसी जनरेटर। ए डीसी जनरेटर टॉपिक रु तमे लाइफ रे जे कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दबो जेमिति कि ओपीटीसीएल दियो, ओएचपीसी दियो, ओएलसी दियो, एसएससी दियो, आरआरबी दियो, ओडब्ल्यूएससी दियो, ओजेई दियो, जे कोनोसी लाइफ रे तमे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दबो ई डीसी जनरेटर चैप्टर टा बहुत बहुत इंपोर्टेंट। ए डीसी जनरेटर चैप्टर रे तमन कोन निहाती भाबरे कोन ना गोटे रो दीटा क्वेश्चंस निहाती भाबरे तमे लाइफ रे जे कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दबो। जो माने भी रेडी अच्छो क्लास स्टार्ट करिया को टिके समस्त चैट सेक्शन में यस लिखि दियो सर रेडी बोली। आज रो टॉपिक डीसी जनरेटर हमें क्लास 1 को डिस्कशन करिबा। ए डीसी जनरेटर क्लास 1 रो टॉपिक मु तुमको कोन कोन पिले कवर करेबी ना क्लास नंबर 1 ने प्रथम पढेबी डीसी जनरेटर कोन, सेकंड पढेबी प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर कोन, थर्ड पढेबी जनरेटिंग एक्शन एंड रिक्वायरमेंट फॉलोइंग कंपोनेंट कोन, तापर पढेबी सिंगल लूप जनरेटर कोन, तापर पढेबी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कोन, तापर पढेबी ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन कोन, तापर पढेबी लास्ट को एप्लीकेशन ऑफ डीसी मशीन डीसी जनरेटर। ए 8टा सब टॉपिक को मु तमन को डिस्कशन करिवि। आज रो क्लास रे मु तुमको एनी हाउ एतिकी जिंस कवर करबा को भल भाबरे ट्राई करबी। फଳରେ जे कोनोसी तमे लाइफ रे गोटे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तब निहाती भाबे मु आशा करूची गोटे रो दीटा क्वेश्चन सेठुस। समस्त रेडी क्लास स्टार्ट करिया को जो माने भी रेडी अछ टिके समस्त चैट सेक्शन में यस लिखि दियो रेडी बोली। वेरी गुड। फर्स्ट देखो डीसी जनरेटर कहिले कोन बुझी सर। ए डीसी generator is an electrical machine that transfer or convert mechanical energy into DC electricity relying on the fundamental principle of electromagnetic induction। जे पचारिबो ए डीसी जनरेटर कहिले कोन बुझिबो सर। ए डीसी जनरेटर कहिले मु एया बुझुची सर ये होची गोटे इलेक्ट्रिकल मशीन जे के ट्रांसफर करूची बा कन्वर्ट करूची कोन ना मैकेनिकल एनर्जी टू डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तामाने डीसी जनरेटर काम कोन सर। डीसी जनरेटर काम होची मैकेनिकल एनर्जी रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दबो को प्रिंसिपल ले ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तामाने डीसी जनरेटर को प्रिंसिपल ले काम करूची तमे सिंपल कहि परिबो सर डीसी जनरेटर ता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल ले काम करूची। तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन डिस्कशन करिबा ना प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। सर डीसी जनरेटर वर्किंग प्रिंसिपल ऊपर डिस्कशन करिबा। ए डीसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ। डीसी जनरेटर को प्रिंसिपल ना जो प्रिंसिपल ले डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ होची सेही प्रिंसिपल साहाଯ୍य बा फाराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन साहाଯ୍य हमर डीसी जनरेटर काम करूची। द प्रिंसिपल इज नथिंग बट द फाराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ए जो डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ हमें कोन कहउचे को लॉ बोली कहउचे ना फाराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट स्टेट दैट when the conductor caught in magnetic field or flux linking with a rotating conductor, electromotive force is set up in that conductor or coil. If the conductor is connected to the load, then current flow। कौन कहिला सर डीसी जनरेटर। सर डीसी जनरेटर को प्रिंसिपल ले काम करूची ना डीसी जनरेटर फाराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल ले काम करूची।
ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल को ईएमएफ इंड्यूस होची ना डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ होची डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ होची ये फैराडेस लॉ कौन कहूची सर जते बेले गोटे कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड भीतर रखा जाए सर जते बेले गोटे कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड भीतर रखा जाए से कंडक्टर ईएमएफ इंड्यूस हो एटा फैराडेस लॉ तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कौन ना जेनरेटिंग एक्शन रिक्वायर्ड फॉलोइंग कंपोनेंट कौन कहिला हमर इंड्यूस ईएमएफ पई केतेटा कंपोनेंट दरकार सर इंड्यूस ईएमएफ पई हमर तीनटा कंपोनेंट दरकार प्रथमे कंपोनेंट नंबर कोन 1 कोन ना कंडक्टर और कॉइल दरकार सेकंड कंपोनेंट ना कोन ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन और फ्लक्स दरकार थर्ड कंपोनेंट कोन ना रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड फ्लक्स भीतर हवा दरकार जदि ईएमएफ इंड्यूस करबा दरकार डायनामिकल इंड्यूस ईएमएफ पई केतेटा कंपोनेंट दरकार ना से तीनटा कंपोनेंट दरकार गोटे होची मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ जोतरे से फील्ड लाइन जनरेट करि परिबा बा फ्लक्स एमिति कोन ना जनरेट करि परिबा आ कोन दरकार गोटे कंडक्टर दरकार बा गोटे कॉइल दरकार सपोज कंसीडर करो एटा गोटे रेक्टेंगुलर कॉइल गोटे कंडक्टर आ कॉइल को जदि रोटेशन मोशन करिवो एमान को भितरे जदि रिलेटिव मोशन हबो एमान को मध्य रे जदि रिलेटिव मोशन हबो देन कंडक्टर रे कोन ना ईएमएफ इंड्यूस हो ता माने ईएमएफ इंड्यूस कहिले कोन बुझिबो सर गोटे मैग्नेटिक फील्ड भीतर गोटे रेक्टेंगुलर कॉइल को जदि प्लेस करा जाए तबेले सेठी ईएमएफ इंड्यूस हो से दिन पर रिलेटिव मोशन तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म आसिला कोन ना सिंगल लूप जनरेटर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन आसिला पिले ना सिंगल लूप जनरेटर it consists of a single rectangular coil or loop rotating in a uniform magnetic field कौन कहला ए सिंगल लूप जनरेटर कहा कंसिस्ट है ना सिंगल लूप जनरेटर मतलब सिंगल रेक्टेंगुलर को कॉइल कोन प्लेस करा जाय इट बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कौन करूची ना सिंगल लूप जनरेटर ता को प्रिंसिपल ले बेस अछि ना गोटे सिंगल लूप जनरेटर ता फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने बेस अछि इट इज एफिशिएंसी वेरी लो ए जो सिंगल लूप जनरेटर रे एफिशिएंसी रो वैल्यू बहुत लो ड्यू टू स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर एंड हाई रिपल जो कम्यूटेटर रे हेवी स्पार्किंग जो हमर एफिशिएंसी तार लो 4 नंबर पॉइंट नॉट प्रैक्टिकल फॉर जनरेशन ओनली फॉर थ्योरेटिकल स्टडी सिंगल लूप जनरेटर जे कोनोसी जगह रे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नाही केवल थ्योरेटिकल एप्लीकेशन बा थ्योरेटिकल स्टडी पय हमें सिंगल लूप जनरेटर को कंसीडर करू it is in this an alternating current is converted into direct current in the external circuit with the help of splitting or commutator कौन कहला ए जो सिंगल लूप जनरेटर हमर कोन होची ना सिंगल लूप जनरेटर हमर अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट रे ये कन्वर्ट करूची ना स्प्लिटिंग ए सिंगल लूप जनरेटर कोन सिखुछ सर ए सिंगल लूप जनरेटर मु एया सिखुची जे गोटे सिंगल रेक्टेंगुलर कॉइल निया जाउची जोटा कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल ले बेस अछि यार एफिशिएंसी बहुत लो रहउची कम पे ना स्पार्किंग प्रोड्यूस होची आ कम्यूटेटर जो आ रिपल अधिक प्रोड्यूस होची एठी कोनोसी प्रकार कोन ना एठी थ्योरेटिकल स्टडी करा जाउची प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नाही इन एही अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट करूची सिंगल लूप जनरेटर बाय द हेल्प ऑफ कोन ना स्प्लिटिंग तापर आसिला नोट पॉइंट स्टार मार्क दो बहुत इंपॉर्टेंट इन द एक्चुअल मशीन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कॉइल कनेक्टेड इन ए कम्यूटेटर सेगमेंट ये जो सिंगल लूप जनरेटर रे लार्ज नंबर ऑफ कॉइल को कम्यूटेटर सेगमेंट सहित कनेक्टेड कराते द ईएमएफ और करंट डिलीवर दिस कॉइल इन एक्सटर्नल लोड विथ द सिंगल लूप जनरेटर ओनली सिंगल रेक्टेंगुलर कॉइल यूज कौन कहला इस सिंगल लूप जनरेटर गोटाए केवल रेक्टेंगुलर कॉइल व्यवहार कर डीसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल डीसी जनरेटर को प्रिंसिपल ले काम करूची ना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ए डीसी जनरेटर कैन बी कंसिस्टिंग एज अ रोटेटिंग एम्पलीफायर तेनु करी डीसी जनरेटर रो अदर ना कोन होची सर डीसी जनरेटर रो अदर ना होची रोटेटिंग एम्पलीफायर कौन सर कहला सर ए जो सिंगल लूप जनरेटर रो किछि इंपोर्टेंट तीनटा पॉइंट कहला कोन सर जनरेटर अदर ना होची रोटेटिंग एम्पलीफायर जनरेटर वर्क करछि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल रे आ ये जनरेटर रे जो लार्ज नंबर ऑफ कॉइल कनेक्टेड होची कम्यूटेटर सेगमेंट रे कनेक्टेड हो
एबे किछि क्वेश्चन डिस्कशन करबा जोटा बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे तमनकर पडितला। क्वेश्चन नंबर 1, ए डीसी जनरेटर कन्वर्ट। समस्त चैट सेक्शन में आंसर दियो, केही भी साइलेंट रहिबोनी, समस्त निज निजर रेस्पॉन्स शेयर करियो। डीसी जनरेटर कन्वर्ट, डीसी जनरेटर को एनर्जी को एनर्जी कन्वर्ट करूची। एक्सीलेंट भाई, समस्तंगर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर बी सर, डीसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करूची। डीसी जनरेटर को एनर्जी ना मैकेनिकल एनर्जी रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ए डीसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल। डीसी जनरेटर को प्रिंसिपल ले काम करूची। एक्सीलेंट, समस्तंगर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर सी सर, डीसी जनरेटर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने काम करूची। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ईएमएफ इंड्यूस होए। फैराडेज लॉ रे जो ईएमएफ इंड्यूस होउची। एक्सीलेंट, समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए कंडक्टर कट द मैग्नेटिक फ्लक्स। जते बेले गोटे कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करे सेते बेले ईएमएफ इंड्यूस। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following not required for generating action in a DC generator? Which of the following not required for generating action in DC generator? जेनरेटिंग एक्शन पाई कंडक्टर दरकार और कॉइल दरकार, मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स दरकार, जमन को रिलेटिव मोशन दरकार किंतु कैपेसिटर दरकार नहीं। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ए सिंगल लूप जनरेटर कंसिस्ट ऑफ। सिंगल लूप जनरेटर कहा को नहीं कंसिस्ट। एक्सीलेंट, समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए सिंगल रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ए सिंगल रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 6, द सिंगल लूप डीसी जनरेटर इज मेनली यूज्ड। सिंगल लूप डीसी जनरेटर मेनली यूज्ड। एक्सीलेंट, समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, थियोरिकल स्टडी एंड डेमोन्स्ट्रेशन पाई। थियोरिकल स्टडी एंड डेमोन्स्ट्रेशन पाई सिंगल लूप जनरेटर एप्लीकेबल। क्वेश्चन नंबर 7, in a DC generator the alternating current induced in the coil converted into unidirectional coil। कहा साहाଯ୍य रे गोटे डीसी जनरेटर एसी करंट रो डीसी करंट कन्वर्ट करूची। कहा साहाଯ୍य रे गोटे डीसी जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट रे कन्वर्ट करूची। एक्सीलेंट, समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर, कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग। कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग साहाଯ୍य रे डीसी जनरेटर कोन करूची ना एसी टू डीसी कन्वर्ट करूची। क्वेश्चन नंबर 8, why is the efficiency single loop generator is very low। कौन पाई गोटे डीसी को कारण गोटे डीसी जनरेटर सिंगल लूप जनरेटर एफिशिएंसी लो हुए। एक्सीलेंट, समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर बी, ड्यू टू स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर एंड हाई रिपल। कम्यूटेटर स्पार्किंग और हाई रिपल जोगु गोटे सिंगल लूप जनरेटर रे हमर एफिशिएंसी लो। क्वेश्चन नंबर 9, a practical DC generator differ from a single loop generator because it has। गोटे प्रैक्टिकल डीसी जनरेटर को यदि कंपैरिजन करा जाए सिंगल लूप डीसी जनरेटर सहित कोन आसे। एक्सीलेंट, समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लार्ज नंबर ऑफ कॉइल कनेक्टेड इन ए कम्यूटेटर। सेटी कम्यूटेटर सहित गोटे सेगमेंट, एटी कम्यूटेटर सहित लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट कनेक्टेड था। क्वेश्चन नंबर 10, ए डीसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल व्हिच रूल। को रूल साहाଯ୍य रे गोटे डीसी जनरेटर प्रिंसिपल काम करे।
एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फ्लेमिंग राइट हैंड रूल सागर काम कर ए जो डीसी जनरेटर रो इंट्रोडक्शन पार्ट रो जो 10टा क्वेश्चन डिस्कशन कली कहार केतेटा क्वेश्चन ठीक हैला के समस्त चैट सेक्शन में मैसेज करो सर मोर एतिकीटा क्वेश्चन ठीक हैला 10 रु 10 10 रु 9 एक्सीलेंट जो माने भी फुल बुझ एक्सीलेंट समस्त ट्राई करो फुल लगे पीडीएफ पछरे तम मानको आंसर शीट प्रोवाइडेड कर देछि समस्त आंसर शीट मध्ये देख पारे तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म डिस्कशन करिवा कोन ना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन ना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल स्टेट दैट if we arrange our thumb, forefinger and a middle finger of the right hand perpendicular to each other जदि हमर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कोन कहूची सर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल रे हमें जनरली तीनटा फिंगर रो व्यवहार करिथा गोटे होची कोन थंब फिंगर आ गोटे होची फोरफिंगर आ गोटे होची मिडिल फिंगर ये जो तीनटा जाक फिंगर परस्पर कोन ना परपेंडिकुलर टू ईच अदर परस्पर केते डिग्री लका रहबे परपेंडिकुलर बा 90 डिग्री लका रहबे थंब फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ए कंडक्टर थंब फिंगर कोन रिप्रेजेंटेड करूची ना डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बा मोशन आ फोर फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कौन कहिला सर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ले थंब फिंगर काम कोन ना डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर फिंगर रा काम कोन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ मिडिल फिंगर रा काम कोन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस कर सेति पई कुआ जाउची फादर मदर चाइल्ड फादर माने फोर्स बा मोशन एटा थंब फिंगर मैग्नेटिक फील्ड थंब फिंगर पर को फिंगर ना फोर फिंगर चाइल्ड माने करंट एटा होची मिडिल फिंगर मन रखिल एफएमसी फकीर मोहन कॉलेज बालेश्वर पिला जे हमर कोन फादर मदर चाइल्ड फादर माने एफ माने फोर्स माने थंब फिंगर एम माने मैग्नेटिक फील्ड माने फोर फिंगर सी माने चाइल्ड माने कोन ना मिडिल फिंगर शॉर्टकट रे मन रखि दो फादर मदर चाइल्ड तापरे नोट पॉइंट ए नोट पॉइंट रो बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे मध्ये क्वेश्चंस आसी द पर्पस ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट when conductor move in a magnetic field जते बेले सर गोटे कंडक्टर ता मैग्नेटिक फील्ड रे मूव करे ना सेते बेले इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट बा इंड्यूस ईएमएफ जे पचारिबो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कोन पय व्यवहार करा जाउची ना गोटे डीसी जनरेटर रे इंड्यूस ईएमएफ बा इंड्यूस करंट रो डायरेक्शन को मेजरमेंट करिया पय हमें कोन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल व्यवहार कर ए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कोन ना डीसी जनरेटर पय एप्लीकेबल एबे किछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा जोटा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ले राइट हैंड रूल ले तमरा डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे क्वेश्चन नंबर 1 फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कोन पय व्यवहार करा जाउछि एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर बी direction of induced current in a conductor direction of induced current in a conductor question number 2 in Fleming a right hand rule thumb finger represent in Fleming a right hand rule thumb finger कहा को represented करू excellent समस्तंगर correct answer option number C direction of motion of the conductor direction of motion of the conductor question number 3 in Fleming a right hand rule four finger represent Fleming a right hand rule four finger कहा को represent करू excellent समस्तंगर correct answer option number B direction of a magnetic field question number 4 Fleming right hand rule middle finger represent
फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ले मिडिल फिंगर कौन रिप्रेजेंट करूची एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्वेश्चन नंबर 5 फ्लेमिंग राइट हैंड रूल थंब फिंगर forefinger and a middle finger should arrange केते डिग्री रे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ले थंब फिंगर forefinger and middle finger को अरेंज करा जाउची एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी परपेंडिकुलर टू ईच अदर माने 90 डिग्री जो माने ए जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन करैली कहारे कतटा क्वेश्चन ठीक हैला कि समस्त चार सेक्शन में मेसेज कलो सर मोर एतिकिटा क्वेश्चन ठीक है पांच रो पांच समस्तंगर एक्सीलेंट इजी क्वेश्चंस दिला ए जो एबे लेटेस्ट कंटेंट नो क्लास चली छी ए लेटेस्ट कंटेंट क्लास रो तुमको सब टॉपिक को आस्ते आस्ते कवर करा जीवो आग पछय कि जे कोनस तमे गुरीड होबनी सब कंटेंट को कवर करा जीवो गोटे फोल्डर बने दिया छी से फोल्डर रे तमे कोन ना पाइ छी पीडीएफ विथ कोन ना क्लास का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट मु तमनकर केतरा टॉपिक सब कवर करनी प्रथमे फंडामेंटल टॉपिक कवर करी छी सेकंड रे एसी थ्योरी कवर करी छी थर्ड चैप्टर रे कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन कवर करी छी एबे 4 नंबर टॉपिक चली छी जहार ना होची कोन ना डीसी जनरेटर आज प्रथम क्लास निहाती भाबे समस्त को इंटरेस्टिंग एंड भल लगे तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन ना ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए डीसी जनरेटर एमसीएल एग्जाम आसिन एडमिट कार्ड एमसीएल एग्जाम में भी जुलाई 20 आडी कवर अछि जुलाई सेकंड वीक ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए डीसी मशीन देखो कौन कहला ईएमएफ इक्वेशन as the armature rotate a voltage is generated in the current in case of generator the emf is denoted by following eg is equal to p phi zn divided by 60 कौन कहला सर गोटे आर्मेचर जेते बेले रोटेट करिवो डीसी जनरेटर सर दीटा पार्ट गोटे स्टार्टर पार्ट आ गोटे होची रोटर पार्ट ए स्टार्टर पार्ट रे कोन रहउची ना फील्ड वाइंडिंग प्रेजेंट रहउची आ रोटर पार्ट रे कोन ना आर्मेचर वाइंडिंग प्रेजेंट रहउची ए फील्ड वाइंडिंग रे कोन ना मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होबो आ आर्मेचर वाइंडिंग जेले रोटेट करिवो सेते बेले कोन ना ईएमएफ इंड्यूस होबो ए ईएमएफ इंड्यूस होउची केते होउची ना ईजी इज इक्वल टू p phi zn डिवाइडेड बाय 60 p कोन ना नंबर ऑफ पोल phi कोन ना फ्लक्स पर पोल z कोन ना टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर n कोन ना स्पीड ऑफ द आरपीएम ए कोन ना नंबर ऑफ पैरेलल कोन कहिला सर गोटे डीसी जनरेटर रे केते ईएमएफ इंड्यूस होची तार फार्मूला कोन सर ईजी इज इक्वल टू कोन ना p phi z डिवाइडेड बाय 60 जदी हमें लैप वाइंडिंग को कहिबा सर लैप वाइंडिंग रे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ a इज इक्वल टू p तमाने eg इज इक्वल टू जो p phi zn डिवाइडेड बाय 60 ए तमान लिखुतल ए p सहित समान माने कटि गले phi zn डिवाइडेड बाय 60 ता माने ये कोन हैला ना इंडिपेंडेंट ऑफ पोल कोन इंडिपेंडेंट ऑफ पोल जेहेतु इंडिपेंडेंट ऑफ पोल ता माने eg कोन हैला ना eg कोन हैला ना कमिबा ता माने लो वोल्टेज आउ हाई करंट एप्लीकेशन पाई हमें को वाइंडिंग प्रेफर करू छै ना लैप वाइंडिंग देखो तापर आसीला वेव वाइंडिंग रे कोन पैरेलल पाथ 2 ना eg इज इक्वल टू p phi zn डिवाइडेड बाय 60 इनटू a जगह रे पड़ी गला 2 ता माने p phi zn डिवाइडेड बाय 100 पड़ी ता माने eg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल ता माने जोटी पोल अछि सेटी हायर परिमाण रे ईएमएफ अछि ता माने हाई वोल्टेज आउ लो करंट एप्लीकेशन पाई हमें वेव वाइंडिंग को प्रेफर करू छी बुझ पारले कोन कहली ए ईएमएफ इक्वेशन सर ईएमएफ इक्वेशन आपण जदी लैप वाइंडिंग पाई कहउछंती फार्मूला कोन ना सर phi zn by 60 कारण ये phi zn by इंडिपेंडेंट ऑफ पोल तनो करी लो वोल्टेज
हाई करंट पाई लैप वाइंडिंग प्रिफर करा जिवो आउ हाई वोल्टेज लो करंट पाई वेव वाइंडिंग प्रिफर करा जिवो ई वेव वाइंडिंग रे पैरेलल पाथ रो वैल्यू सब बड़ 2 तापर नेक्स्ट पॉइंट नोट पॉइंट कौन दला इफ नंबर ऑफ पोल इज 4 देन पैरेलल पाथ फॉर लैप वाइंडिंग सर गोटे एग्जांपल देला एई एग्जांपल ले पोल रो वैल्यू केते देला ना 4 पचारिला पैरेलल पाथ रो वैल्यू केते मन रखिबो एई लैप वाइंडिंग रे मन रखिबो लैप वाइंडिंग रे पोल जति की पैरेलल पाथ से जदि सेकंड क्वेश्चन टिके टर्मिनोलॉजी चेंज कर दबो कोन ना टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इन ईच पाथ जदि पचारिबो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इन ईच पाथ तेबे हेले नंबर ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाय पैरेलल पाथ गोटे एग्जांपल दउची जेमिति समस्त मते चार्ट सेक्शन में आंसर कर मु कहली गोटे लैप वाइंडिंग रे गोटे कोन गोटे लैप वाइंडिंग रे नंबर ऑफ कंडक्टर देला 100 आ पोल रो वैल्यू देला 4 देन कैलकुलेट कर टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर पाथ total number of conductor per path गोटे लैप वाइंडिंग रे नंबर ऑफ कंडक्टर देला 100 पोल देला 4 लैप वाइंडिंग देन कैलकुलेट करो टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ सर फार्मूला कौन सर टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पैरेलल पाथ z बाय a जे नंबर ऑफ कंडक्टर के देछि 100 पैरेलल पाथ के पोल यदि पैरेलल था तो 4 काटले 25 जो माने भी 25 देछो समस्त नंबर करेक्ट आंसर दिसे ए बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान दो तापर देखो फॉर वेव वाइंडिंग सर वेव वाइंडिंग पाई पैरेलल पाथ रो वैल्यू केते ना 2 टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ केते ईच कंडक्टर देखिबे z बाय 2 एग्जांपल दउची समस्त मते चार्ट सेक्शन में आंसर मु कहली गोटे वेव वाइंड गोटे डीसी जनरेटर रो वेव वाइंडिंग नंबर ऑफ कंडक्टर देला 100 देन पोल देला केते ना पोल देला होची 4 देन कैलकुलेट करलो कंडक्टर पर पाथ गोटे डीसी जनरेटर वेव वाइंडिंग रे नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर 100 पोल देला 4 देन कैलकुलेट करो कंडक्टर पर पाथ सर वेव वाइंडिंग टाइम कंडक्टर पर पाथ होची z/2 ता माने 100/2 केते होची 50 एटा होची लेफ्ट आउट वेव वाइंडिंग रो डिफरेंस ता एटू कंडक्टर पर पाथ रे पहुंचाई बाय 12.5 केमिति है पैरेलल पाथ वेव वाइंडिंग रो 2 100/2 समान 50 हवा लागबी एबे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करबा जोटा ईएमएफ इक्वेशन नो तमरो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आसुछ क्वेश्चन नंबर 1 द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए डीसी जनरेटर रो ईएमएफ इक्वेशन नो फार्मूला कोन Eg इज इक्वल डीसी जनरेटर रे ईएमएफ इक्वेशन नो फार्मूला Eg इज इक्वल टू एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर ए सर Eg इज इक्वल टू P5Zn डिवाइडेड बाय 60 क्वेश्चन नंबर 2 इन द ईएमएफ इक्वेशन Eg इज इक्वल टू P5Zn डिवाइडेड सिंबल Z ए Z कोन रिप्रेजेंटेड करूछ ईएमएफ इक्वेशन नो Z कोन रिप्रेजेंट करूछ एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सर टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर को Z रिप्रेजेंट करूछ क्वेश्चन नंबर 3 इन लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू लैप वाइंडिंग रे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ का संगे समान है एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑफ पोल संगे समान क्वेश्चन नंबर 4 इन वेव वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन वेव वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 5 if the number of pole is 4 then the number of parallel path in lap winding गोटे लैप वाइंडिंग रे पोल रो वैल्यू जदी 4 हुए पैरेलल पाथ रो वैल्यू केते
एक्सीलेंट सर लैप वाइंडिंग रे पोल जति की पैरेलल पाथ से ये भी मध्यम चार्ज हो ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट ए जो हमर डिस्कशन कली ईएमएफ इक्वेशन जो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन कली कहार केतरा क्वेश्चन ठीक हैला टिके समस्त चार्ट सेक्शन मेसेज कलो जो ईएमएफ इक्वेशन नु पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन कली कहार केतरा क्वेश्चन ठीक हैला टिके समस्त चार्ट सेक्शन में वेरी गुड 5 रु 5 समस्त नंबर एक्सीलेंट से बड़ा भलो रेस्पॉन्स आसतो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म देखिबा एप्लीकेशन ऑफ डीसी जनरेटर बहुत सारा इंपोर्टेंट एथि पय बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे एप्लीकेशन पचारे एप्लीकेशन ऑफ डीसी जनरेटर प्रथमे देखिबा हमें डीसी जनरेटर दी प्रकार गोटे सेपरेटली गोटे सेल इज सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर को जगह व्यवहार करा जाउची फॉर टेस्टिंग इन लैबोरेटरी फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर फॉर एक्सटर्नल डीसी पावर फील्ड का फॉर टेस्टिंग ऑफ डीसी फॉर टेस्टिंग लैबोरेटरी स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर एक्सटर्नल डीसी पावर पाई हमर व्यवहार करा जाउची तापर आसिला डीसी शंट जनरेटर तापर आसिला डीसी शंट जनरेटर को जगह रे डीसी शंट जनरेटर को व्यवहार करा जाए जो जगह रे बैटरी चार्जिंग बैटरी चार्जर यूज फॉर एक्साइटर इन अल्टरनेटर यूज फॉर small power supply use for small power supply electroplating पाई general lighting पाई constant voltage जो जगह रिक्वायर्ड को जगह रे डीसी शंट जनरेटर रिक्वायरमेंट अछि सर बैटरी चार्जर पाई ओटे अल्टरनेटर एक्साइटर हिसाब रे स्मॉल पावर सप्लाई जोटी करा जाउची इलेक्ट्रोप्लेटिंग पाई जनरल लाइटिंग पाई कांस्टेंट वोल्टेज जो जगह रे दरकार से जगह रे हमें डीसी शंट जनरेटर को प्रेफर करू तापर आसिला डीसी सीरीज जनरेटर ए डीसी सीरीज जनरेटर कोठी ना यूज डीसी लोकोमोटिव डिस्ट्रीब्यूशन बूस्टर इन ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आउ आर्क लाइट सीरीज आर्क लाइटिंग रे हमें जनरली कोन डीसी सीरीज जनरेटर को प्रेफर करू डीसी लोकोमोटिव बूस्टर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सीरीज आर्क लाइटिंग रे हमें कोन ना व्यवहार तापर आसिला डीसी कंपाउंड जनरेटर एक कंपाउंड जनरेटर दुई प्रकार गोटे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर आ गोटे क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर ए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कोठी ना डीसी आर कोल डीसी वेल्डिंग पाई इंपोर्टेंट बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पचारिछि डीसी वेल्डिंग पाई को जनरेटर व्यवहार करा अछि ना डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर आ आर्क लैंप मै पद्य व्यवहार करा अछि तापर आसिला क्यूमुलेटिव एक क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर एक क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर तीन प्रकार गोटे कोन ना लेवल कंपाउंड ओवर कंपाउंड आउ अंडर कंपाउंड एक डीसी कंपाउंड जनरेटर जो लेवल कंपाउंड जनरेटर कोड यूज करा जाउची ना पावर सप्लाई ऑफिस मान करे जो पावर सप्लाई से लेवल कंपाउंड व्यवहार करा जाउची आ क्यूमुलेटिव कंपाउंड कोठी यूज फॉर लाइटनिंग आ पावर सप्लाई पर्पस where constant voltage is required suitable for heavy power service ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାପରେ ଆସିଲା ओवर कंपाउंड जनरेटर कोठी ना टू कंपनसेट वोल्टेज ड्रॉप फीडर इन लॉन्ग ट्रांसमिशन ପାଇଁ वोल्टेज ड्रॉप जो फीडर होची सेठी को जनरेटर व्यवहार करा जाउची ना ओवर कंपाउंड जनरेटर को व्यवहार करा जाउची एबे किछि क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा जोटा कि तमरा बारंबार एप्लीकेशन ऑफ डीसी जनरेटर आछि क्वेश्चन नंबर 1 केही भी साइलेंट रहिबनी समस्त निज निज चार्ट सेक्शन में आंसर करो ए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कॉमनली यूज सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कोड व्यवहार करा जाय एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ना बी एक्सीलेंट ए ने ऑप्शन नंबर बी
कौन ना स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कोठी व्यवहार करा जाउची सर डीसी मोटर रो स्पीड कंट्रोल करबा पई हमें जनरली सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर व्यवहार करूची। क्वेश्चन नंबर 2 which type of DC generator is commonly used in battery charger बैटरी चार्जर रे को जनरेटर को हमें कॉमनली भाବରେ व्यवहार करूଛୁ। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर बी डीसी शंट जनरेटर ए डीसी शंट जनरेटर को बैटरी चार्जिंग ପାଇଁ व्यवहार करूଛୁ। क्वेश्चन नंबर 3 डीसी सीरीज जनरेटर आर कॉमनली यूज्ड इन डीसी सीरीज जनरेटर आर कॉमनली यूज्ड इन एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी डीसी लोकोमोटिव ପାଇଁ डीसी सीरीज जनरेटर व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 4 which type of DC compound generator used for lighting and power supply constant voltage require को compound generator टा lighting and power supply ପାଇଁ जो जगह रे constant voltage से जगह दरकार। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर दरकार। क्वेश्चन नंबर 5 an over compound generator is mainly used over compound generator mainly कोड व्यवहार करा जाउछि। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी compensate voltage drop in feeder or long transmission line लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन फीडर रे वोल्टेज को कंपनसेशन करिया ପାଇଁ ओवर कंपाउंड जनरेटर व्यवहार करा जाय। ए जो एप्लीकेशन ऑफ जनरेटर जो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन करली कहार केतेटा क्वेश्चन ठीक हैला ठीक समस्त चैट सेक्शन में मैसेज करा। वेरी गुड। आज क्लास रे तुमको टारगेट कौन देथिली ना 8टा सब टॉपिक देथिली ए 8टा सब टॉपिक को मु तुमको आज भलो भाबरे कंप्लीट करली कौन कौन ना प्रथम डिस्कशन कली स्टेप नंबर 1 ने कौन डीसी जनरेटर कौन सेकंड डिस्कशन कली प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर केमिति काम करूची थर्ड डिस्कशन कली सिंगल लूप जनरेटर 4 नंबर डिस्कशन कली फ्लेमिंग राइट हैंड 5 नंबर डिस्कशन कली ईएमएफ इक्वेशन और 6 नंबर टॉपिक डिस्कशन कली एप्लीकेशन ऑफ डीसी जनरेटर जो माने एक एति की क्वेश्चन जदी गोटे क्वेश्चन आसुची ना ए भीतर 100% तमरो कोन ना एग्जाम रे से क्वेश्चन आसीथि हमरा ए जो 60 सीरीज रो केते नंबर सीरीज कंप्लीट हैला ना 12 नंबर सीरीज कंप्लीट हैला जो माने भी 12टा क्लास पर्यंत देखिनो करेक्टेड सेक्शन रे वीडियो अछि समस्त ताको देखिनो समस्त लास्ट पर्यंत क्लास ताको देखिथिबार बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू एवरीवन। आमे जो 60 सीरीज स्टार्ट करिथिले 60 सीरीज रो आज हमर क्लास नंबर केते स्टार्ट करिबा ना क्लास नंबर 13 आमे ऑलरेडी तमन को 12टा क्लास डिस्कशन करि देइछु जो माने भी देखिनो और रिकॉर्डेड सेक्शन में वीडियो अछि समस्त देखिनो टॉपिक कोन चलिथिला ए डीसी जनरेटर टॉपिक चलिथिला ए डीसी जनरेटर रो मो तुमको क्लास नंबर 1 कंप्लीट करि नै जाइछि आज हमें डीसी जनरेटर रो क्लास नंबर 2 को डिस्कशन करिबा टोटल ऊपर तमनकर 13टा क्लास हेछि ए जो सीरीज रो एली रैंकर्स रो ए जो सीरीज क्लास नंबर कोन ना 2 डीसी जनरेटर रो ऑलरेडी मु तुमको गोटे क्लास डिस्कशन करि सारिछि आज हमें डीसी जनरेटर रो सेकंड क्लास डिस्कशन करिबा आज रो टॉपिक रे तमनको कंटेंट डिटेल कोन कोन मु पढेबी आज रो क्लास रे मु तुमको फर्स्ट पढेबी टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर कोन तापरे पढेबी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कोन तापरे पढेबी सर्किट डायग्राम ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कोन सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर कोन शंट वुंड डीसी जनरेटर कोन सीरीज वुंड डीसी जनरेटर कोन देन पढेबी कंपाउंड वुंड डीसी जनरेटर कोन डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर कोन क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर कोन टाइप्स ऑफ कंपाउंड जनरेटर कोन शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर कोन लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कोन माने आज रो टॉपिक ता केवल क्लासिफिकेशन ता टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर अछि एटा को जे कंप्लीट करि देला एति के टॉपिक को निहाती भाबरे तमे जे कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दबो जेमिति ओएचपीसी ओपीटीसीएल ओएमसी एसएससी आरआरबी
ओजेई जेकोसी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम दियो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एनी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दियो एइति की टॉपिक रो 100% कहूची गोटे क्वेश्चंस निहाती भाबरे आसीबो ही आसी गोटे रो दीटा क्वेश्चंस निहाती भाबरे आराइछो समस्त रेडी तो आज रो ए क्लास देखिबा को जो माने भी रेडी अच्छा समस्त टिके चैट सेक्शन में मेसेज कर दो यस बोली जो माने भी लाइव अच्छो समस्त निज निजर रेस्पॉन्स कर वेरी गुड देखो टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर a DC generator are generally classified according to method of their field excitation सर डीसी जनरेटर को हमें को दृष्टि क्लासिफिकेशन करूछु सर डीसी जनरेटर फील्ड एक्साइटेशन दृष्टि देखि कि डीसी जनरेटर को हमें दुई भाग रे विभक्त करूछु गोटे होची सर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर आ गोटे होची सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर तामाने फील्ड एक्साइटेशन दृष्टि देखि कि सर डीसी जनरेटर को हमें दुई भाग रे विभक्त करूछु गोटे होची सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर आ गोटे होची सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर अगेन ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर पुनी तीन प्रकार कोन ना शंट वुंड डीसी जनरेटर सीरीज वुंड डीसी जनरेटर आ कंपाउंड वुंड डीसी जनरेटर अगेन पुनी कंपाउंड वुंड डीसी जनरेटर दी प्रकार लंग कंपाउंड वुंड जनरेटर आ शॉर्ट कंपाउंड वुंड जनरेटर एटा होची कोन ना टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर कौन कहिला सर डीसी जनरेटर को हमें दी भाग विभक्त करिछु को दृष्टि ना अकॉर्डिंग टू फील्ड एक्साइटेशन दृष्टि ए जो फील्ड एक्साइटेशन दृष्टि दुई प्रकार गोटे होची सेपरेटली आ गोटे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर तीन प्रकार शंट सीरीज कंपाउंड कंपाउंड दुई प्रकार लंग शंट आ शॉर्ट शंट एबे डिस्कशन करिबा प्रथम टाइप डीसी जनरेटर जहार ना कोन होची ना सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर जहार ना कोन ना सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर देखो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर ए डीसी जनरेटर whose field winding or coil is energized by separately excitation डीसी सोर्स कौन कहला ना जो डीसी जनरेटर रे फील्ड वाइंडिंग बा कॉइलटा एनर्जाइज करा जाउची गोटे सेपरेट डीसी सोर्स द्वारा ताको हमें कहिबा कोन ना सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर द फ्लक्स प्रोड्यूस विथ अनसैचुरेटेड रीजन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल of the pole that is flux is directly proportional to field current but its saturated region flux remains constant कोन कहिला सर गोटे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर रे कोन होची ना गोटे फील्ड वाइंडिंग थाए ए फील्ड वाइंडिंग को कोन ना एक्सटर्नल डीसी सप्लाई दिया जाउची जहा फल रे हमर से अनसैचुरेटेड रीजन ने हमर कोन ना मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करची ए फ्लक्स ता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट सैचुरेटेड रीजन ने आ अनसैचुरेटेड रीजन ने रिमेन कांस्टेंट था तापर सर्किट डायग्राम देखिबा को सर गोटे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर केमितिया ना एमिति गोटे फील्ड वाइंडिंग थिबो ताको डीसी सप्लाई दिया जाइतिबो आ ओटी आर्मेचर कोन वाइंडिंग थिबो ए टाइप रो जो देखुछो एटा होछ कोन ना गोटे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कोन ना डायग्राम कोन कोन एथरे लागिची सर गोटे डीसी सप्लाई लागिची गोटे फील्ड वाइंडिंग लागिची गोटे आर्मेचर वाइंडिंग लागिची आ गोटे लोड लागिची पचारिबो गोटे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर रे केतेटा कंपोनेंट लागिची सर चारिटा कंपोनेंट कोन कोन सर गोटे डीसी सप्लाई गोटे फील्ड वाइंडिंग बाम पटे लागुची आ डाहाना पटे कोन गोटे आर्मेचर वाइंडिंग आ लोड पचारिबो कोन सर गोटे डीसी जनरेटर रे गोटे डीसी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर रे जनरेटेड वोल्टेज केते होउची ना Eg इज इक्वल टू कोन ना P5Zn डिवाइडेड बाय 60 P5Zn डिवाइडेड बाय 60 आ आर्मेचर करंट रो वैल्यू केते सर गोटे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर रे आर्मेचर करंट रो वैल्यू लोड करंट संगे समान आ टर्मिनल वोल्टेज रो वैल्यू केते ना Vt इज इक्वल टू Eg minus IAR Vt is equal to कोन ना Eg minus IAR
आउ केते इलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट होची ना सर Eg into Ia पावर डिलीवर टू लोड केते होची ना V into I कांटेक्ट ब्रश रेजिस्टेंस ड्रॉप केते ना सर Vt is equal to Eg minus IRA minus 2 कांटेक्ट ब्रश ड्रॉप पर कोन नोन द टर्मिनल वोल्टेज देख कोन कहिली मन देखि सुन सर गोटे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर जते बड़ कहूची मो माइंड रे कोन स्ट्राइक होची सर तार सर्किट डायग्राम के बितिया सर गोटे डीसी सप्लाई फील्ड वाइंडिंग को दिया जाइथिबो आ डाहाण पटे कोन गोटे आर्मेचर सहित लोड कनेक्टेड हेतिबो डाहाण पटे कोन ना आर्मेचर सहित लोड कनेक्टेड एथे कोन कोन कैलकुलेशन करा जाय सर गोटे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर 6 टा जिंस कैलकुलेशन करा जाय प्रथमे कोन सर एटी केते जनरेटेड वोल्टेज होची सर Eg is equal to P5Zn divided by 60 एथिरे पोल देथिबो फ्लक्स देथिबो नंबर ऑफ टर्न देथिबो आ नंबर ऑफ स्पीड देथिबो आ नंबर ऑफ कंडक्टर देथिबो तापर सेकंड कोन कैलकुलेशन करे दे आर्मेचर करंट सर गोटे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर लोड करंट रो वैल्यू छ आर्मेचर करंट रो वैल्यू एटा क्वेश्चन ने गिवन थर्ड जिंस कोन से टर्मिनल अक्रॉस रे केते वोल्टेज हबो ना Eg सर जनरेटेड ईएमएफ माइनस IAR ड्रॉप आर्मेचर ड्रॉप को नेग्लेक्ट कर दे टर्मिनल वोल्टेज पाइ केते पावर डेवलपमेंट हो Eg into I केते लोड को पावर डिलीवर हो ना V into I तबे ले टोटल टर्मिनल अक्रॉस रे केते वोल्टेज हो ना Vt is equal to Eg minus IAR minus 2Vd ब्रश ड्रॉप को जदी कंसीडर करे गोटी एग्जांपल दोउची जेमिति समस्त मते चार सेक्शन ने आंसर दो एग्जांपल दोउची केही भी साइलेंट रहिबनी समस्त निज निजर रिस्पांस शेयर करी मु कहिली एटा गोटे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर एटा तार लोड मु कहिली फील्ड वाइंडिंग आरएसएस फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस तला 220 आ लोड करंट देला गोटे मिनिट कोन ना आरएसएस देला केते शंट फील्ड रेजिस्टेंस 220 ओम आउ लोड करंट रो वैल्यू देला 20 एंपियर आउ आर्मेचर रेजिस्टेंस रो केते देला ना आर्मेचर रेजिस्टेंस रो वैल्यू केते ना 0.1 ओम देन कैलकुलेट कर टर्मिनल अक्रॉस रे केते वोल्टेज समस्त आंसर करो सर टर्मिनल अक्रॉस रे वोल्टेज रो फार्मूला कोन सर मु एति की जानि छी सर Vt is equal to कोन ना Eg जनरेटेड ईएमएफ छाड़ दे जनरेटेड ईएमएफ रो वैल्यू 230 वोल्ट Eg माइनस IAR Eg केते ना 230 माइनस आर्मेचर लोड करंट रो वैल्यू जहां आर्मेचर करंट रो वैल्यू से 20 इनटू आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.1 सुन सुन कटि गला 2 तामाने 228 वोल्ट ए टाइप रो क्वेश्चंस तुमको एग्जाम रे जनरली देखिया को मिले समस्त ए टाइप रो क्वेश्चंस पढिले करि परिबो जो माने भी ए टाइप रो क्वेश्चंस पढिले करि परिबो ठीक है समस्त चार सेक्शन मते यस लिखिलो वेरी गुड तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म के लिए डिस्कशन करिबा सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर इज ए डिवाइस in which the current to the field winding is supplied by generator itself ये सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर रे कोन होची सर ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर रे फील्ड वाइंडिंग को करंट जनरेटर कोन निजे ही सप्लाई प्रोवाइडेड कर In self-excited DC generator, field coil may be connected parallel with the armature or partly in series or partly in parallel with armature winding. कौन कहिला
सर ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर रे फील्ड कॉइल टा मे बी पैरेलल लागि पारे नहले सीरीज लागि पारे विथ आर्मेचर वाइंडिंग सहित अकॉर्डिंग टू सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर ये तीन प्रकार हेते क्लासिफिकेशन गोटे शंट वुंड जनरेटर सीरीज वुंड जनरेटर और कंपाउंड वुंड जनरेटर मध्ये हुआ जाए कौन कहिला सर सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर विषय में जानिया को चाहूची ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर रे जनरेटर निज इटसेल्फ द्वारा फील्ड वाइंडिंग को करंट सप्लाई करथे ए फील्ड वाइंडिंग रे जो फील्ड कॉइल अछि से आर्मेचर सहित मे बी सीरीज लागि पारे नहले पैरेलल लागि पारे ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर को तीन भाग रे क्लासिफिकेशन करा जायछि गोटे शंट गोटे सीरीज आ गोटे होछि कंपाउंड प्रथम डिस्कशन करबा इंपोर्टेंट टॉपिक जोटा कि हमर शंट वुंड डीसी जनरेटर देखो बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे देखिया को पाइबो ए शंट जनरेटर न्यूमेरिकल इन शंट वुंड जनरेटर द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड अक्रॉस द आर्मेचर वाइंडिंग फॉर्मिंग ए पैरेलल एंड शंट यूनिट शंट फील्ड वाइंडिंग केमिति लागि थाए आर्मेचर सहित ना पैरेलल ले लागि थाए तापर लोड लागि शंट फील्ड करंट रो वैल्यू केते ना आईएसएच डिवाइडेड बाय आईएसएच इज इक्वल टू V by RSH आउ आर्मेचर करंट रो इज इक्वल टू IA is equal to ISS शंट फील्ड करंट प्लस लोड करंट टर्मिनल अक्रॉस रे केते वोल्टेज हुए V is equal to EG minus IARA टर्मिनल ले केते वोल्टेज हुए जदी ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप को इंक्लूड करंती सर V is equal to EG minus IARA minus 2B पावर डेवलपमेंट केते ना EG into I पावर आउटपुट केते ना V into I एबे तमन को मोटे क्वेश्चंस दउची समस्त जेमिति मते चार्ट सेक्शन ने आंसर दो एग्जांपल गोटे डीसी शंट जनरेटर देला गोटे डीसी शंट जनरेटर देला जार वोल्टेज केते होउची ना 220 वोल्ट आउ शंट फील्ड रेजिस्टेंस रो वैल्यू केते ना 110 ओम आउ लोड करंट रो वैल्यू 200 एंपियर then calculate कर तुमको शंट फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट कौन कहला इन ए डीसी शंट जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज रे 220 वोल्ट ड्रॉप होउची सेते थिबा आ शंट फील्ड रेजिस्टेंस रो वैल्यू 110 ओम आ लोड करंट रो वैल्यू 200 एंपियर देन कैलकुलेट कर आर्मेचर करंट एंड शंट फील्ड करंट फार्मूला अछि शंट फील्ड करंट रो कोन ISH इज इक्वल टू V by RSH आर्मेचर करंट रा फार्मूला होची शंट फील्ड करंट प्लस लोड करंट केही भी साइलेंट रहइबो ने जेंदी रिस्पांस समस्त अंगर आसीबो सॉल्यूशन सर शंट फील्ड करंट रा फार्मूला कोन सर ISH इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय RSH टर्मिनल वोल्टेज हो सर 220 शंट फील्ड रेजिस्टेंस हो 100 2 एंपियर आसिला तापरे आर्मेचर करंट रो फार्मूला कोन सर शंट फील्ड करंट प्लस लोड करंट माने 2 एंपियर प्लस 200 एंपियर ता माने 202 जो मानकर आर्मेचर करंट 200 एंपियर और शंट फील्ड करंट 2 एंपियर आसिला ठीक समस्त चार्ट सेक्शन जोरदार यस लिखि दिया वेरी गुड एक्सीलेंट समस्त अंगर करेक्ट अछि वेल डन तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट जनरेटर डिस्कशन करिबा टाइप जहार ना होची पिले कोन ना सीरीज वुंड जनरेटर जहार ना कोन ना सीरीज वुंड जनरेटर इन सीरीज वुंड जनरेटर द फील्ड कॉइल आर कनेक्टेड सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग देखो ए जो फील्ड कॉइल ता कोन शंट फील्ड कॉइल ता कहा सहित कनेक्टेड हेची ना आर्मेचर सहित सीरीज एथिरे कोन प्रथम जिंस कोन देला सर सीरीज फील्ड करंट इज इक्वल टू आर्मेचर करंट और लोड करंट माने ए सीरीज जनरेटर रे आर्मेचर करंट रो वैल्यू जहा लोड करंट रो वैल्यू ताहा और सीरीज फील्ड और टर्मिनल वोल्टेज रो वैल्यू कोन V इज इक्वल टू
Eg minus Ia bracket start Ra plus Rs power develop करते Eg into Ia note point कौन sir the flux developed by the series field winding is directly proportional to armature current माने I directly proportional to series field current sir series field winding रे जेतिकी current बा armature winding रे जेतिकी current से अनुसार सेतिकी परिमाण flux produce but is only true before magnetic saturation after saturation flux becomes constant even current flowing through the increase saturation पूर्व था और saturation पर कौन ता वैल्यू ता इंक्रीज है एबे गोटे न्यूमेरिकल दोची समस्त मते चार्ट सेक्शन में आंसर करो गोटे डीसी सीरीज जनरेटर गोटे डीसी सीरीज जनरेटर रे जदि आर्मेचर करंट रो वैल्यू जदि आर्मेचर करंट रो वैल्यू 20 एंपियर हुए तबे हेले लोड करंट रो वैल्यू गोटे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन दोची गोटे डीसी सीरीज जनरेटर रो आर्मेचर करंट रो वैल्यू जदि 20 एंपियर हुए लोड करंट रो वैल्यू सर मु एते की जानि छी गोटे डीसी सीरीज जनरेटर रे सर मु एते की जानि छी गोटे डीसी सीरीज जनरेटर रे आर्मेचर करंट रो वैल्यू जहा सीरीज फील्ड वाइंडिंग रो करंट ता आ लोड करंट रो वैल्यू ता इज इक्वल टू 20 एंपियर एमान को मध्य जो करंट रो वैल्यू पछरे समस्त याके बुझी की कहि परियो 20 एंपियर एक्सीलेंट जो माने देइछो भी करेक्ट आंसर एबे देखिबा टाइप नंबर 2 प्रॉब्लम कोन पछरछ टाइप नंबर 2 प्रॉब्लम गोटे डीसी सीरीज जनरेटर को जनरेटर सर डीसी सीरीज जनरेटर रे जनरेटेड ईएमएफ होची 230 वोल्ट आर्मेचर करंट होची 10 एंपियर आर्मेचर रेजिस्टेंस होची 10 ओम सीरीज रेजिस्टेंस होची 20 ओम देन कैलकुलेट करो टर्मिनल अक्रॉस रे केते वोल्टेज ड्रॉप होची लोड टर्मिनल अक्रॉस रे वोल्टेज गोटे डीसी सीरीज जनरेटर रे जनरेटेड ईएमएफ रो वैल्यू 230 वोल्ट आर्मेचर करंट रो वैल्यू 10 एंपियर आर्मेचर रेजिस्टेंस रो वैल्यू 10 ओम आउ सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस रो आ कोडे मिले वेरी गुड देख सॉल्यूशन कोन कहिला पचारिछि कोन ना टर्मिनल अक्रॉस रे वोल्टेज ए टर्मिनल अक्रॉस रो वोल्टेज रो VT इज इक्वल टू कोन सर Eg माइनस Ia ब्रैकेट स्टार Ra प्लस Rs ता माने Eg केते सर 230 माइनस आर्मेचर करंट केते ना 10 ब्रैकेट आर्मेचर रेजिस्टेंस केते 10 सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस केते 20 10 केते 30 ता माने 230 माइनस 30 into 10 केते 300 ता माने माइनस 70 वोल्ट गोटे मन इच्छा एग्जांपल लेथिले तेणु करी तमन को पाई कोन आंसर नेगेटिव नले नेगेटिव रे आंसर आसे समस्ते बुझी पारिलो ए टाइप रो प्रॉब्लम तमे एग्जाम रे पढिले करि परिबो तो जो माने भी ए टाइप रो एग्जाम रे प्रॉब्लम रे पढि परिबो समस्त टिके चार सेक्शन में यस लेखो सर मु ए टाइप रो प्रॉब्लम करि वेरी गुड वेल डन तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म डिस्कशन करिबा पिले जहार ना कोन ना कंपाउंड वुंड जनरेटर एक कंपाउंड वुंड जनरेटर have both series field winding and shunt field winding one winding place series with armature and other in place with parallel with armature sir ये जो कंपाउंड वुंड जनरेटर रे एक कंपाउंड वुंड जनरेटर रे कोन कंपाउंड वुंड जनरेटर रे दीटा वाइंडिंग है गोटे सीरीज वाइंडिंग आ गोटे शंट वाइंडिंग इस सीरीज वाइंडिंग को आर्मेचर सहित सीरीज कनेक्टेड करा जाए और शंट वाइंडिंग को आर्मेचर सहित पैरेलल कनेक्ट करा जाए बोली से कहूछ देख तापर आसीला डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर ए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर रे इन सीरीज फील्ड अपोज द शंट फील्ड the generator said to be differential compound a differential compound कोन ना total flux is equal to
शंट प्लस माइनस सीरीज प्लस माने अपोजिशन करिवो सीरीज डिफरेंशियल कंपाउंड रे टोटल फ्लक्स रो वैल्यू कोन ना शंट फील्ड फ्लक्स माइनस सीरीज फील्ड फ्लक्स से बड़ा क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर in cumulative compound DC generator the shunt field winding stronger the series field assist the shunt generator should be cumulative कौन माने cumulative compound generator रे series field और shunt field flux परस्पर कौन additive nature रे माने total flux और net flux रो वैल्यू कौन ना increase हुई तेणु करी cumulative compound generator application बहुत सारा अछि किंतु differential compound generator application के कम तापर आसीला टाइप्स ऑफ कंपाउंड जनरेटर दुई प्रकार जनरली कंपाउंड जनरेटर देखिया को मिलेबो गोटे शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर आ गोटे होची लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर कोन कोन ना गोटे शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर आ गोटे लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर प्रथमे डिस्कशन करिबा शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर आज काली रो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस कोन ना ए टाइप रो गोटे डायग्राम आज इट इज थोइ दोची ए टाइप रो कोन थोइ दोची ना गोटे डायग्राम थोइ दोची पचारुची एटा को प्रकार डायग्राम देखो शॉर्ट शंट कहिला माने आर्मेचर सहित जदि आर्मेचर सहित शंट फील्ड वाइंडिंग ता पैरेलल ले लागि थाए ताको तेबेले कहिबा शॉर्ट शंट बोली कहिबा शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर जनरेट वेयर ओनली शंट फील्ड वाइंडिंग पैरेलल विथ आर्मेचर जदि पैरेलल माने शंट फील्ड माने एमिति आर्मेचर थिबो ता सहित शंट फील्ड वाइंडिंग पैरेलल थिबो एपटे सीरीज फील्ड वाइंडिंग एटा होची शॉर्ट शंट ई शॉर्ट शंट रे कोन इंपोर्टेंट ना आर्मेचर करंट रो फार्मूला पचार आर्मेचर फार्मूला कोन आर्मेचर करंट ना लोड करंट प्लस शंट शंट रे आर्मेचर करंट इज इक्वल टू कोन सर लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट आउ सीरीज फील्ड रे केते करंट आईएससी इज इक्वल टू केते ना लोड करंट रो वैल्यू जहा सीरीज फील्ड करंट रो आउ आईएसएस शंट फील्ड करंट रो वैल्यू केते ना V प्लस आईएससी series field into RSC divided by RSC terminal voltage केते V is equal to EG minus IARA minus ISC into RSC power development केते armature EG into IA power deliver to load ना V into IA देख कौन कहिली ना शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर ए शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर तमे कोन सिखिबो सर ए शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर मु कोन सिखुची ना प्रथम दिन सिखुची सर्किट डायग्राम कोन कोन सर आर्मेचर सहित शंट फील्ड वाइंडिंग का पैरेलल ले रही आ एथि केतरा जिंस कैलकुलेशन करा जाउची ना आर्मेचर करंट आईए रो वैल्यू केते ना सर लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट ये प्रथम केस नंबर 1 केस नंबर 2 कोन सीरीज फील्ड रे केते करंट फ्लो हुए सर लोड करंट देछि कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग करंट 3 नंबर शंट फील्ड करंट केमिति पाइबा खाली शंट फील्ड करंट जेतोले कैलकुलेशन करूचो V बाय RSH करूचो एडी टिके चेंज करियो ए V जगह ऐड करियो कोन ना ISC इनटू RS जेहेतु एई कोन एई वाइंडिंग का रहछ 4 नंबर जिंस कोन वोल्टेज केते पाइबो टर्मिनल वोल्टेज सर EG माइनस IARS आउट करतो एटी सीरीज फील्ड वाइंडिंग एक्स्ट्रा अछि तनो करी ISC इनटू RSC एतिक नॉलेज तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म डिस्कशन करिबा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन सर लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर ए लॉन्ग शंट कंपाउंड रे कोन ना सर लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर ए जो सीरीज जनरेटर कोन ना शंट फील्ड वाइंडिंग का पैरेलल कोन गोटे सीरीज जनरेटर सर गोटे सीरीज जनरेटर पैरेलल ले जदी शंट फील्ड वाइंडिंग लगे दोचे तबेले मोर एटा हे जाउची कोन लॉन्ग शंट कंपाउंड ए लॉन्ग शंट कंपाउंड रे आर्मेचर करंट रो फार्मूला कोन सर IA इज इक्वल टू आर्मेचर करंट रो फार्मूला कोन ना ISS प्लस IL सेकंड जिंस सीरीज फील्ड करंट रो फार्मूला कोन सर आर्मेचर करंट जहा सीरीज फील्ड करंट रो 3 नंबर जिंस शंट फील्ड करंट रो फार्मूला कोन सर V डिवाइडेड बाय RSS सर टर्मिनल वोल्टेज रो फार्मूला कोन V इज इक्वल टू EG माइनस IA ब्रैकेट स्टार्ट RA प्लस RS अब पावर डेवलपमेंट करते सर V into IA मैक्सिमम पावर कंडीशन EB इज इक्वल टू V बाय सप्लाई वोल्टेज एतिकी होची कोन ना डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर ए लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर पहिला माने माइंड को कोन स्ट्राइक करूची
सर गोटे सीरीज जनरेटर सहित शंट फील्ड वाइंडिंग जेतबेले पैरेलल लगा जाए सेतबेले लंग शंट ए सर्किट देखि कि तमे एटा कहि परिबो लंग शंट सेतिरे आर्मेचर करंट कैलकुलेशन करिवार फार्मूला कोन सर शंट फील्ड करंट प्लस लोड करंट सीरीज फील्ड करंट रो आर्मेचर करंट सहित समान शंट फील्ड करंट रो वैल्यू ISH = V by RSH और टर्मिनल वोल्टेज रो वैल्यू V = Eg - Ia ब्रैकेट स्टार R एबे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा जोटा कि तमरो बारंबार फ्रीक्वेंटली आक्स है बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे डिस्कशन समस्त रेडी तो क्वेश्चन स्टार्ट करिया पे क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी फटाफट सेक्शन में आंसर दो ए डीसी जनरेटर आर जनरली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग डीसी जनरेटर आमे जो क्लासिफिकेशन करूची कहा बेसिस रे नै कि ओटे डीसी जनरेटर को क्लासिफिकेशन करू एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर भाई ऑप्शन नंबर बी सर फील्ड एक्साइटेशन मेथड को देखि कि मो डीसी जनरेटर को जनरली क्लासिफिकेशन क्वेश्चन नंबर 2 which of the following not a type of separately excited DC एमान को मध्यरु कोटा गोटे टाइप नो गोटे सेपरेटली एक्साइटेड DC एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर डी सेपरेटली एक्साइटेड सर ये शंट सीरीज और कंपाउंड एटा सेल्फ एक्साइटेड एटा क्वेश्चन नंबर 3 in a separately excited DC generator the field winding receives current from ए जो गोटे सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर रे गोटे सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर रे फील्ड वाइंडिंग कहा तो करंट सप्लाई न एटा गोटे सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर फील्ड वाइंडिंग कहा तो सप्लाई न एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर सी एक्सटर्नल DC सोर्स टू सीसन सप्लाई क्वेश्चन नंबर 4 the generated EMF of a DC generator रे generated EMF रो फार्मूला कोन DC जनरेटर रे generated EMF रो फार्मूला एक्सीलेंट सर समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सर Eg = P5Zn divided by 6 क्वेश्चन नंबर 5 in a separately excited DC generator armature current गोटे सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर रे आर्मेचर करंट रो वैल्यू एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्मेचर करंट रो वैल्यू लोड करंट संगे समान देखो एटा गोटे होची सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर एटा होची लोड करंट एटा होची आर्मेचर करंट एटा होची फील्ड करंट आई एटा होची फील्ड रेजिस्टेंस सर एटा सप्लाई बीडीसी ए जो आर्मेचर करंट रो वैल्यू सीरीज का सहित ना लोड करंट सहित किछ प्रॉब्लम ना क्वेश्चन नंबर 6 टर्मिनल वोल्टेज सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर गोटे सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर रे टर्मिनल वोल्टेज रो वैल्यू एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर डी Pt = Eg - IR क्वेश्चन नंबर 7 पावर डेवलप इन ए आर्मेचर ऑफ ए DC जनरेटर गोटे DC जनरेटर रे केते पावर डेवलपमेंट हो एक्सीलेंट सर पावर P = Eg * I ऑप्शन नंबर बी जो देछ समस्त करेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 इन शंट ओन्ड DC जनरेटर फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड गोटे शंट जनरेटर रे फील्ड वाइंडिंग केमिति कनेक्टेड होइते आर्मेचर एक्सीलेंट
समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सर पैरेलल विथ आर्मेचर शंट फील्ड वाइंडिंग पैरेलल कनेक्टेड विथ आर्मेचर क्वेश्चन नंबर 9 शंट फील्ड करंट कैलकुलेटेड शंट फील्ड करंट रो वैल्यू केते एक्सीलेंट ISH is equal to sir V by RSH ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 इन शंट जनरेटर आर्मेचर करंट इज गोटे शंट जनरेटर रे आर्मेचर करंट शंट जनरेटर एटा होची आर्मेचर करंट एटा होची लोड करंट एटा होची सप्लाई करंट एटा होची शंट करंट आर्मेचर करंट इज इक्वल टू लोड करंट प्लस शंट करंट कोड अछि ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट ए जो टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर रो 10 टा क्वेश्चन डिस्कशन कले काहर केतटा क्वेश्चन ठीक हैला कि समस्त मते चैट सेक्शन में मैसेज कला सर मोर एतिटा क्वेश्चन 10 टा रो ठीक है वेरी गुड नॉट एक्सीलेंट समस्त जाओ खुशी लगुची भल रिस्पोंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आउ दोस्ता क्वेश्चन नंबर 11 इन ए सीरीज ओन्ड डीसी जनरेटर गोटे डीसी सीरीज जनरेटर रे फील्ड वाइंडिंग केमिति कनेक्टेड है आर्मेचर सहित गोटे डीसी सीरीज जनरेटर रे फील्ड वाइंडिंग एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड सीरीज विथ आर्मेचर गोटे डीसी सीरीज ओन्ड जनरेटर रे सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग है कनेक्टेड विथ आर्मेचर सहित क्वेश्चन नंबर 12 इन सीरीज जनरेटर द सीरीज फील्ड करंट गोटे सीरीज जनरेटर रे सीरीज फील्ड करंट रो वैल्यू को तीनटा करंट सहित समान एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर गोटे सीरीज जनरेटर रे सीरीज फील्ड करंट जहा आर्मेचर करंट रो वैल्यू से या लोड करंट रो वैल्यू से क्वेश्चन नंबर 13 द टर्मिनल वोल्टेज इक्वेशन ऑन ए सीरीज जनरेटर गोटे सीरीज जनरेटर रे टर्मिनल वोल्टेज इक्वेशन एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर ए कोन B इज इक्वल टू Eg माइनस IA ब्रैकेट स्टार्ट RA प्लस RS केवल RA कम रहइबो एटा सीरीज फील्ड वाइंड एटी आर्मेचर रेजिस्टेंस अछि एटी सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस अछि एटा होछि Eg एटा होछि B इज इक्वल टू Eg माइनस IA आर्मेचर करंट एटी फ्लो होछि IA ब्रैकेट स्टार्ट दीटा रेजिस्टेंस RA प्लस RS क्वेश्चन नंबर 14 a compound owned DC generator has गोटे compound owned DC generator सेतरे को वाइंडिंग रोगे एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर सी बोथ सीरीज फील्ड एंड शंट फील्ड वाइंडिंग सर गोटे कंपाउंड डीसी जनरेटर रे बोथ सर सीरीज फील्ड वाइंडिंग रहे और शंट फील्ड वाइंडिंग क्वेश्चन नंबर 15 इन ए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर गोटे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर रे सीरीज फील्ड प्लस शंट फील्ड प्लस ऐड होची ना अपोज होची डिफरेंशियल माने माइनस माने अपोज एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सीरीज फील्ड अपोजेस द शंट क्वेश्चन नंबर 16 इन ए क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर
गोटे क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर रे सीरीज फील्ड फ्लक्स शंट फील्ड फ्लक्स कोन होछ एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सर सीरीज फील्ड असिस्ट शंट फील्ड माने सीरीज फील्ड फ्लक्स शंट फील्ड फ्लक्स को सपोर्ट प्रोवाइड करे क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपाउंड डीसी जनरेटर एमानक मध्यरु कोटा कंपाउंड जनरेटर टाइप्स रे जाउछ एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर बोथ ए एंड बी सर कंपाउंड जनरेटर दिखा जाउची गोटे लंग शंट कंपाउंड जनरेटर आउटे सर शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर क्वेश्चन नंबर 18 इन ए शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर द शंट फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड जो शॉर्ट शंट रे शंट फील्ड वाइंडिंग कहा संगे कनेक्टेड होची एटा शॉर्ट शंट डायग्राम कहा संगे कनेक्टेड है देखो एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर बी अक्रॉस द आर्मेचर सहित पैरेलल ले कनेक्टेड होची क्वेश्चन नंबर 19 इन ए लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर शंट फील्ड करंट लॉन्ग शंट को बोलिया ना ए बोलिया लॉन्ग शंट रे शंट फील्ड रो करंट एटा शंट फील्ड करंट आईएसएच एक्सीलेंट सर आईएसएच इज इक्वल टू V by RSH ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर कंफ्यूजन हवार नहीं क्वेश्चन नंबर 20 फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप इन ए डीसी जनरेटर द टर्मिनल वोल्टेज मैक्सिमम पावर डेवलप कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज रो वैल्यू B is equal to half of the supply back EMF is equal to half of the supply voltage B is equal to EB by 2 ए जो 10 रु 20 भीतर जो 10 टा क्वेश्चन डिस्कशन करली कहार केतरा क्वेश्चन ठीक हैला समस्त मते चार्ट सेक्शन में नॉट एट एक्सीलेंट के इंप्रूवमेंट कर आज हमर डीसी जनरेटर रो क्लास नंबर 2 डीसी जनरेटर रो आज हमें क्लास नंबर केते ना डीसी जनरेटर रो क्लास नंबर 2 हमें कंप्लीट करले सक्सेसफुली गोटे क्लास नंबर 1 ने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करिथिली सेकंड पार्ट रे पीडीएफ दे देली सेकंड पार्ट रे कंप्लीट कली एउले भाबरे डीसी जनरेटर केतेटा क्लास हबो ना डीसी जनरेटर पांचटा तुमको क्लास हबो ए पांचटा छटा क्लास रे डीसी जनरेटर टा कंप्लीट हबो 2-3 दिन भीतर कंप्लीट हे जिवो समस्त देखियो समस्त लास्ट पर्यंत क्लास टा को देखितिबारो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू एवरीवन रहउची जय जगन्नाथ समस्त प्रैक्टिस करिवो नोट्स टा को नवा नोट्स टा के भल से अपडेट करथिबो आमे जो डीसी जनरेटर टॉपिक को स्टार्ट करिथिले ए डीसी जनरेटर टॉपिक रो आज आमे क्लास नंबर केते ना 3 को डिस्कशन करिबा डीसी जनरेटर केते नंबर क्लास एटा 3 नंबर क्लास आ 60 सीरीज रो एटा 14 नंबर क्लास टोटल ऊपर तुमको ए बैच रो मो 14 टा क्लास करिछि आउ एटा डीसी जनरेटर रो क्लास नंबर 3 जो माने क्लास 13 पर्यंत देखिनो रिकॉर्डेड सेक्शन में वीडियो अछि समस्त देखिना आज रो टॉपिक रे मु तुमको कोन डिस्कशन करिवि ए डीसी जनरेटर रो क्लास नंबर 3 रे डीसी जनरेटर रो क्लास नंबर 3 रे मु तुमको कोन डिस्कशन करिवि डीसी जनरेटर रो क्लास नंबर 3 रे प्रथम डिस्कशन करिवि लॉसेस इन ए डीसी जनरेटर तापरे लॉसेस इन ए डीसी मशीन कांस्टेंट लॉसेस कोन आयरन लॉसेस कोन हिस्टोरिसिस लॉसेस कोन रिडक्शन मेथड ऑफ फॉर हिस्टोरिसिस लॉस कोन देन तापर डिस्कशन करिवि एडी करंट लॉस कोन एडी करंट लॉस कैन बी मिनिमाइज एडी करंट लॉस को मिनिमाइज केमिति करा जिवो
मेकानिकल लॉसेस कौन, फ्रिक्शनल लॉसेस कौन, वाइंडेज लॉसेस कौन आ वेरिएबल लॉसेस कौन। टोटल लॉसेस ऊपर जहाँ भी इंपोर्टेंट कांसेप्ट अछि सब डिस्कशन करी। तापर डिस्कशन करी कौन ना कॉपर लॉसेस कौन, तापर डिस्कशन करी कॉपर लॉसेस कौन, आर्मेचर कॉपर लॉस कौन, फील्ड कॉपर लॉस कौन। देयर आर टू टाइप ऑफ फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग कॉपर लॉस, सीरीज फील्ड वाइंडिंग कॉपर लॉस। तापर डिस्कशन करी कौन ना नेचर ऑफ वेरिएबल लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय स्ट्रे लोड लॉसेस कौन, मेन कॉज फॉर स्ट्रे लोड लॉसेस कौन, एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ता माने तुमको अल्टीमेटली कहिया को गले आमे कोन डिस्कशन करिबा आजिर क्लास रे ना लॉसेस ऑफ ए डीसी मशीन आउ एफिशिएंसी। आजिर दीटा मोर मेन इंपोर्टेंट टारगेट रहइबो तम माने को डीसी जनरेटर रो पूरा कांसेप्ट क्लियर करिया पई कोन कोन ना डीसी जनरेटर रो लॉसेस आउ मशीन एफिशिएंसी। समस्त जो माने क्लास स्टार्ट करिया को रेडी अछ टिके समस्त चार्ट सेक्शन ने यस लिखि दे सर रेडी बोली रेडी तो जो माने भी रेडी अछ टिके समस्त चार्ट सेक्शन ने यस लिखो। वेरी गुड। पढ़ाइबा पूर्व सिलेबस एथि पई डिस्कशन करि दउची तमे जे कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दबो जे सर ए टॉपिक रु पर्टिकुलर ए सब टॉपिक रु ही मोर क्वेश्चन आसीतिला हम सेही गुरा डिस्कस देख। फास्ट देखो लॉसेस इन ए डीसी मशीन कौन कहला सर लॉसेस इन ए डीसी जनरेटर while converging mechanical energy into electrical energy, a part of energy dissipated in the form of heat surrounding air called losses of a DC generator. सर डीसी जनरेटर कहिले कौन बुझिबो सर डीसी जनरेटर कहिले सर ये गोटे इलेक्ट्रिकल मशीन जे कि मैकेनिकल एनर्जी रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करूची। जेते बेले से मैकेनिकल रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करूची से मझिरे किछि हीट परिमाण रे कोन एनर्जी को डिसिपेटेड हे जाउची सेया को डीसी जनरेटर रो लॉसेस बोली कहूची। एग्जांपल जदि मु तुमको एटी कोन मैकेनिकल एनर्जी दउची मने कर मु तुमको 10 टंका दउची तमे जदि इनपुट रे 10 टंका नै कि आउटपुट जदि सेम 10 टंका देलो त माने लॉसेस केते जीरो। जदि इनपुट रे मु तुमको 10 टंका देली तमे जदि आउटपुट रे मते 8 टंका देलो जो 2 टंका खर्च कर देलो से 2 टंकाटा होची कोन ना तमरो लॉसेस। एग्जांपल कोन से 2 टंकाटा होची तमनकर लॉसेस। सेही भलिया भाबरे गोटे डीसी जनरेटर रो काम कोन इले से मैकेनिकल एनर्जी रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करूची। जेते बेले से मैकेनिकल एनर्जी रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करूची सेथिरे प्रोसेस रे किछि मध्ये हमर एनर्जी लॉस होची डिसिपेटेड होची तेनो करी सेही जिंसटा को कहूचे एनर्जी लॉसेस। नोट पॉइंट कोन द लॉसेस affect the efficiency of a DC generator। ई लॉसेस हवा द्वारा कहा को इफेक्ट करूची सर लॉसेस हवा द्वारा हमर जनरली एफिशिएंसी को इफेक्ट करूची। ता माने एफिशिएंसी रो फार्मूला कोन सर आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ए इनपुट जगह रे हमें कोन लिखुछे ना सर आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस। जदि सर ए लॉस रो मात्रा टिके अधिक होई गला ना एफिशिएंसी हमर कोन हबो ना कमी जिवो। आमे चाहूची एते पैसा खर्च करी गोटे डीसी जनरेटर बनेचे जेतु तार एफिशिएंसी भलो चाहे ना ता माने लॉस को हमर कोन ना मिनिमम करिबा को हबो। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजाइन डीसी जनरेटर टू रिड्यूस दिस लॉसेस। डीसी जनरेटर जेते बेले भी आमे डिजाइन करिबा मेन क्राइटेरिया हमर कोन रहबा दरकार सर मेन क्राइटेरिया हमर लॉसेस ता कोन जेते मिनिमम हबो। ए लॉसेस ऑफ डीसी जनरेटर कोन सिखुछो सर डीसी जनरेटर रो काम होची मैकेनिकल एनर्जी रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करिवो। जेते बेले से मैकेनिकल एनर्जी रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होची सेते बेले किछि परिमाण रो हीट डिसिपेटेड होची से हीट डिसिपेटेड को आमे कहूचे लॉसेस।
जे लॉसेस काहाको इफेक्ट करूची सर जनरली ये जो लॉसेस ता डीसी जनरेटर रे से एफिशिएंसी ऊपर इफेक्ट पकाउची जदि लॉस बढ़ी जाउची एफिशिएंसी कमी जाउ तेणु करी गोटे डीसी जनरेटर को मेन ऑब्जेक्टिव होची डिजाइन करला बेले मिनिमम लॉस केमिति हो से जिनसटा हमें ध्यान रखना तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट पार्ट कोन ना लॉसेस इन ए डीसी मशीन लॉसेस इन ए डीसी मशीन ये डीसी मशीन कहिला माने कोन बुझिबो सर डीसी मशीन कहिला माने डीसी जनरेटर भी जीवो आउ डीसी मोटर भी जीवो डीसी मशीन कहिला माने कोन ना डीसी जनरेटर जीवो आउ डीसी मोटर जीवो जे पचारिबो पिले इलेक्ट्रिकल मशीन कहिले कोन बुझिबो तमे एति की माइंड रे जानो इलेक्ट्रिकल मशीन कहिला माने एया बुझिबो जे गोटिए फॉर्म ऑफ एनर्जी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी रो जदि अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को जे कन्वर्ट करछि ताकू सर इलेक्ट्रिकल मशीन बोली कहबा जे गोटिए फॉर्म ऑफ एनर्जी रो आउ गोटे फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करछि ताकू मशीन कहबा ये मशीन दी प्रकार कोन इलेक्ट्रिकल मशीन गोटे एसी मशीन आ गोटे डीसी मशीन तनो करी प्रथम में तुमको स्टार्ट करथिली डीसी मशीन ये डीसी मशीन कहिले कोन बुझिबो सर डीसी मशीन कहिले जो मशीन डीसी सप्लाई ऑपरेट होची ताको जनरली डीसी मशीन कहबा ए डीसी मशीन कहिला माने कोन ना डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दीटा तक इंक्लूडेड हो डीसी मशीन तेणु करी डीसी जनरेटर बा डीसी मोटर पई लॉसेस दीटा जकर कोन सेम जिंस देखो लॉसेस केते प्रकार सर लॉसेस होची दुई प्रकार गोटे होची कांस्टेंट लॉस आ गोटे होची वेरिएबल लॉसेस केते प्रकार सर लॉसेस होची दुई प्रकार गोटे होची कांस्टेंट लॉसेस आ गोटे होची वेरिएबल लॉसेस अगेन पुनी कांस्टेंट लॉस होची दुई प्रकार गोटे होची सर आयरन लॉसेस आ गोटे होची मैकेनिकल लॉसेस कांस्टेंट लॉस पुनी केते प्रकार ना दुई प्रकार गोटे होची आयरन लॉस आ गोटे होची मैकेनिकल लॉस पुनी ए आयरन लॉस दुई प्रकार गोटे होची हिस्टोरिसिस लॉस आ गोटे होची ईडी करंट लॉस ए मैकेनिकल लॉस पुनी दुई प्रकार फ्रिक्शनल लॉसेस आ वाइंडेज लॉसेस ए फ्रिक्शनल लॉस पुनी दुई प्रकार ब्रश फ्रिक्शन लॉस आ बियरिंग फ्रिक्शन लॉस फ्रिक्शनल लॉस केते प्रकार दुई प्रकार ब्रश फ्रिक्शन आ बियरिंग फ्रिक्शन से भलिया एपटे अपोजिट रे वेरिएबल लॉस केते प्रकार ना सर दुई प्रकार गोटे होची कॉपर लॉस आ गोटे होची स्ट्रे लोड लॉस ए कॉपर लॉस पुनी दुई प्रकार आर्मेचर कॉपर लॉस फील्ड कॉपर लॉस रे को फील्ड लाउची ना सन फील्ड कॉपर लॉस लाउची एटा होची टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर नोट पॉइंट कोन ना टोटल लॉसेस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस प्लस वेरिएबल लॉस आयरन लॉस आल्सो नोन एज कोर लॉस मध्ये आयरन लॉस रो अन्य नाम कोन ना कोर लॉस बोली कहू कोन पढिले त मानको सर क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन लॉसेस को हमें केते भाग रे विभक्त करिचे सर दुई भाग रे गोटे कोन कांस्टेंट लॉस आ गोटे वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस दुई प्रकार आयरन लॉस आ मैकेनिकल लॉस आयरन लॉस पुनी दुई प्रकार हिस्टोरिसिस आ ईडी करंट पुनी असला पडे मैकेनिकल लॉस दुई प्रकार फ्रिक्शन आ वाइंडेज लॉसेस फ्रिक्शन लॉस दुई प्रकार ब्रश फ्रिक्शन आ बियरिंग फ्रिक्शन से बड़ा वेरिएबल लॉस दुई प्रकार कॉपर लॉस आ स्ट्रे लोड लॉस कॉपर लॉस दुई प्रकार आर्मेचर आ फील्ड कॉपर लॉस का को सन फील्ड कॉपर लॉस आ टोटल लॉस हमर कोन ना कांस्टेंट लॉस प्लस वेरिएबल आयरन लॉस रो अन्य नाम होची कोर लॉस तापर प्रथम इंपोर्टेंट लॉसेस को पिले मु डिस्कशन करूची जहार ना कोन ना कांस्टेंट लॉसेस द लॉसेस इन ए डीसी मशीन से मोटर हो कि जनरेटर हो which remains same at all load is called constant losses कोन कहला कांस्टेंट लॉस कहिले कोन बुझिबो सर जो लॉस ऑल लोड रे कोन रहइबो ना कांस्टेंट रहइबो ताका हम जनरली कांस्टेंट लॉस कहै मनकर लोड बढ़ू कि लोड कम लॉस रो वैल्यू सबले कांस्टेंट मनकर 10 किलोवाट रे 10 किलोवाट पावर 10 वाट लॉस होची तेणु कर यदि लोड बढ़ी कि 50 किलोवाट आइला सेही मध्य कते ना 2 किलोवाट लॉस हो जेति लॉस होतला सेति के ताको कहबा कांस्टेंट लॉस जो लॉस लोड ऊपर निर्भर करिवो नाही सर म ताको कांस्टेंट लॉस बोली कहूची कांस्टेंट लॉस केते प्रकार आयरन लॉसेस एंड कोन मैकेनिकल लॉस फर्स्ट डिस्कशन करिबा आयरन लॉस इन ए डीसी मशीन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ लोड आयरन लॉस कहा को कहबा सर जो लोड ऊपर डिपेंड करिवो नाही जनरली ताको हम कोन कहबा आयरन लॉसेस ए आयरन लॉस पुनी दी प्रकार गोटे होची हिस्टोरिसिस लॉस आ गोटे होची ईडी करंट लॉस
एबे डिस्कशन करिबा कोन ना हिस्टोरिसिस लॉस। ए हिस्टोरिसिस लॉस a result for magnetization and demagnetization of the core of material at the magnetic field alternate। सर गोटे डीसी जनरेटर रे एमिति मैग्नेटिक फील्ड अछि नॉर्थ आउ साउथ। ई डीसी जनरेटर जेतबेले मैग्नेटिक फील्ड जो कोन होची आर्मेचर रिएक्शन। ई आर्मेचर रिएक्शन में कोन मैग्नेटाइजेशन होची आउ डीमैग्नेटाइजेशन होची। ई मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन और रिजल्ट रे ई मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन और रिजल्ट रे जो प्रकार लॉसेस प्रोड्यूस होची गोटे डीसी जनरेटर रे जनरली ताको कहूची कोन ना हिस्टोरिसिस लॉसेस। ए हिस्टोरिसिस लॉसेस को पीएच द्वारा डिनोटेड करा जाउची जहार फार्मूला होची KH Bmax 1.6 F into V। KH कौन स्टेनमर्स कांस्टेंट बा हिस्टोरिसिस कांस्टेंट। Bm कौन ना मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। F कौन ना फ्रीक्वेंसी। V कौन ना वॉल्यूम ऑफ द कोर। pH कौन ना हिस्टोरिसिस लॉस। जे पचारिबो हिस्टोरिसिस लॉस कहिले कौन बुझिबो सर गोटे डीसी जनरेटर रे मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन और रिजल्ट रे जो प्रकार लॉस प्रोड्यूस होची जनरली ताको हमें हिस्टोरिसिस लॉस बोली कहउछु। एई हिस्टोरिसिस लॉस को पीएच द्वारा डिनोटेड करा जाउची जहार बेसिक फार्मूला होची KH Bmax 1.6 F into V। नोट पॉइंट कोन ई सब बेले ई नोट पॉइंट में तमन को हिस्टोरिसिस लॉस का क्वेश्चंस है कोन ना हिस्टोरिसिस लॉस इज द एनर्जी लॉस इन द मैग्नेटिक कोर of the armature due to repeated magnetization and demagnetization as the armature rotate under the different pole। सर ये मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन जो प्रकार लॉसेस प्रोड्यूस होची आर्मेचर कोर रे ताको हम जनरली कहूची कोन हिस्टोरिसिस लॉसेस। ए हिस्टोरिसिस लॉस डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कोर। ए वेरी इंपोर्टेंट ए क्वेश्चन ता पड़ हिस्टोरिसिस लॉस कहा पर डिपेंड करूची ना फ्रीक्वेंसी ऊपर आ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक कोर ऊपर मध्य हिस्टोरिसिस लॉस डिपेंड करूची। तापर आसीला रिडक्शन मेथड इन हिस्टोरिसिस। हिस्टोरिसिस को लॉस को रिड्यूस करिया पई हमें हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील कोर व्यवहार जेटा बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पचारची। हिस्टोरिसिस लॉस को रिड्यूस करिया पई हमें कोन व्यवहार करछु हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील। अब सेकंड कोन व्यवहार हे परियो बाय एडिंग मैग्नेटिक सैचुरेशन। थर्ड कोन बाय ऑपरेटिंग लोअर फ्लक्स डेंसिटी। जदि लोअर फ्लक्स डेंसिटी गोटे डीसी जनरेटर को ऑपरेट करा जाय तबेले हिस्टोरिसिस लॉस को मैं रिड्यूस करि परिबा। हिस्टोरिसिस लॉस को रिड्यूस करिया पई हम करे कोन मेथड अछि सर तीनटा मेथड अछि। गोटे कोन ना हाई ग्रेड सिलिकॉन कोर यूज करि परिबा सिलिकॉन स्टील कोर अवॉइड मैग्नेटिक सैचुरेशन करि रिड्यूस करि परिबा ऑपरेटिंग एट लोअर फ्लक्स डेंसिटी रे कोन मध्य करि परिबा। तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन ना ईडी करंट लॉस। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन ईडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉस इज द पावर लॉस कॉज्ड बाय इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट इनसाइड द आयरन कोर ऑफ द आर्मेचर। सर आर्मेचर रो इनसाइड रे जो सर्कुलेटिंग करंट इंड्यूस होची सेही पावर जो लॉसेस होची सर्कुलेटिंग करंट रो पावर रे ताको कहबा ईडी करंट लॉस। कोन कहिला ईडी करंट लॉस कहिले कोन बुझिबो सर गोटे डीसी मशीन रो आर्मेचर रो इनसाइड रे गोटे डीसी मशीन रो आर्मेचर कोर रो इनसाइड रे जो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होची ता जो पावर प्रोड्यूस होची सेही प्रकार लॉसेस को हम जनरली ईडी करंट लॉस बोली कहूची। ए ईडी करंट लॉस को पीई द्वारा डिनोटेड करा जाउची जहार बेसिक फार्मूला होची केई Bmax रो स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर इनटू V। केई कोन ना ईडी करंट कांस्टेंट। Bm कोन ना मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। F कोन फ्रीक्वेंसी। Tc कोन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। जते बडे तुम हिस्टोरिसिस लॉस करतिला हिस्टोरिसिस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी बट ईडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी रो स्क्वायर। ए टर्म ता बहुत जगह पचारिछि। तापर ईडी करंट कैन बी मिनिमाइज एटा लैमिनेटिंग द कोर। ए क्वेश्चन ता बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पचारिछि ईडी करंट लॉस को केमिति रिड्यूस करि परिबा तमे कहि परिबो सर ईडी करंट लॉस को लैमिनेशन करिबा द्वारा हम ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करि यूजिंग हाई रेजिस्टिव मटेरियल। जदि हमें कोन आर्मेचर कोर रे हाई रेजिस्टिव मटेरियल को व्यवहार करिबा ना जनरली हमर ईडी करंट लॉस को रिड्यूस हेबा। वेरी गुड। तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म देखा कोन ना मैकेनिकल लॉसेस। नेक्स्ट इंपोर्टेंट कोन ना मैकेनिकल लॉसेस। मैकेनिकल लॉस occur due to mechanical movement of rotating part of a DC generator। सर डीसी जनरेटर बहुत गुडे मैकेनिकल पार्ट अछि बा रोटेटिंग पार्ट अछि
सेमानकर रोटेशन जो सेबा सेमानकर मूवमेंट जो प्रकार लॉसेस प्रोड्यूस होउची गोटे डीसी जनरेटर रे ताको हमें कहिबा मैकेनिकल लॉसेस। दे आर कॉज्ड बाय फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस व्हेन द आर्मेचर रोटेट। सर आर्मेचर रोटेट कला माने फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो, सेही फ्रिक्शन जो प्रकार लॉसेस प्रोड्यूस होउची ताको हमें जनरली मैकेनिकल लॉसेस कहू। ए मैकेनिकल लॉसेस रो प्रथम लॉसेस ना होउची कोन ना फ्रिक्शन लॉसेस। फ्रिक्शन लॉस occur due to friction between bearing brushes and commutator of a DC machine motor और generator। से DC मोटर हो कि जनरेटर हो फ्रिक्शन लॉस केते बेले हबो ना सा जेते बेले बियरिंग और ब्रश और कम्यूटेटर भीतर किछि ना किछि फ्रिक्शन हबो से जनरेटर हो कि मोटर हो सेठी जो प्रकार लॉस प्रोड्यूस हबो ताको कहबा फ्रिक्शन लॉस। तापर आसिला वाइंडेज लॉस। Windage loss occur due to air friction against rotating armature and fan। Windage losses केमिति हबो ना air friction against rotating armature और fan भीतर जो प्रकार लॉसेस होउची windage losses। देखियो डीसी मशीन ए टाइप रो डीसी मशीन स्तंभा करथिला बेले एठी कोन बडो होल गुरा था ए होल जो लॉसेस होउची पसिक पवन एयर रे फैन जो ताको हमें कहिबा कोन जनरली windage losses। एबे किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तुमको दउची जोटा कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पचारितिला लॉसेस ऊपर समस्त चार सेक्शन आंसर करो केही भी साइलेंट रहिबनी समस्त। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज मेंट बाय लॉसेस इन ए डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर लॉसेस कहिला माने तमे कोन बुझुछ। एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन नंबर बी एनर्जी डिसिपेटेड एज ए हीट ड्यूरिंग एनर्जी कन्वर्जन। सर गोटे डीसी जनरेटर रे जते बेले एनर्जी कन्वर्जन होउची मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल सेठी जते बेले हीट प्रोड्यूस होउची ता जो एनर्जी डिसिपेटेड होउची ताको कहबा लॉसेस। ए नहीं बाय बी। क्वेश्चन नंबर 2 the total losses of a DC machine are equal to गोटे DC machine न total losses कहले कार लॉस को मिसेले हम कहबा total losses। गोटे DC machine न ओ दीटा losses को मिसेले हम कहबा total losses। एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर सी सर कांस्टेंट लॉस प्लस वेरिएबल लॉस को मिसेले हम जनरली कहबा कोन ना टोटल लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 3 which of the following constant loss in a DC machine। एमानक मध्यरु कोटा constant loss रे जाउची। which of the following constant loss of a DC machine। एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सर आयरन लॉस को हमें कहबा कोन ना डीसी constant loss। क्वेश्चन नंबर 4 हिस्टोरिसिस लॉस अकर्स एमानक मध्यरु को जगह रे हिस्टोरिसिस लॉस प्रोड्यूस होउची। एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सर रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर रो रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन जो लॉसेस होउची ताको हम हिस्टोरिसिस लॉस बोली कहू। क्वेश्चन नंबर 5 which of the following not an iron loss एमानक मध्यरु आयरन लॉस रे कोटा जाउ नै। आयरन लॉस कहिला माने सर हिस्टोरिसिस प्लस एडी करंट लॉस रा कॉम्बिनेशन। ऑप्शन नंबर सी फ्रिक्शन लॉस ता सर आयरन लॉस रे जाउ नै। क्वेश्चन नंबर 6 एडी करंट लॉस कैन बी मिनिमाइज एमानक मध्यरु कोन व्यवहार करिति हमें एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करि परिबा। एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर बी यूजिंग लैमिनेशन कोर एंड हाई रेजिस्टिव मटेरियल एंड कोर को लैमिनेशन करके हमें जनरली एडी करंट लॉस को रिड्यूस करि परिबा। क्वेश्चन नंबर 7 मैकेनिकल लॉसेस इन ए डीसी मशीन इंक्लूड
मेकानिकल लॉस कहा को नहीं इंक्लूड। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सर फ्रिक्शन एंड वाइंडेज लॉसेस को फ्रिक्शन एंड वाइंडेज लॉसेस को नहीं मैकेनिकल लॉस इंक्लूड। क्वेश्चन नंबर 8 वाइंडेज लॉस इन ए डीसी मशीन इज कॉज्ड बाय वाइंडेज लॉस को कारण होता है। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एयर फ्रिक्शन अगेंस्ट द रोटेटिंग आर्मेचर एंड फैन रोटेटिंग आर्मेचर और फैन। Question number 9 which loss depends on load current in a DC machine को loss टा load current ऊपर depend करूँ। Excellent समस्तंकर correct answer option number C armature copper loss टा load current ऊपर depend करूँ। पढ़ी बात को Question number 10 the main objective of a DC generator the main objective of design of a DC generator को डिजाइन करिया ପାଇଁ मेन ऑब्जेक्टिव कोन। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रिड्यूस लॉसेस एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। डीसी जनरेटर जेतेबेले डिजाइन कला बेले आमे केमिति चाहिबा मिनिमम रो मिनिमम लॉस होय आ मैक्सिमम रो मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑब्टेन करे। ए जो कांस्टेंट लॉसेस रो 10 टा क्वेश्चन डिस्कशन कली कहार केतटा क्वेश्चन ठीक हैला टिके समस्त मते चैट सेक्शन में मेसेज कर सर ए 10 टा क्वेश्चंस रो मोर एतिकटा क्वेश्चन ठीक हो। एक्सीलेंट 10 रो 10 10 रो 8 10 9 8 टिके समस्त टिके भल से पढ़ा पढ़ी कर जेमति 10 10 जहाँ भी पढ़ाऊँ से क्वेश्चन तुमको दौर ना निहती भाव में बेटर करने चेष्टा कर। देख नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म डिस्कशन करबा कोन सर वेरिएबल लॉसेस द लॉसेस इन ए डीसी मशीन मोटर और जनरेटर वेरी विथ लोड आर कॉल्ड एज वेरिएबल लॉसेस। वेरिएबल लॉसेस कहले कोन बुझिबो डीसी जनरेटर सर वेरिएबल लॉसेस एया कहले सर जो लॉस लोड ऊपर डिपेंड करूची जो लॉस लोड ऊपर डिपेंड करूची तक हमें जनरली कोन कहूचे ना वेरिएबल लॉस बोली कहूचे। वेरिएबल लॉस रो प्रथम लॉस होची जहां नाम कोन ना कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस आल्सो नोन एज आई स्क्वायर आर लॉसेस। कॉपर लॉसेस को हमें को लॉस बोली कहूचे सर कॉपर लॉसेस को जनरली हमें आई स्क्वायर आर लॉसेस बोली कहूचे। आर पावर लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल डिवाइस ड्यू टू रेजिस्टेंस एंड कॉपर कंडक्टर। कॉपर लॉसेस कहले कोन बुझियो सर कॉपर लॉसेस को हमें जनरली आई स्क्वायर आर लॉसेस बोली कहूचे। ई कॉपर लॉसेस कहा जोगु होची ना रेजिस्टेंस आ कंडक्टर कोन ना रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर कंडक्टर रेजिस्टेंस जो लॉसेस होची हमें ताको कहूचे कॉपर लॉस बोली। तापर आसिला कॉपर लॉस रो प्रथम लॉस जहार ना कोन ना आर्मेचर कॉपर लॉस कारण आर्मेचर वाइंडिंग रहउची ना when current flow through the armature conductor power is lost at the heat due to resistance in the armature winding। सर गोटे डीसी जनरेटर रे आर्मेचर वाइंडिंग थाए ए आर्मेचर वाइंडिंग रे किछि ना किछि जो आर्मेचर कंडक्टर को नै कि तयारी ए आर्मेचर कंडक्टर रे जते बडे करंट फ्लो होई सेति किछि पावर लॉस होई सेही पावर लॉस को हमें कोन कहूची आर्मेचर कॉपर लॉस जार फार्मूला होची कोन ना IA स्क्वायर इनटू RA। आर्मेचर कॉपर लॉस इंक्रीज क्वाड्रेटिकली विथ लोड करंट सर जते बडे लोड करंट रो वैल्यू बढ़िबो आर्मेचर कॉपर लॉस रो वैल्यू इंक्रीज हो। इफ आर्मेचर करंट डबल आर्मेचर कॉपर लॉस बिकम 4 टाइम्स इज ग्रेटर। जते बडे आर्मेचर करंट रो वैल्यू डबल हो सेते बडे कोन होबो
ना आर्मेचर कॉपर लॉस रो वैल्यू 4 टाइम्स हो कारण आर्मेचर कॉपर लॉस रो फार्मूला कोन आर्मेचर कॉपर लॉस रो फार्मूला IA स्क्वायर इनटू R कोन कहली सर प्रथम लॉस जहार ना होची आर्मेचर कॉपर लॉस ए आर्मेचर कॉपर लॉस केमिति प्रोड्यूस होची सर गोटे डीसी जनरेटर रे आर्मेचर वाइंडिंग थाए ए आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर कंडक्टर मान को नहीं तयारी जेते बेले से आर्मेचर कंडक्टर रे करंट फ्लो हुए सेति किछि पावर प्रोड्यूस सेही पावर को हमें कोन कहूची आर्मेचर कॉपर लॉस जहा कैलकुलेशन करिया पई गोटे बेसिक फार्मूला रहिछि IA स्क्वायर इनटू RF जेते बेले लोड करंट हमर क्वाड्रेटिकली इंक्रीज होची सेते बेले कॉपर लॉस इंक्रीज हो आ जेते बेले आर्मेचर करंट डबल हे जाउची सेते बेले आर्मेचर कॉपर लॉस मध्ये 4 टाइम्स तापरे सेकंड टाइप वेरिएबल लॉस देखिबा जहार ना होची फील्ड कॉपर लॉस जहार ना केले कोन ना फील्ड कॉपर लॉस it is a power loss due to current flowing through the field winding of a DC machine say motor ho ki generator it appears in the form of heat because the resistance of copper wire is found in field coil field copper loss ro formula IF square into R कोन कहला सर डीसी मशीन आउ गोटे वाइंडिंग अछि जहार ना कोन ना फील्ड वाइंडिंग ए फील्ड वाइंडिंग रे जते बेला हमर करंट प्रोड्यूस हो करंट फ्लो हो फील्ड वाइंडिंग रे किछि पावर प्रोड्यूस हो से पावर को हम कोन कहछे फील्ड कॉपर लॉस जहा को कैलकुलेशन करिया पई गोटे बेसिक फार्मूला अछि कोन PCU कोन फील्ड कॉपर लॉस IF स्क्वायर इनटू R तापर आसिला फील्ड वाइंडिंग टाइप्स ऑफ फील्ड वाइंडिंग सर फील्ड वाइंडिंग तो बहुत प्रकार अछि जेमिति शंट फील्ड वाइंडिंग अछि हला प्रथम डिस्कशन करिबा शंट फील्ड वाइंडिंग it is connected across the armature terminal of a DC machine which has a more number of turn and a thin wire our shunt field copper loss hochi PSH is equal to ISH square into RSH our shunt field current hochi armature current into armature current is equal to kon na shunt current कोन कहिला सर शंट फील्ड वाइंडिंग ऊपर डिस्कशन कला ई शंट फील्ड वाइंडिंग कोन कहिला सर गोटे डीसी मशीन न ई शंट फील्ड वाइंडिंग ता आर्मेचर सहित सब बेले पैरेलल लागे ई शंट फील्ड वाइंडिंग रा प्रॉपर्टीज कोन ना थिन वायर पतला तार आ मोर नंबर ऑफ टर्न ने गुले हेतो आ शंट फील्ड केते कॉपर लॉस होची ना शंट फील्ड कॉपर लॉस इज इक्वल टू शंट फील्ड करंट रा स्क्वायर इनटू शंट फील्ड रेजिस्टेंस आ शंट फील्ड करंट रा वैल्यू आर्मेचर करंट रा वैल्यू संगे समान तापर आसिला टाइप्स ऑफ जनरेटर तापर किछि नोट पॉइंट को डिस्कशन करिवा ए नोट पॉइंट रे तमे कोन पाइबो ना टाइप्स ऑफ जनरेटर एक्सप्रेशन फॉर वेरिएबल लॉस और रिमार्क डीसी शंट जनरेटर रे वेरिएबल लॉस रो फार्मूला कोन I स्क्वायर IA रो स्क्वायर इनटू R शंट फील्ड करंट नियरली कांस्टेंट लखा जाय डीसी सीरीज जनरेटर रे वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू IA रो स्क्वायर RA प्लस RS both armature and field both armature and same current तापर डीसी कंपाउंड जनरेटर रे वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू IA स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट RA प्लस RAC शंट लॉस इज ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट लॉस शंट लॉस को सेठी कोन ना कांस्टेंट भलिया ट्रीट करा जाउची तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन ना नेचर ऑफ वेरिएबल लॉसेस they are depends upon current IA only variable loss कहा पर डिपेंड करूची सर वेरिएबल लॉस केवल one and only armature current ऊपर डिपेंड करू they produce heat in the winding and reduce efficiency ए वेरिएबल लॉस सब वाइंडिंग रे हमर कोन हीट प्रोड्यूस हुए जहा फल रे एफिशिएंसी हमर कोन ना कम जाय they are electrical loss but not magnetic ए जो लॉसेस ताको वेरिएबल लॉसेस ताको हम काउंट करू छे कोन ना इलेक्ट्रिकल लॉस बोले मैग्नेटिक लॉस नो वेरिएबल लॉस कैन बी रिड्यूस ए जो वेरिएबल कॉपर लॉस अछि ताको हम केमिति कमेई पारि यूजिंग थिकर कंडक्टर सर मोटा कंडक्टर व्यवहार करिकरी हमें वेरिएबल लॉस को कमेई परिबा यूजिंग बेटर कंडक्टिंग मटेरियल लाइक कॉपर टू बेटर कंडक्टिंग मटेरियल व्यवहार करके मध्य रिड्यूस करि परिबा इंप्रूविंग कूलिंग एंड वेंटिलेशन एंड कूलिंग मध्य भल व्यवहार करके मध्य कहबो ना वेरिएबल लॉसेस को मिनिमाइज कर परिबा तापर आसिला नोट पॉइंट टोटल वेरिएबल लॉस रो फार्मूला कोन सर टोटल वेरिएबल लॉस रो फार्मूला कोन IA स्क्वायर इनटू R आर्मेचर कॉपर लॉस सीरीज फील्ड कॉपर लॉस और शंट फील्ड कॉपर लॉस जोड़ा कांस्टेंट ब्रश ड्रॉप इनटू आर्मेचर करंट एटा होची कोन
ना टोटल वेरिएबल कॉपर लॉस रो फार्मूला। तापर आसिला नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म जहार ना कोन स्ट्रे लोड लॉसेस। जहार ना कोन कहले ना स्ट्रे लोड लॉसेस। ई स्ट्रे लोड लॉसेस आर द एडिशनल लॉसेस इन ए डीसी जनरेटर। स्ट्रे लोड टाको को लॉस रे काउंट करा जाउची सर स्ट्रे लोड टाको हमें एडिशनल लॉसेस रे काउंट करा जाउची that occur when the machine is loaded but are not accounted for in the regular copper and iron losses। जते बेले मशीन टा लोडेड थियो बट नॉट अकाउंट इन द रेगुलर जेमिति कॉपर लॉस आयरन लॉस जेमिति रेगुलर नै सेमिति रेगुलर नै। स्ट्रे लोड लॉसेस आर एसोसिएटेड विथ आर्मेचर करंट because they are associated with armature current and magnetic field interaction। से कहा सहित एसोसिएटेड अछि ना स्ट्रे लोड लॉसेस आर्मेचर करंट सहित एसोसिएटेड अछि बिकॉज़ कारण कोन एटी मैग्नेटिक फील्ड रो इंटरेक्शन होउची सेति पई कोन ता सहित इंक्लूडेड अछि। मेन कॉज ऑफ स्ट्रे लोड लॉसेस। मेन कॉज ऑफ स्ट्रे लोड लॉसेस कोन ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन फ्लक्स आर्मेचर रिएक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन फ्लक्स आर्मेचर रिएक्शन। ईडी करंट इन ए कंडक्टर एंड कम्यूटेटर आ लीकेज फ्लक्स लॉसेस। कोन कहिला सर स्ट्रे लोड लॉसेस रो हमर मेन कॉज कोन ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन फ्लक्स आर्मेचर रिएक्शन ईडी करंट इन ए कंडक्टर एंड कम्यूटेटर लीकेज फ्लक्स लॉसेस। एई सब कारण जोगु ओटे डीसी जनरेटर रे बा डीसी मशीन ने हमर स्ट्रे लोड लॉसेस प्रोड्यूस होछ। तापर नोट पॉइंट ए नोट पॉइंट सारा बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे क्वेश्चंस आसीची। मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रे लोड लॉसेस इज 0.5 to 1% of rated output power in electrical machine। सर जतक इलेक्ट्रिकल मशीन देखो स्ट्रे लोड लॉसेस जनरली केते परसेंट होची ना 0.5 रो 1% भीतर रहउची। तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन ना एफिशिएंसी ऑफ ए डीसी जनरेटर। एफिशिएंसी ऑफ ए डीसी जनरेटर इज द रेशियो ऑफ यूजफुल इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर टू मैकेनिकल इनपुट पावर सप्लाई टू द शाफ्ट। कोन कहला एफिशिएंसी कहिले कोन बुझिबो सर एफिशिएंसी कहिला माने इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय मैकेनिकल इनपुट पावर रेशियो टाको आमे जनरली कोन कहूची ना एफिशिएंसी बोली कहूची। इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर को कोन लिखा जाउची v into i आ मैकेनिकल इनपुट पावर को कोन ना मैकेनिक आउटपुट इनपुट पावर प्लस टोटल लॉसेस इनपुट पावर की vi तापर टोटल लॉसेस कहिला माने कांस्टेंट लॉस प्लस वेरिएबल लॉस। एटा होची पावर फ्लो डायग्राम। तापर नेक्स्ट डिस्कशन करिया कोन ना पावर फ्लो डायग्राम। ओटे डीसी जनरेटर रे फर्स्ट होची मैकेनिकल पावर इनपुट दिया गला। ए मैकेनिकल पावर इनपुट देला माने मैकेनिकल लॉस हो जोटा की कोन कांस्टेंट लॉस आयरन लॉस एंड फ्रिक्शनल लॉसेस। तापर आसीबो इलेक्ट्रिकल पावर डेवलपमेंट आर्मेचर डेवलप पावर तापर कॉपर लॉस काटी देले कोन होबो ना इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर हमें पाई छै। एटा होची कोन ना एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर। अब कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी देखो एफिशिएंसी रा फार्मूला कोन सर आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट माने आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट जगह कोन आउटपुट प्लस लॉसेस लिखि परिबा। ई लॉसेस टा जते बेले मिनिमम होबो सेते बेले तमर एफिशिएंसी कोन होबो मैक्सिमम। लॉस मिनिमम का फार्मूला कोन सर एटा 0 होबा दरकार ता माने कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉस। एटा बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पचारिछि गोटे डीसी मशीन नो मैक्सिमम एफिशिएंसी रो कंडीशन कोन सर मैक्सिमम एफिशिएंसी रो कंडीशन होछि कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू वेरिएबल। ए मैक्सिमम एफिशिएंसी रे आर्मेचर करंट केमिति कैलकुलेशन करा जाय सर आर्मेचर करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस डिवाइडेड बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस लॉस। तापर नोट पॉइंट रो बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आसीछि। तो डीसी जनरेटर ऑपरेट एट अ मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन कॉपर लॉस is are equal to the constant loss with increasing with load current। कौन तो हिला सर डीसी जनरेटर रे मैक्सिमम एफिशिएंसी रो कंडीशन कोन सर मैक्सिमम एफिशिएंसी रो कंडीशन होछि कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। एबे इज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस
एफिशिएंसी आ वेरिएबल लॉस को देखिबा जे कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पचार क्वेश्चन नंबर 1 केही भी साइलेंट रहिबनी समस्त निज निजर रेस्पॉन्स शेयर करिबा वेरिएबल लॉस इन ए डीसी मशीन मेनली डिपेंड्स ऑन डीसी मशीन ने वेरिएबल लॉसेस कहा ऊपर डिपेंड करूची एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर आसी जाउची सर ऑप्शन नंबर सी लोड करंट ऊपर डिपेंड करूची कहा ऊपर ना लोड करंट ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 कॉपर लॉसेस इन ए डीसी मशीन आर आल्सो नोन एज कॉपर लॉसेस को हमें आउ को लॉस कहि परिबा कॉपर लॉसेस को आउ को लॉस कहि परिबा एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सर कॉपर लॉसेस को हमें जनरली आई स्क्वायर आर लॉसेस कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 द फार्मूला फॉर आर्मेचर कॉपर लॉस आर्मेचर कॉपर लॉस रो फार्मूला कोन एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी P इज इक्वल टू I स्क्वायर इनटू R क्वेश्चन नंबर 4 if the armature current double armature copper loss केते जदि IA रो वैल्यू डबल हुए 2 टाइम्स हुए armature copper loss रो वैल्यू IA स्क्वायर इनटू R 2 रो स्क्वायर केते 4 एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 टाइम्स क्वेश्चन नंबर 5 in a DC shunt generator shunt field current is given by DC shunt generator रे shunt field current रो वैल्यू ISH रो वैल्यू कोन हो V by RSH एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 6 in a DC series machine the series field current गोटे डीसी सीरीज मशीन ने सीरीज फील्ड करंट रो वैल्यू कहा संगे समान एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इक्वल टू आर्मेचर करंट गोटे सीरीज जनरेटर रे सीरीज फील्ड रो करंट आर्मेचर करंट रो संगे समान क्वेश्चन नंबर 7 which of the following not a method reduce variable losses एमानक मध्यरु एमिति को मेथड अछि जो मेथड सहाय्य रे हमें वेरिएबल लॉस को मिनिमाइज कर परिबा एक्सीलेंट यूजिंग थिकर कंडक्टर करि परिबा यूजिंग बेटर कंडक्टिंग मटेरियल करि परिबा इंप्रूविंग कूलिंग एंड वेंटिलेशन करि परिबा ऑप्शन नंबर डी होज इंक्रीजिंग वाइंडिंग रेजिस्टेंस बढ़ले परिबा कमिंग क्वेश्चन नंबर 9 ऐड stray load losses are mainly associated with DC machine ने stray load losses टा कहा ऊपर associated excellent समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए armature current and magnetic field interaction armature current and magnetic field interaction question number 9 the efficiency of a DC generator is the ratio of efficiency of a DC generator is the ratio excellent समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर टू मैकेनिकल इनपुट पावर efficiency होची इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय मैकेनिकल इनपुट पावर क्वेश्चन नंबर 10 a DC generator operated maximum efficiency DC generator जते बेले maximum efficiency रे ऑपरेट करूची सेते बेले तार कंडीशन कोन रहउची एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर सी कांस्टेंट लॉसेस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉसेस कांस्टेंट लॉसेस इज इक्वल टू
ए जो एफिशिएंसी आ वेरिएबल लॉसेस रु 10 टा क्वेश्चन डिस्कशन कली कहार केतटा क्वेश्चन ठीक हैला के समस्त चार्ट सेक्शन मेसेज करो। आज क्लास रे तुमको लॉसेस एंड एफिशिएंसी कंप्लीट करिवार टारगेट थिला। लॉसेस आउ एफिशिएंसी कंप्लीट हे गला आउ डीसी जनरेटर एटा क्लास नंबर 3 तमर कंप्लीट हैला। नेक्स्ट क्लास रे डीसी जनरेटर इवनिंग रे क्लास नंबर 4 को डिस्कशन करिला। समस्त रेडी थी क्लास को अटेंड करने जो मैंने क्लास को लास्ट पर्यंत देखी समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगेन। जय जगन्नाथ। समस्त प्रैक्टिस कर रिविजन कर। आम आज डीसी जेनेरेटर केते नंबर क्लास स्टार्ट करिबा सर। डीसी जेनेरेटर आज आमर क्लास नंबर 4 डिस्कशन हो। डीसी जेनेरेटर रे आज आम केते नंबर क्लास को स्टार्ट करिबा सर। डीसी जेनेरेटर आज आम क्लास नंबर 4 को स्टार्ट करिबा। जो माने भी डीसी जेनेरेटर तीन टा क्लास देखिन क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3 रेकॉर्डेड सेक्शन ने वीडियो अछि समस्त ताको देखिर। टोटल क्लास ऊपर क्लास नंबर हमर 15 सीरीज चललानी जो 60 टा सीरीज रे वर्तमान 15 नंबर सीरीज चललानी। जो माने भी डीसी जेनेरेटर तीन टा क्लास देखिन रेकॉर्डेड सेक्शन ने वीडियो अछि समस्त देखिन। आज डीसी जेनेरेटर टॉपिक रे मु तुमको कौन कौन डिस्कशन करेबी ना वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए डीसी जेनेरेटर। तापर देन डिस्कशन करेबी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जेनेरेटर। तापर डिस्कशन करेबी मेन पर्पस ऑफ स्टडीइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जेनेरेटर। देन स्टडी करेबी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। देन स्टडी करेबी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। देन स्टडी करेबी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। then study करी characteristic of complex characteristic of compound excited DC generator। then discussion करिबा over compound generator, flat compound generator, under compound generator। तापर discussion करिबा concept of residual magnetism। तापर discussion करिबा reduction of residual magnetism। तापर discussion करिबा voltage build up process in a self excited DC generator, shunt generator। तापर डिस्कशन करिबा एसेंशियल कंडीशन ऑफ वोल्टेज बिल्ड अप। तापर डिस्कशन करिबा फैक्टर अफेक्टिंग वोल्टेज बिल्डिंग ऑफ डीसी जनरेटर। देन डिस्कशन करिबा क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। देन डिस्कशन करिबा क्रिटिकल स्पीड। देन डिस्कशन करिबा कंपैरिजन बिटवीन क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस एंड क्रिटिकल स्पीड। तापर फील्ड ब्लास्टिंग और रेमेडीज ऑफ लीड स्प्लिटिंग। एतिकी कंटेंट भितरु तमे जे कोनोसी कॉम्पिटिटिव वन डे एग्जामिनेशन दबो जेमिति कि ओएचपीसी दियो, ओपीटीसीएल दियो, ओएमसी दियो, ओडब्ल्यूएससी दियो, एसएससी दियो, आरआरबी दियो, ओजेई दियो, जे कोनोसी कॉम्पिटिटिव वन डे दबो गोटी क्वेश्चन से निहाती एतिकी टॉपिक रो आसी। समस्त रेडी तो क्लास को स्टार्ट करिया पई जो माने भी रेडी अछो क्लास को स्टार्ट करिया पई टिके समस्त चार्ट सेक्शन में यस लिखो। कोड़ीटा सब टॉपिक वाली डिस्कशन करा जीवो ध्यान पूर्वक देखिवो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। वेरी गुड। देखो कौन कहली ना वोल्टेज रेगुलेशन। प्रथम डिस्कशन करिबा कोन वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए डीसी जनरेटर। गोटे मिनिट कौन कहला ना वोल्टेज रेगुलेशन। कौन कहला वोल्टेज रेगुलेशन। ये वोल्टेज रेगुलेशन कहले कौन बुझिबो ना द वोल्टेज रेगुलेशन of DC generator is defined as the change in terminal voltage from no load to full load condition expressed as a percentage at the no load to full load। जे पचारिबो वोल्टेज रेगुलेशन कहले कौन बुझिबो सर गोटे डीसी जेनरेटर रे हमर दुई प्रकार वोल्टेज थाए। गोटे होची नो लोड वोल्टेज आ गोटे होची फुल लोड वोल्टेज। नो लोड रो वोल्टेज रो जनरली वैल्यू सब बळे हाई थाए आ फुल लोड रो वोल्टेज रो वैल्यू से लो थाए। ये जो वोल्टेज रो परिवर्तन नो लोड रो फुल लोड होची ताको हमें सारे कहउचे कोन जनरली वोल्टेज रेगुलेशन। जे पचारिबो वोल्टेज रेगुलेशन कहिले कोन बुझिबो सर गोटे डीसी जनरेटर रे नो लोड रो आ फुल लोड भितरे जो वोल्टेज रो परिवर्तन को
आमे जनरली वोल्टेज रेगुलेशन बोली कहूछ ए वोल्टेज रेगुलेशन नो फार्मूला कोन ना परसेंटेज VR इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज इनटू 100 एटा बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पचारिछि वोल्टेज रेगुलेशन नो फार्मूला कोन सर नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज divided by full load voltage into 100. Note point कौन सर zero voltage regulation will be offered by the ideal DC generator. एक क्वेश्चंस बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रासिची इंपोर्टेंट स्टार मार्क करिवो पचारिबो को जनरेटर एमिति अछि जहार जहार वोल्टेज रेगुलेशन नो वैल्यू 0 को जनरेटर एमिति अछि जहार वोल्टेज रेगुलेशन नो वैल्यू 0 से होची सर आइडियल जनरेटर इस सीरीज डीसी जनरेटर हैज पोरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन एटा आसुची वर्ड पोरेस्ट मन रखियो एमिति को जनरेटर अछि जो जनरेटर रे पोरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन अछि से होची डीसी सीरीज जनरेटर तुमको कोन डिस्कशन कली प्रथम सब टॉपिक को डिस्कशन कली जहार ना पिले कोन ना वोल्टेज रेगुलेशन ए वोल्टेज रेगुलेशन कहिले कोन बुझिबो सर वोल्टेज रेगुलेशन होची नो लोड रु फुल लोड भितर होतिया वोल्टेज रो परिवर्तन को वोल्टेज रेगुलेशन कुआ जाय गोटे आइडियल डीसी जनरेटर रे वोल्टेज रेगुलेशन नो वैल्यू 0 गोटे डीसी सीरीज जनरेटर रे वोल्टेज रेगुलेशन नो वैल्यू पोरेस्ट तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म डिस्कशन करिबा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन पिले ना कैरेक्टरिस्टिक देखो तो कहला द स्पीड कैरेक्टरिस्टिक को कहला देखो the speed of a DC machine is operated generator is fixed by the prime mover for general purpose operation the prime mover is occupied with the speed governor so that speed of the governor practically constant कौन कहला सर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मशीन को डीसी जनरेटर कहले कोन बुझिबो ना द स्पीड ऑफ ए डीसी मशीन इज ऑपरेटेड बाय द प्राइम मूवर गोटे डीसी जनरेटर अछि गोटे की डीसी मशीन अछि तार स्पीड को की ऑपरेट करूची ना प्राइम मूवर तार स्पीड को ऑपरेट करा जाय ए स्पीड को कंट्रोल करिया पई की अछि ना गवर्नर बोली गोटे जिंस अछि जनरली गोटे डीसी मशीन द स्पीड रो वैल्यू नियरली कांस्टेंट बोली से कहूची under such condition generator performance delays primary with the relation between excitation terminal voltage and the load generally कोन हुए को प्रकार कंडीशन ने मशीन नो परफॉर्मेंस ता टिके डिले थाए एक्साइटेशन हो कि टर्मिनल वोल्टेज हो आ लोड हो एटा होची कोन ना कैरेक्टरिस्टिक the main purpose एट तो मानकर क्वेश्चंस आसे the main purpose for studying characteristic of a DC generator तीनटा मेन रीजन अछि बा तीनटा मेन कैरेक्टरिस्टिक अछि गोटे डीसी जनरेटर को स्टडी करिया पाए मेन पर्पस ऑफ स्टडी टू अंडरस्टैंड वोल्टेज बिहेवियर अंडर लोड कोन कहिला गोटे डीसी जनरेटर रे हमें कोन पाई कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करिथा ना अंडरस्टैंड वोल्टेज बिहेवियर अंडर लोड रे गोटे डीसी जनरेटर रो वोल्टेज रो बिहेवियर केमिति थाए सेटा को स्टडी करिथा सेकंड to determine critical field resistance and voltage build up कोन कहिला गोटे डीसी जनरेटर रो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस रो वैल्यू केते अछि आ वोल्टेज बिल्ड अप पॉसिबल हेई परिबो ना नै से जिंस मध्ये कैरेक्टरिस्टिक रो हम स्टडी करी तीन नंबर काम कोन टू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट हाउ ए सिंगल जनरेटर विल बिहेव under various operating conditions such as the different type of load and the field current कोन कहिला आउ मध्य से कैरेक्टरिस्टिक रु आमे एया स्टडी करि पारु बा एया अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करि पारु गोटे सिंगल जनरेटर रो अंडर कोन डिफरेंट टाइप ऑफ लोड कंडीशन में से को बळिया बिहेव करूछ नो लोड रे हो फुल लोड रे हो कि हाफ लोड रे हो को बळिया बिहेव करूछ कोन कहिला सर द मेन पर्पस ऑफ स्टडीिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर सर जेते बेले हमें डीसी जनरेटर को स्टडी करूची तार कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करिवार मेन हम पाखरे तीनटा लक्षण कोन प्रथम काम होची अंडरस्टैंडिंग वोल्टेज बिहेवियर अंडर लोड सेकंड काम क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस आ वोल्टेज बिल्ड अप प्रोसेस थर्ड काम डिफरेंट लोड रे केमिति गोटे डीसी जनरेटर ता बिहेव करूची से जिंस हम जानि परिबा कोन ना कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर सेतु प्रथम कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कशन करिबा जहार ना बिले होची कोन ना ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक जहार ना कोन ना ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक
A open circuit core represented the relation between the generated voltage and no load and no load. Generated voltage or no load EMF and open circuit characteristic are obtained experimentally by operating the generator at a no load and constant speed and recording the change internal voltage at the field current is varied. कौन कहला a open circuit characteristic a open circuit shape is practically same for all generator whether separately excited or self excited से self excited generator हो कि separately excited generator हो open circuit character समस्तन को ପାଇଁ समान এই open circuit characteristic को आमे कहूचे no load saturation characteristic और magnetization characteristic ମଧ୍ୟ कहूचे open circuit characteristic को कम कहूचे देख এই ତିନି ପ୍ରକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ରୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ କହିଲି ଯାହାର ନାଁ କଣ ନା ଓପନ सर्किट କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ এই ओपन सर्किट क्यारेक्टरिस्टिक कहले मु कोन बुझुची सर ओपन सर्किट क्यारेक्टरिस्टिक कहले का भितरे ना नो लोड ईएमएफ E0 एंड फील्ड करंट भितरे ड्रा करा जाय आ सेतिरे कांस्टेंट रो वैल्यू रुहे स्पीड रो वैल्यू कांस्टेंट ए ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक रे से सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर ऊपर ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक समस्त को पई समान एही ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक रो अन्य नाम होची नो लोड कैरेक्टरिस्टिक नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक और ताको मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टर एथु गोटी ही क्वेश्चंस आसे ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कहा का भीतर ड्रा करा जाय E0 एंड IF E0 को कहउचंती नो लोड ईएमएफ आ आईएफ को कहउचंती फील्ड तापर पिले ड्रा करिबा मोस्ट इंपोर्टेंट कोन ना इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक इट इज रिप्रेजेंटेड द रिलेशन बिटवीन द नो लोड ईएमएफ नो लोड ईजी एंड आर्मेचर करंट कोन कहला नो लोड जनरेटेड ईएमएफ ऑन लोड ईजी वर्सेस आर्मेचर करंट इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक जनरेटेड ईएमएफ ईजी एंड आर्मेचर करंट विषय it is known as total characteristic ए इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक को हमें कोन कहउची ना टोटल कैरेक्टरिस्टिक मध्ये कहउची Eg is less than E0 due to demagnetisation effect of armature reaction ए इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक रे हमें कोन देखु ई जो Eg रो वैल्यू जनरेटेड ईएमएफ रो वैल्यू लेस देन हुए नो लोड वोल्टेज द कर्व लाइज बिटवीन ओसीसी ए कहा भीतर लाई करूची ना ओसीसी भीतर लाई करछि द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक वाइंडिंग रेजिस्टर्स एंड कोन कहिला सर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक मु ड्रा करिया को चाहिए जहार ना कोन पिले इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ए इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कहा भीतर ड्रा होछि ना इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक जनरेटेड ईएमएफ एंड आर्मेचर करंट ए इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक अन्य नाम होछि टोटल कैरेक्टरिस्टिक एही इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक रे जनरेटेड ईएमएफ वैल्यू लेस देन होछि नो लोड वोल्टेज ड्यू टू कोन पाई ना डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ए कर्वटा कोन ना बिलो ओसीसी अंडर में जाउछि तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक 3 नंबर कैरेक्टरिस्टिक आ तार ना होछि कोन ना एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक एही एक्सटर्नल कैरेक्टर इट इज रिप्रेजेंटेड द रिलेशन बिटवीन द टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट भितर जो कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करा जाउची ताका हम को कैरेक्टरिस्टिक होची ना एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक बोली कहउची इट इज आल्सो नोन एज अ लोड कैरेक्टरिस्टिक मध्ये ताको कहउचंती और ताको परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक बोली कहउचंती द कर्व इज लाइज बिटवीन इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक द कर्व इज लाइज बिटवीन इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक द टर्मिनल वोल्टेज Vt will be less than the generated EMF due to voltage drop in armature circuit armature circuit रे voltage drop जोगु generated EMF value less than हुए terminal voltage तापर 4 नंबर पॉइंट कोन it can be obtained by making the simultaneously measurement of terminal voltage and load current loaded to the generator the characteristic very important in determine suitability of a generator in given purpose कोन कहिबा पिले एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक विषय मु जानिया को चाहूची ए एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक रो मु एति की जिंस जानूची कोन ना टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट भितर जो कैरेक्टरिस्टिक को ड्रा करा जाउची
आमे ताको कहूचे कोन ना एक्सटर्नल कैरेक्टर। ए एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक रो अन्य नाम होची लोड कैरेक्टरिस्टिक। ए एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक रे जो कर्व लाइज बिटवीन इंटरनल कैरेक्टर भितर लाई करूची और टर्मिनल वोल्टेज रो वैल्यू लेस देन हो जाय। ये जो तीनटा कैरेक्टरिस्टिक कहली कौन कौन ना ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक आउ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। ए एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक भितर कौन सिखिला ना टर्मिनल वोल्टेज Vt वर्सेस कौन ना लोड करंट भितर ग्राफ टणा जाउची। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक रे कौन ना टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक भितर कहा भितर ना जनरेटेड ईएमएफ Eg वर्सेस Ia भितर क्या ग्राफ टणा जाउची। सेम ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक भितर कहा भितर ना ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक होची E0 नो लोड ईएमएफ एंड फील्ड करंट, नो लोड ईएमएफ एंड वर्सेस फील्ड करंट भितर ग्राफ टणा। ए तीनटा जाको क्वेश्चंस पिले आसुची, ध्यान देके तुम माने मन रखियो बोली कंक्लूजन में तुमको देली। कौन तुमको मु कंक्लूजन देली ना कंक्लूजन मु तुमको एया देली जे ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक E0 वर्सेस माने नो लोड ईएमएफ और फील्ड करंट भितर ड्रा करा जाउची। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक जनरेटेड ईएमएफ एंड आर्मेचर करंट भितर और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड भितर ड्रा करा जाउची। एति की जिंस तुम निहाती मन ए थ्रू क्वेश्चंस आसीबो तमर गोटे शॉर्ट आउट होई। तापर नोट पॉइंट कौन ना when a DC generator is loaded then the voltage drop occurs due to the two reason armature reaction and ohmic drop। कौन कहला गोटे DC जनरेटर जते बेले लोड कंडीशन ने ऑपरेट होउची सेते बेले वोल्टेज ड्रॉप होउची। गोटे DC जनरेटर वोल्टेज ड्रॉप होबार दीटा कारण अछि। प्रथम कारण आर्मेचर रिएक्शन जो गोटे DC जनरेटर रे वोल्टेज ड्रॉप होबो आ ohmic ड्रॉप जो गोटे DC जनरेटर वोल्टेज। गोटे DC शंट जनरेटर रिप्रेजेंटेड ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक और DC सीरीज जनरेटर रिप्रेजेंटेड राइजिंग कैरेक्टर। ए दीटा पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट तमरो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पचारिछि। कोन DC जनरेटर को प्रकार कैरेक्टरिस्टिक सर DC जनरेटर ए जो कैरेक्टरिस्टिक देखुछो एटा को कहबा ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक आउ DC सीरीज जनरेटर को कैरेक्टरिस्टिक ना ताको राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक होछ। दीटा कैरेक्टरिस्टिक मन रखिबो शंट जनरेटर ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक, सीरीज जनरेटर और राइजिंग। सीरीज रे एस वर्ड राइजिंग और ड्रॉपिंग शंट मोटर ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म डिस्कशन करिबा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड एक्साइटेड DC जनरेटर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म डिस्कशन करिबा कोन ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड DC जनरेटर। एक कंपाउंड DC जनरेटर केते प्रकार सर कंपाउंड DC जनरेटर होची तीन प्रकार। गोटे होची ओवर कंपाउंड DC जनरेटर आ गोटे फ्लैट और लेवल कंपाउंड DC जनरेटर आ गोटे होची अंडर कंपाउंड DC जनरेटर आ गोटे डिफरेंशियल कंपाउंड DC जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर केते प्रकार ना तीन प्रकार और क्युमुलेटिव होची तीन प्रकार ओवर कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड, अंडर कंपाउंड। ए जो ओवर कंपाउंड ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक जाईची ताको कहबा ओवर कंपाउंड आ पूरा तळे जो कैरेक्टरिस्टिक ताको कहबा अंडर कंपाउंड आ मझी रे जोटा रहिला ताको कहबा लेवल कंपाउंड बा फ्लैट कंपाउंड आ पूरा तळको जोटा पूरा लास्ट रे नहि दिबो सेटा को हम कहबा डिफरेंशियल कंपाउंड। एटा काहा का भीतर ड्रा करा जाउची ना टर्मिनल वोल्टेज एंड आर्मेचर करंट भीतर ड्रा करा जाउची। मन रखिलो ओवर कंपाउंड ग्राफ रो ऊपरटा मिडिल ता हवा फ्लैट कंपाउंड तार तळटा अंडर कंपाउंड पूरा सभा तळटा हमर कोन ना डिफरेंशियल कंपाउंड। प्रथम डिस्कशन करिवा पिले कोन ना ओवर कंपाउंड DC जनरेटर। ई ओवर कंपाउंड DC जनरेटर कहले कोन बुझिबो ना इन दिस जनरेटर full load terminal voltage is higher than the no load terminal voltage। कौन कहिला ओवर कंपाउंड DC जनरेटर कहा को कहबा सर जो जनरेटर रे फुल लोड टर्मिनल वैल्यू फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज वैल्यू ग्रेटर देन बड़ थाए नो लोड टर्मिनल वोल्टेज वैल्यू माने इनपुट जति देबा आउटपुट वोल्टेज वैल्यू बड़ होई जो फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज ग्रेटर देन हबो नो लोड टर्मिनल वोल्टेज ताको कहबा ओवर कंपाउंड। से बड़िया फ्लैट कंपाउंड DC जनरेटर का को कहबा ना इन दिस जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज। जो जनरेटर रे टर्मिनल वोल्टेज रा वैल्यू इक्वल टू नो लोड वोल्टेज रा वैल्यू सहित समान होई माने V इज इक्वल टू E होई। सेही प्रकार जनरेटर को हमें फ्लैट कंपाउंड जनरेटर बोली कहबे।
तापर आसीला अंडर कंपाउंड जनरेटर। ये अंडर कंपाउंड जनरेटर काहू कहबा जो जनरेटर रे टर्मिनल वोल्टेज रे वैल्यू लेस देन हबो फुल लोड वोल्टेज टा लेस देन हबो फुल लोड वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज लेस देन हबो नो लोड वोल्टेज टा ताको हम कहबा ना अंडर कंपाउंड। ये अंडर कंपाउंड रे कोन नोट पॉइंट कौन इन डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप वेरी क्विकली विथ इंक्रीजिंग आर्मेचर करंट और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर मोस्ट इफेक्टिव फॉर वेल्डिंग। पचारि वो डिफरेंशियल जनरेटर को आमे को डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर को आमे को व्यवहार करूची ना वेल्डिंग जनरेटर आमे जनरली डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को व्यवहार करूची। देख तुमको कंक्लूजन में कौन कहली ना तीनटा जिनस कहली कंक्लूजन में पिले तीनटा जिनस कौन कौन कहली ना प्रथम जिनस कहली कौन ओवर कंपाउंड अंडर ओवर कंपाउंड लेवल कंपाउंड आ अंडर कंपाउंड एथरु कौन शिखुछ सर ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर का को कहबा ना नो लोड रो फुल लोड रो वोल्टेज जदी नो लोड वोल्टेज तारो बढ़ी गला ताको हमें कहबा कौन ओवर कंपाउंड। लेवल कंपाउंड बा फ्लैट कंपाउंड को कहबा फुल लोड रो वोल्टेज इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज रो वैल्यू समान हे गेला। अंडर कंपाउंड को कहबा ना फुल लोड रो वोल्टेज लेस देन होबो नो लोड रो वोल्टेज ताको हम कहबा कोन ना अंडर कंपाउंड को कहबा। ए तीनटा जिंस मन रखिबो ओवर कंपाउंड अंडर कंपाउंड और लेवल कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कोट यूज करा छु मोस्ट इफेक्टिवली वेल्डिंग रे हमें जनरली डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को प्रेफर करू। वेरी गुड। तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म डिस्कशन करिबा कांसेप्ट ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन गोटे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रो कांसेप्ट कोन देखो the value of the flux density retained by the magnetic material is called residual magnetism। कौन कहला गोटे मैग्नेटिक मटेरियल ले जदि फ्लक्स और डेंसिटी ता किछि परिमाण रे रिटेन करके रही जाउची ताको हमें कहिबा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहिले कोन बुझिबो सर गोटे मैग्नेटिक मटेरियल जो किछि परिमाण रो फ्लक्स और डेंसिटी ता किछि परिमाण रो फ्लक्स और डेंसिटी ता रिटेन करके रही जाउची देन ताको हमें कहूचे सेही वैल्यू को हमें कोन कहूचे फ्लक्स डेंसिटी रो सेही वैल्यू को हमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोली कहू। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ दिस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल। तार प्रॉपर्टी की कोन कहउचंती ना रिटेंटिविटी। हाई रिटेंटिविटी का ना जतक प्रकार परमानेंट मैग्नेट से सब हाई रिटेंटिविटी हाई रेसिडुअल मैग्नेटिज्म से प्रेजेंट रहइबो। जे पचारिबो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहिले कोन बुझिबो सर गोटे मैग्नेटिक मटेरियल ले जो फ्लक्स डेंसिटी रो वैल्यू किछि परिमाण रे रिटेन करके रहउची सेही फ्लक्स डेंसिटी रो रिटेन वैल्यू को हमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहउछु। ए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रो प्रॉपर्टी ताको कहउचंती रिटेंटिविटी। को टाइप रो मटेरियल ले रिटेंटिविटी सबटु हाईएस्ट थाए ना परमानेंट मैग्नेट रे रिटेंटिविटी सबले हाई थाए। Second point, magnetization occur by the applying current in one direction। गोटिए डायरेक्शन ने करंट फ्लो हेले सेटी मैग्नेटाइजेशन हुए and the flux density is increased until the saturation point reach। जे पर्यंत गोटे सैचुरेशन पॉइंट रीच न करिवो फ्लक्स डेंसिटी रो वैल्यू से पर्यंत इंक्रीज करि जाउथि। गोटिए डायरेक्शन ने गोटे कॉइल ले जदी अप्लाइंग करंट करा जाउछि सेटी मैग्नेटाइजेशन हबो। मैग्नेटाइजेशन हबो फल रे फ्लक्स डेंसिटी ता बढ़िबो until जे पर्यंत गोटे सैचुरेशन पॉइंट जाय न पहुंचे। सेकंड पॉइंट, this phenomena of the residual magnetism widely seen in a transformer, generator and motor। जे पचारिबो गोटे एग्जांपल देलो एमिति हमें को जगह रे फील करि परिबा बा देखि परिबा ए जगह रे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म प्रेजेंट अछि बेली तमे कोन कहि परिबो सर ट्रांसफार्मर, जनरेटर एंड मोटर रे हमर जनरली रेसिडुअल मैग्नेटिज्म प्रेजेंट होछि। कोन कहिला सर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कथा मु शिखिया को चाहूछि। ए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहिले कोन बुझिबो सर गोटे मैग्नेटिक मटेरियल ले जो फ्लक्स डेंसिटी रो रिटेन करूछि जो वैल्यू ता को हम कहबा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रो प्रॉपर्टी ता को हम रिटेंटिविटी कहबा। जनरली परमानेंट मैग्नेट रो हाई रिटेंटिविटी
जदि करंट को गोटे डायरेक्शन गोटे कॉइल ले करंट को गोटे डायरेक्शन में फ्लो करा जाए सेठी मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हेले फ्लक्स डेंसिटी रो वैल्यू बढ़िबो जे पर्यंत सैचुरेशन पॉइंट न पहुंचे जनरली हम रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कोठी देखिया को पाइबा ना ट्रांसफार्मर जनरेटर एंड मोटर्स को देखिया को पाइबा तापर इंपोर्टेंट पॉइंट कोन रिडक्शन ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ता रेसिडुअल मैग्नेटिज्म तबेले गोटे खराब जिंस कि भलो जिंस तबेले ताको कमे परिबा केमिति इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय 42 इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय कहते 45 to 50% by using hot rolled steel material को सर व्यवहार करी आमे कोन ताको रिड्यूस करि परिबा सेकंड पॉइंट the saturation level of the magnetic material can be increased providing higher exciting current जदि आमे higher amount of exciting current को provided करिबा तबले saturation level ता कोन increase हे और by reversing the current direction जदि रिवर्स कर देबा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मिनिमाइज हे ये रेसि कौन कहला सर तीनटा जिनिस अछि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को रिडक्शन करिया पय गोटे 45 ରୁ 50% केमिति रिड्यूस हे परिबो ना हॉट रोल्ड स्टील मटेरियल व्यवहार कर सेकंड होची जदि एक्साइटिंग करंट हायर अमाउंट रे प्रोवाइडेड करबा त से मिनिमाइज हे परिबो नले करंट को रिवर्स कर देले मध्ये से मिनिमाइज हे जिवो रिडक्शन ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन ना वोल्टेज बिल्ड अप प्रोसेस इन ए सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कौन कहला गोटे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर रे वोल्टेज बिल्ड अप रो प्रोसेस कौन कहला गोटे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर रे वोल्टेज बिल्ड अप रो प्रोसेस ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर इज वन self excited DC generator is one in which field winding is energized by generator in own output गोटे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर रे फील्ड वाइंडिंग को किए एनर्जाइज करूची ना फील्ड वाइंडिंग को गोटे जनरेटर रो ओन आउटपुट को एनर्जाइज करूची सेकंड इज द वोल्टेज बिल्ड अप प्रोसेस डिपेंड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन रेसिडुअल मैग्नेटिज्म फील्ड करंट एंड आर्मेचर रिएक्शन पचारिबो गोटे डीसी जनरेटर रे वोल्टेज बिल्ड अप प्रोसेस ऊपर के डिपेंड करूची ना वोल्टेज बिल्ड अप प्रोसेस रे कहार इंटरेक्शन हेले हमें गोटे डीसी जनरेटर रे शंट जनरेटर रे वोल्टेज बिल्ड अप ना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म फील्ड करंट और आर्मेचर रिएक्शन नो इंटरेक्शन फल रे वोल्टेज बिल्ड अप प्रस्तुत होय ए वोल्टेज बिल्ड अप इज द प्रोसेस बाय व्हिच the output of voltage or induced EMF of a separately excited DC shunt generator gradually voltage build up from the initial starting point to final steady state कौन कहला ए जो voltage build up process रे output voltage और induced EMF of a separately excited DC generator gradually कौन होची ना gradually build up हो और initially starting point to final starting point कौन देखो सिखला सर गोटे वोल्टेज बिल्ड अप प्रोसेस केमिति होची गोटे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर रे जो फील्ड वाइंडिंग को एनर्जाइज होची सेटा जनरेटर ओन आउटपुट आ वोल्टेज बिल्ड अप प्रोसेस केमिति कहा ऊपर डिपेंड करूची ना इंटरेक्शन बिटवीन रेसिडुअल मैग्नेटिज्म फील्ड करंट एंड आर्मेचर रिएक्शन एबे वोल्टेज बिल्ड अप प्रोसेस नेक्स्ट इंपोर्टेंट कोन ना वोल्टेज बिल्ड अप प्रोसेस फॉर वोल्टेज बिल्डिंग अप द वोल्टेज इन सेल्फ एक्साइटेड शंट जनरेटर there must be residual magnetism सेटा कोन हेतिवा दरकार जेतेबेले प्रथम कोन residual magnetism must हेतिवा दरकार in the field circuit is brought up the if the field circuit is brought up to a desired value then the small voltage would appear across the generator armature terminal the residual flux a small voltage E or order to 1 volt to 2 volt will be generated कोन कहिला सर जते बेले वोल्टेज बिल्ड अप प्रोसेस होबन सेते बेले रेसिडुअल मैग्नेटिज्म निहाती दरकार कारण रेसिडुअल मैग्नेटिज्म फील्ड करंट निहाती दिला दरकार ए जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रे जो रेसिडुअल फ्लक्स डेवलपमेंट हो सेठी केते ईएमएफ इंड्यूस हो रेसिडुअल फ्लक्स हो ना 1 वोल्ट टू 2 वोल्ट ए जनरेटेड हो एक क्वेश्चन ता तमरा बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे 50 स्टार मार्क केते वोल्टेज इंड्यूस हो जी वोल्टेज बिल्ड अप रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रे ना एक ग्रुप तापर आसीला वोल्टेज बिल्ड अप तापर वोल्टेज बिल्ड अप कोन सेम पॉइंट देला सेम पॉइंट रे कोन देला
ना तापर पॉइंट देला दिस इज स्मॉल वोल्टेज appearing across the armature terminal will make a small current to start flow through the shunt field current connected across the armature terminal कौन कहला सर गोटे armature terminal across a small amount of voltage development हुए voltage build up process रे armature terminal across रे गोटे small voltage second point the field circuit should be connected that the mmf due to this initial current strengthen the residual magnetism तापर field circuit रे हमर कोन हबो ना field circuit रे should be connected mmf produce हबो the resultant flux in the field is increased leading to increase the emf in the armature कोन कहिला जते बेले resultant flux जते बेले voltage build up process रे हमर resultant flux ता increase होइता है आउ armature reaction में आउ leading positive रे मध्ये increase एबे आसिला ई जो पढेली एटा गोटे नॉर्मल प्रोसेस आ क्वेश्चंस कोड को आसीबो ना क्वेश्चंस सब तमर ए थ्रू ही आसीबो ए इंपोर्टेंट पॉइंट रो वोल्टेज बिल्ड अप रो क्वेश्चंस आसीबो कोन कोन आसीबो एसेंशियल कंडीशन ऑफ वोल्टेज बिल्ड अप प्रथम कंडीशन कोन पोल शुड बी कंटेन सम रेसिडुअल फ्लक्स पोल रे किछि परिमाण रो रेसिडुअल फ्लक्स दिवा दरकार सेकंड पॉइंट shunt field resistance should be less than the critical resistance ए पॉइंट बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पचारिछि ना गोटे डीसी जनरेटर वोल्टेज बिल्ड अप पाई एसेंशियल कंडीशन कोन प्रथम कंडीशन पोल शुड बी कंटेन सम रेसिडुअल फ्लक्स पोल रे किछि रेसिडुअल फ्लक्स दिवा दरकार सेकंड पॉइंट जो इंपोर्टेंट पॉइंट बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पचारिछि ना shunt field resistance रो वैल्यू लेस देन द क्रिटिकल रेजिस्टेंस थर्ड पॉइंट speed of prime mover of generator must be above critical speed speed of prime mover must be generator must be critical value how generator must be on load field and armature winding must be correctly connected to the initial mmf and the residual flux brush must have proper contact with the commutator कौन कहलो सर गोटे डीसी जनरेटर वोल्टेज बिल्ड अप करिया पई पांचटा प्रोसेस प्रथम प्रोसेस ना कोन ना पोल शुड बी कंटेन रेसिडुअल फ्लक्स रहइबो सेकंड इंपोर्टेंट पॉइंट कोन ना shunt field रेजिस्टेंस रो वैल्यू लेस देन रहइबो क्रिटिकल रेजिस्टेंस आ स्पीड ऑफ प्राइम मूवर जनरेटर मस्ट बी अबव द क्रिटिकल स्पीड रे जनरेटर मस्ट बी ऑन लोड रे ऑपरेट करिवो आ फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग मस्ट बी करेक्टली कनेक्टेड रहइबो आ ब्रश मस्ट हैव प्रॉपर कांटेक्ट विथ कंप्यूटर ब्रश का प्रॉपर कांटेक्ट रही एई चारिटा कंडीशन चार रो पांचटा कंडीशन वोल्टेज बिल्ड अप रे गोटे पचारुछ तापर आसीला फैक्टर अफेक्टिंग वोल्टेज बिल्ड अप कोन कोन ना देयर आर सम फैक्टर व्हिच अफेक्ट वोल्टेज बिल्ड अप इन सेल्फ एक्साइटेड डिवाइस तीनटा फैक्टर कोन कोन ना रिवर्स शंट फील्ड कनेक्शन रिवर्स रोटेशन और रिवर्स रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को तीनटा मेन इंपोर्टेंट फैक्टर जहा फल रे कि हमर वोल्टेज बिल्ड अप को कमे दे पारिबो ना रिवर्स करि दबो शंट फील्ड कनेक्शन रिवर्स करि दबो रोटेशन और रिवर्स करि दबो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म टेबल हमर कोन हबो ना वोल्टेज बिल्ड अप फैक्टर को डिफाइन तापर आसीला नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन ना क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस नेक्स्ट इंपोर्टेंट कोन ना क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस it is the maximum field circuit resistance of a DC shunt generator at which the generator just being voltage build up कौन कहला क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस होची ये गोटे होची मैक्सिमम फील्ड रेजिस्टेंस डीसी जनरेटर जो थरे जनरेटर कौन करूची जस्ट बिगन आरंभ करूची वोल्टेज बिल्ड नोट पॉइंट कौन द जनरेटर विल बिल्ड अप द वोल्टेज ओनली if the field circuit resistance is less than the field circuit resistance का value सब बेले कौन less than रहेगा critical resistance रे एक क्वेश्चन तक हमारा एग्जाम तापर आसीला पहले critical speed तो critical speed of a DC shunt generator is minimum critical speed ता DC shunt generator by minimum speed below which the generator
falls fails to build up voltage कौन कहला क्रिटिकल स्पीड कौन सर क्रिटिकल स्पीड कहला माने मु एया बुझुची डीसी शंट जनरेटर ये मिनिमम स्पीड बिलो which generator fail voltage build up सर क्रिटिकल स्पीड मु ताकेज कहबी गोटे शंट जनरेटर जोटा के मिनिमम स्पीड जोटी की वोल्टेज बिल्ड अप का फेल हे नोट पॉइंट कौन नोट पॉइंट यह होची द जनरेटर विल बिल्ड अप द वोल्टेज ओनली इफ द प्राइम ओवर स्पीड इज मोर देन द क्रिटिकल स्पीड कौन कंडीशन क्रिटिकल स्पीड पय रहिबा दरकार ना वोल्टेज बिल्ड अप करबा पय गोटे डीसी जनरेटर रे प्राइम ओवर स्पीड ग्रेटर देन रहिबा दरकार क्रिटिकल स्पीड प्राइम ओवर स्पीड ग्रेटर देन रहिबा क्रिटिकल स्पीड नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कौन ना कंपैरिजन बिटवीन क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस एंड क्रिटिकल स्पीड कंडीशन प्रथम पॉइंट कौन ना कंडीशन फॉर वोल्टेज बिल्डअप पाई कंडीशन कौन सर क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस मस्ट बी लेस देन क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस वैल्यू मस्ट बी लेस देन आउ कौन क्रिटिकल स्पीड रो कंडीशन कौन वोल्टेज बिल्डअप पाई speed must be greater than the critical speed कौन कहला speed must be greater than critical speed applies to what a self excited dc generator like shunt generator रे critical field resistance apply करा जाय what a self excited dc generator like dc shunt generator मध्ये critical speed का तापर आसिला control method control by field rheostat गोटे डीसी शंट जनरेटर रे क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस को कंट्रोल करबा पई हमें फील्ड रियोस्टेट कंट्रोल मेथड व्यवहार करू तापरे गोटे डीसी शंट जनरेटर रे कोन क्रिटिकल स्पीड को कंट्रोल करिया पई प्राइम ओवर स्पीड को हमें व्यवहार करू तापरे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन critical resistance is the tangential line to the OCC in the tangential line जो draw करा जाउछ OCC रे at critical speed केमितिया at the speed of the OCC just touches the same field resistance line importance कौन importance होची critical field resistance और importance कौन help in determine the maximum allowable field resistance voltage build up critical speed रो importance कौन help in determine minimum speed required for the voltage माने critical field resistance तो important कौन maximum resistance केमिति voltage build up है critical speed कौन minimum speed voltage build up आउ critical resistance unit होची कौन ना ओम आउ critical speed रा unit होची कौन rpm सेटा speed एटा resistance ए पांचटा पॉइंट को फैक्टर रखे कौन कंडीशन वोल्टेज बिल्ड अप कंडीशन कौन केमिति अप्लाई करा जाउची केमिति कंट्रोल करा जाउची ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोन इंपोर्टेंस कोन तापरे आसिला नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन फील्ड फ्लैशिंग नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन ना फील्ड फ्लैशिंग when there is no residual flux in the field pole the disconnect it from armature circuit and apply to the external source of a DC field winding magnetize the pole and called field flashing. Field flashing कहले कोन बुझिबो when जते बेले there is no residual flux field pole जते बेले field flashing जते बेले हबो जते बेले field pole ले कोनोसी प्रकार residual magnetism नथिबो बा residual flux नथिबो सेते बेले field flashing हुई a field flashing will induce some residual flux in the field pole फील्ड पोल ले कोन फील्ड फ्लैशिंग जोगो रेसिडुअल फील्ड फ्लक्स प्रेजेंट तापरे आसीला रेमेडीज को कारण फील्ड फ्लैशिंग पई अछि कॉज को कारण अछि फील्ड फ्लैशिंग आ ताको केमिति रेमेडीज करि परिबा आ डिटेक्शन पई कोन मेथड अछि प्रथम दिनसो सीरियल नंबर 1 कोन एब्सेंस ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ड्यू टू एजिंग जदि फील्ड फ्लैशिंग रो प्रथम कारण कोन ना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ताको केमिति ओवरकम करिबा ना ऑपरेटेड द जनरेटर एज सेपरेटली एक्साइटेड फर्स्ट एंड देन सेल जते बेले जनरेटर को ऑपरेट करियो फर्स्ट सेपरेटली एक्साइटेड कर तापर सेल
डायरेक्ट डिटेक्शन मेथड कौन ना जीरो रीडिंग ऑन अ वोल्टमीटर आफ्टर रोटेटिंग द जनरेटर को रोटेटिंग कला पर जीरो रीडिंग सेकंड मेथड ना कॉज कारण कौन फील्ड फ्लैशिंग रो ना फील्ड रेजिस्टेंस इज मोर देन द क्रिटिकल रेजिस्टेंस माने फील्ड रेजिस्टेंस रो वैल्यू टिके अधिक रहइबो कोन ना क्रिटिकल रेजिस्टेंस रेमेडीज केमिति ना रिड्यूस द फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस बाय यूजिंग फील्ड डायोड सर फील्ड डायोड व्यवहार करी हम रेजिस्टेंस वैल्यू रिड्यूस डायरेक्ट डिटेक्शन मेथड कोन वोल्टमीटर शो द जीरो रीडिंग वोल्टमीटर जीरो रीडिंग दल जान होइला तीन नंबर कारण कौन फील्ड फ्लैशिंग ना जनरेटर इज ड्रिवन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन जनरेटर टा तार ऑपोजिट डायरेक्शन में बुलिबो रेमेडी केंति ड्राइव द जनरेटर प्रॉपर डायरेक्शन यदि प्रॉपर डायरेक्शन जनरेटर ड्राइव कर से रेमेडी से तापर डिटेक्शन मेथड कौन द दिस न्यूट्रलाइज द रेसिडुअल फ्लक्स एंड फेड टू द 4 नंबर कॉज कौन ना रॉन्ग फील्ड वाइंडिंग कनेक्शन ड्यू टू फ्लक्स प्रोड्यूस इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन रेसिडुअल फ्लक्स रेमेडीज कौन ताको इंटरचेंज द फील्ड कनेक्शन कर आ ताको डिटेक्शन मेथड कौन वोल्टमीटर रीडिंग डिक्रीजेस रादर देन द इंक्रीजिंग जनरेटर ए भलिया भाबरे तमे कौन ना फील्ड फ्लैशिंग को रिड्यूस कर एबे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करिबा जोटा बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे तम मन को पचारि क्वेश्चन नंबर 1 केही भी साइलेंट रहिबनी समस्त निज निजर रेस्पोंड दो वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए डीसी जनरेटर कैन बी डिफाइंड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए डीसी जनरेटर कैन बी डीसी जनरेटर रो वोल्टेज रेगुलेशन को केमिते डिफाइन एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन नंबर बी चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड सर ये जो नो लोड रु फुल लोड भितर टर्मिनल वोल्टेज रो परिवर्तन को वोल्टेज रेगुलेशन कहा जाय क्वेश्चन नंबर 2 जीरो वोल्टेज रेगुलेशन इज ऑफर बाय एमानक मध्यरु को टाइप रो जनरेटर रे जीरो वोल्टेज रेगुलेशन देखा जाय एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सर आइडियल डीसी जनरेटर रे जीरो वोल्टेज रेगुलेशन क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच डीसी जनरेटर हैज पोरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन एमानक मध्यरु एमिति को जनरेटर अछि जहार वोल्टेज रेगुलेशन 4 एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सर डीसी सीरीज जनरेटर वोल्टेज रेगुलेशन द वैल्यू पोरेस्ट क्वेश्चन नंबर 4 ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेड रिलेशन बिटवीन ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कहा का भीतर ड्रा करा जाय एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सर जनरेटेड voltage at a no load and a field current E0 and IF भितरे no load voltage and a field current भितरे हमर ड्रा करा जाय डी नहीं है ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 5 internal characteristic of a DC generator represent the relation between internal characteristic कहा का भीतर एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सर जनरेटेड ईएमएफ ईजी एंड आर्मेचर करंट आई क्वेश्चन नंबर 6 इन एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डीसी जनरेटर रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक का भीतर एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट भीतर एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करा क्वेश्चन नंबर 7 रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहिले कोन बुझी एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्लक्स रिटेन बाय मैग्नेटिक मटेरियल केते परिमाण रो फ्लक्स को रिटेन करूची ताको कहबा रेसिडुअल क्वेश्चन नंबर 8 फॉर वोल्टेज बिल्डअप ऑफ ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी शंट जनरेटर what is self excited DC shunt generator जो वोल्टेज बिल्डअप एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर फील्ड रेजिस्टेंस वैल्यू लेस देन रहइबो क्रिटिकल रेजिस्टेंस
Question number no. Critical speed of a DC shunt generator. Critical speed of a DC shunt generator. Excellent. Samasthangara correct answer. Option number C. Minimum speed below which greater than the first voltage builder. Question number 10. Field flashing is used. Field flashing. सर फील्ड फ्लैशिंग कहला माने ऑप्शन नंबर बी कोनोसी प्रकार रेसिडुअल मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट इन द फील्ड कॉइल फील्ड पोल कोनोसी प्रकार रेसिडुअल मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट करता ये जो आज रो 10टा क्वेश्चन डिस्कशन कली कहार केतरा क्वेश्चन ठीक होला टिके समस्त चार सेक्शन में मैसेज कर सर मोर एतिकटा क्वेश्चन ठीक आज क्लास रे कौन कौन सिखेली तुमको ना स्टेप नंबर 1 वोल्टेज रेगुलेशन कौन स्टेप नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर सिखेली स्टेप नंबर 3 रे कौन ना वोल्टेज बिल्ड अप प्रोसेस ना डीसी जनरेटर स्टेप नंबर 4 रे कौन ना फील्ड फ्लैशिंग मन रखिबो फील्ड फ्लैशिंग पाए नो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म voltage build up by critical resistance greater than the field resistance और critical speed less than the जो माने क्लास टा को लास्ट पर्यंत देखिबारो समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू अगेन रहउची जय जगन्नाथ समस्त क्वेश्चन टा को प्रैक्टिस करिवो एवं रिवाइज मध्ये आउ टोटल क्लास ऊपर जो 60 सीरीज रो क्लास नंबर 16 जो माने 15टा क्लास पर्यंत देखिन वीडियो रिकॉर्डेड सेक्शन में देखि दब आज रो टॉपिक रे म तुमको कोन स्टार्ट करबी आज रो टॉपिक रे ए जो डीसी जनरेटर क्लास नंबर 7 तुम मान को ए विषय डिस्कशन करबी आज रो सब टॉपिक कोन आर्मेचर रिएक्शन इन ए डीसी मशीन जीएनए कोन एमएनए कोन पोल टिप ऑफ डीसी मशीन कोन leading pole tip kon trailing pole tip kon dc when dc generator is no load kon there are two types of armature reaction kon cross magnetizing kon calculation of cross magnetizing ampere turn per pole kon demagnetization kon effect of armature reaction kon remedies to reduce armature reaction kon compensating winding kon interpole kon माने टोटल ऊपर आमी ए विषय डिस्कशन करिबा आजिर टॉपिक रे कोन सर आर्मेचर रिएक्शन कोन आ आर्मेचर रिएक्शन भलो ना खराब जदी आर्मेचर रिएक्शन होउची ताको रिड्यूस करिया पई हमें कोन कोन पदक्षेप स्टेप नै परिबा से विषय डिस्कशन करिबा समस्त आजिर सब टॉपिक क्लियर हला कोन कोन पढिबा जो माने भी रेडी छ क्लास स्टार्ट करिया को ठीक है समस्त चार सेक्शन में यस लिखि दे सर रेडी बोली वेरी गुड फर्स्ट देखो आर्मेचर रिएक्शन कौन इन ए डीसी मशीन देयर आर टू काइंड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वन मेन फील्ड फ्लक्स एंड अनदर इज आर्मेचर फील्ड फ्लक्स गोटे डीसी मशीन रे केते प्रकार फ्लक्स प्रोड्यूस होउची सर गोटे डीसी मशीन ने दुई प्रकार फ्लक्स प्रोड्यूस होउची गोटे होउची कोन ना मेन फील्ड फ्लक्स आ गोटे होउची आर्मेचर फील्ड फ्लक्स देखो मु कहली एटा गोटे डीसी मशीन ए डीसी मशीन ने दुईटा पार्ट गोटे स्टार्टर पार्ट आ गोटे रोटर पार्ट ए स्टार्टर पार्ट रे कोन ना मेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होउची आ ये रोटर पार्ट रे कोन ना आर्मेचर फील्ड कोन आर्मेचर फ्लक्स स्टार्टर पार्ट रे कोन मेन फील्ड फ्लक्स आ रोटर पार्ट रे आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूस होउची ता माने गोटे डीसी मशीन ने केते प्रकार फ्लक्स प्रोड्यूस होउची तमे कहबो सर दी प्रकार गोटे मेन फील्ड फ्लक्स आ आर्मेचर फ्लक्स ए मेन फील्ड फ्लक्स कोठी प्रोड्यूस होउची ना सर स्टार्टर रे आर्मेचर फील्ड फ्लक्स कोठी प्रोड्यूस होउची ना रोटर इन ए डीसी मशीन आर्मेचर करंट विल सेट अप ओन मैग्नेटिक फील्ड ए डीसी मशीन ने जो आर्मेचर रे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होउची सेटा कोन ना निजर आर्मेचर करंट जो ही प्रोड्यूस हो
the effect of the armature flux on the main field flux called as armature reaction ता माने ultimately armature reaction कहिले कोन बुझिबो सर armature flux आ मेन फील्ड फ्लक्स को कोन प्रभाव पकोछि ताको हमें कहिबा armature reaction बुझि पारिलो जे पचारिबो पहिले armature reaction कहिले कोन बुझिबो सर armature reaction कहिले मु एते की जिंस बुझुछि ना आर्मेचर फ्लक्स आ मेन फील्ड फ्लक्स ऊपर कोन प्रभाव पकोछि ताको हमें कहउछि आर्मेचर रिएक्शन गोटे डीसी मशीन रे दी प्रकार फ्लक्स थाए गोटे होछि आर्मेचर फ्लक्स आ गोटे मेन फील्ड तापर आसिला नोट पॉइंट एई नोट पॉइंट रो पहिले तम मानकर एग्जाम जतक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोछ एई नोट पॉइंट रो तम मानकर क्वेश्चंस आसे कोन नोट पॉइंट रो क्वेश्चन आसे ना आर्मेचर रिएक्शन अकर्स बोथ डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर सर आर्मेचर रिएक्शन केवल को जनरेटर पे एप्लीकेबल मोटर पे नो यस कोन सर आर्मेचर रिएक्शन डीसी जनरेटर आर्मेचर रिएक्शन डीसी जनरेटर और डीसी मोटर पे बोथ पे एप्लीकेबल हे पारे त माने अल्टीमेटली तमे कोन कहि पाइबो ना आर्मेचर रिएक्शन डीसी मशीन पे सर एप्लीकेबल हे पारे सेकंड armature reaction will try to make a main field with the weak demagnetization and distort cross magnetization सर armature reaction हेले कोन हबो ना सर armature reaction हेले दीटा जिंस हबो आइदर demagnetization हबो न हले क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हबो ए demagnetization हेले कोन फ्लक्स तमर वीक हब बा दुर्बल हे जिवो आ क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हेले फ्लक्स को डिस्टोर्ट करिदो तापर डीमैग्नेटाइजेशन एंड क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूस देले ए जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होउची आ क्रॉस मैग्नेट या द्वारा कोन होउची ना आर्मेचर रिएक्शन होउची जहा फल टोटल रिड्यूस वोल्टेज जनरेटेड कोन टिके रिड्यूस वोल्टेज की सब जनरेटर एंड कॉज स्पार्किंग ऑफ द ब्रश ता फल वोल्टेज कम होउची जहा फल स्पार्किंग प्रोड्यूस होउची आर्मेचर रिएक्शन कॉज डिस्प्लेसमेंट मेन फील्ड फ्लक्स एंड इफेक्ट ऑफ वेवफॉर्म main field flux and make it non uniform armature reaction जो फ्लक्स रा हमर वेवफॉर्म कोन ना नॉन यूनिफॉर्म कोन कहिला सर नोट पॉइंट रो हम चारिटा जिंस शिक्षा को पाउ स्टेप नंबर 1 कोन सर आर्मेचर रिएक्शन डीसी जनरेटर आ मोटर पे एप्लीकेबल सर आर्मेचर रिएक्शन ने दीटा इफेक्ट देखैता है गोटे डीमैग्नेटाइजेशन आ गोटे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन ए डीमैग्नेटाइजेशन ने टोटल फ्लक्स वीक हेता है और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन ने टोटल फ्लक्स डिजर्ट हेते बट एलिमिनेट हे जाता है आ ए जो डीमैग्नेटाइजेशन क्रॉस मैग्नेटाइजेशन जो डीसी मशीन में असुविधा कोन होउची सर वोल्टेज जनरेटेड रिड्यूस हे होउची जहा फल ब्रश स्पार्किंग प्रोड्यूस होउची आ जो वेवफॉर्म आसुची मेन फील्ड फ्लक्स रो नॉन यूनिफॉर्म वेवफॉर्म आसुची एई टिके जिंस ही पछा तापर आसिला पिले कोन ना नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन जीएनए एटा फुल फॉर्म जानि थाओ जीएनए कोन ना जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस जीएनए कोन सर जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस जीएनए may be defined as the axis which is perpendicular to the stator field कोन कहिला सर स्टार्टर फील्ड सहित जो एक्सिस ता परपेंडिकुलर रुहे ताको हम जीएनए बोली कहू जीएनए बोली कहले कोन बुझिबो सर जीएनए कहिले मु एतिक जिंस जानु जी स्टार्टर फील्ड सहित जो एक्सिस ता परपेंडिकुलर बा 90 डिग्री रहउची ताको जीएनए कहू जीएनए ऑलवेज रिमेन परपेंडिकुलर टू स्टार्टर फील्ड एक्सिस इट इज एक्सिस सिमेट्रिकल बिटवीन द पोल ये कहार थाए ना सिमेट्रिकल थाए पोल तापर आसिला सर एमएन रो फुल फॉर्म कोन सर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस एमएन कोन ना मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस MNA may be defined as the axis along which no EMF generated in armature conductor as the move parallel to the flux line. Sir, MNA कहिले कोन बुझिबो? Sir, armature conductor टा जदि flux line सहित parallelly move करे आर्मेचर कंडक्टर टा जदि फ्लक्स लाइन सहित पैरेलली मूव करे ताको हमें कहिबी कोन ना एमएनए बोली कहबी how which is no EMF generator in armature conductor suppose ये north pole ये south pole एटे तमरो फ्लक्स होची एई जो MN एक्सिस टा मूव करियो किंतु GN एटा कोन जो थिले सेठी कांस्टेंट रहइबो स्टार्टर फील्ड एक्सिस परपेंडिकुलर 90 डिग्री किंतु MN एटा मूव करियो पैरेलल टू द फ्लक्स लाइन एमिति कोन आसी पैरेलल एबे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करिबा जोडा बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे तम मानकर आसीची समस्त आशा करूची करेक्ट आंसर आ गोटे नोट पॉइंट कोन ए नोट पॉइंट को ध्यान दियो
In case of a load DC generator, MN shifted towards the direction of rotation. कौन कहिला सर DC जनरेटर रे दीटा एक्सिस था गोटे MNA आ गोटे GNA एई MNA टा कोन करिथाय सर मूव करिथाय बा शिफ्ट करिथाय कुआडे ना DC जनरेटर केस जदि आपण कंपैरिजन करूछंती डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जदि DC जनरेटर डायरेक्शन ऑन रोटेशन क्लॉकवाइज अछि तेबेले MNA शिफ्ट करियो मध्ये क्लॉकवाइज इन केस ऑफ DC मोटर MNA शिफ्ट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सर जदि डीसी मोटर कथा आपण कंपैरिजन करूछंती डीसी मोटर कथा जदि डीसी मोटर क्लॉकवाइज रोटेशन करूची तबे हेले एमएनए कोन ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करियो एमएनए कोन ना एंटी क्लॉकवाइज ब्रशेस आर ऑलवेज प्रेस एमएन एई क्वेश्चन ता बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पचारिबो डीसी मशीन रे ब्रश को एक्सेस रे प्रेजेंट होउची ना एमएनए रे प्रेजेंट होउची बिकॉज़ कारण reversal of current in the armature conductor take place along the MN axis कारण armature current reverse हो आउ MN coincide with general no load condition सर गोटे DC जनरेटर जतबे no load condition ने थिबो ना MN GN गोटाई जगह coincide हे गय एक क्वेश्चंस मध्ये बहुत जगह रे एग्जाम एक नोट पॉइंट रो कोन सिखुचो सर नोट पॉइंट रो को तीनटा दिन सिखुची कोन कोन स्टेप नंबर 1 कोन सर गोटे DC जनरेटर रे जेतेबेले आर्मेचर रिएक्शन होउची सेतेबेले एमएनए शिफ्ट करिवो एमएनए केमिति शिफ्ट करूची ना जो डायरेक्शन रे जनरेटर रोटेशन करती स्टेप नंबर 2 कोन सर गोटे डीसी मोटर रे एमएनए क्वाड शिफ्ट करिवो ना अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन थर्ड जिंस कोन ब्रश कोड प्रेजेंट होउची ना एमएनए कोन पाए प्रेजेंट होउची ना रिवर्सल ऑफ करंट आर्मेचर करिया पाए आउ नो लोड कंडीशन ने एमएनए आउ जीएनए सबोले कोइंसाइड हे करै एथर किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिबा जोटा तमरो प्रीवियस ईयर एग्जाम रे सब एग्जाम रे आसी छि समस्त मते चार्ट सेक्शन ने आंसर दो जेते जणा भी लाइव अछ समस्त चार्ट सेक्शन ने आंसर दो क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन इन ए डीसी मशीन ने आर्मेचर रिएक्शन कहिले कोन बुझो एक्सीलेंट सर समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स सर आर्मेचर फ्लक्स आ मेन फील्ड फ्लक्स ऊपर कोन प्रभाव पकेबो ताको हमें कहूचे कोन ना आर्मेचर रिएक्शन वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 2 आर्मेचर रिएक्शन अकर्स को टाइप रो जनरेटर बा मोटर बा को टाइप रो मशीन ने आर्मेचर रिएक्शन होउची को टाइप रो मशीन ने आर्मेचर रिएक्शन एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर्स बोथ डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर बोथ डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर रे आर्मेचर रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 3 which of the following not an effect of armature reaction एमान को मध्यरु कोटा इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन सर आर्मेचर रिएक्शन हेले विथ द मेन फील्ड फ्लक्स एटा विथ हो डिस्ट्रॉय द मेन फील्ड फ्लक्स ध्वंस हो एटा भी हो इंक्रीज जनरेटेड ना सर रिड्यूस हो जनरेटेड वोल्टेज आ स्पार्किंग एट द बस एटा नॉट कम कहिला सर जते बेले आर्मेचर रिएक्शन हबो सेते बेले मेन फील्ड फ्लक्स कमिवो आर्मेचर फील्ड मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रॉय हो आ कोन हो स्पार्किंग प्रोड्यूस हो ब्रश रे आ कोन जनरेटेड वोल्टेज ता रिड्यूस हो एटी इंक्रीज देस क्वेश्चन नंबर 4 सबसे इंपोर्टेंट जीएनए इज डिफाइंड एज द एक्सिस सर जीएनए को एक्सिस रे रहे परपेंडिकुलर है जीएनए को एक्सिस रे रहे एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर बी कोन ना जीएनए परपेंडिकुलर टू द स्टार्टर फील्ड एक्सिस ऑप्शन नंबर बी जो माने दैछ समस्तंगर करेक्ट आंसर सर जीएनए स्टार्टर फील्ड एक्सिस सहित परपेंडिकुलर क्वेश्चन नंबर 5 जीएनए ऑलवेज सर क्वेश्चन रिपीट हे छै परपेंडिकुलर टू द स्टार्टर एक्सिस क्वेश्चन नंबर 6 एमएनए इज द एक्सिस along एमएनए को एक्सिस रे प्रेजेंट होय एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नो ईएमएफ जनरेटेड इन आर्मेचर कंडक्टर जो नो ईएमएफ से जगह रे एमएनए सबोले प्रेजेंट
क्वेश्चन नंबर 7 इन लोडेड डीसी जनरेटर एमएनए शिफ्ट गोटे डीसी जनरेटर लोडेड कंडीशन में अछि एमएनए कुआडे शिफ्ट करिवो एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्वेश्चन नंबर 8 इन लोडेड डीसी मोटर एमएनए शिफ्ट गोटे लोडेड डीसी मोटर रे एमएनए कुआडे शिफ्ट करे एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्वेश्चन नंबर 9 why are brush placed on the magnetic neutral axis कोन पाई को कारणरो ब्रश टाकू हमें प्लेस करूचे एमएनए एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर सर because current reversal take place along the MNA because current reversal MNA question number 10 under which condition GNA and MNA coincide को कंडीशन ने GNA और MNA coincide है एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नो लोड कंडीशन ने एमएनए और जीएनए कोइंसाइड ए जो 10टा डिस्कशन कली आर्मेचर रिएक्शन न कोन जीएनए कोन एमएनए कोन कहार केतरा क्वेश्चन ठीक हैला ठीक है समस्त चैट सेक्शन में मैसेज कलो सर मोर तीनटा क्वेश्चन ठीक है दस रु 9 एक्सीलेंट वेल डन टिके इंप्रूवमेंट करो 10 10 आना भल लगता वेरी गुड आंसर शीट ता क्वेश्चन पीडीएफ पछपटे आंसर शीट प्रोवाइडेड कर दीजिए समस्त चेक कर तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म डिस्कशन करिबा पिले पोल टिप्स ऑफ ए डीसी नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन ना पोल टिप्स ऑफ ए डीसी Each main pole of a DC machine, north or south, has two ends or edge along the direction of rotation that a leading pole tip and a trailing pole. सर गोटे डीसी मशीन रे मेन पोल केतेटा अछि सर गोटे डीसी मशीन ने दीटा मेन पोल रहते गोटे होची सर नॉर्थ पोल आ गोटे होची साउथ पोल ए डीसी मशीन ने जो दीटा पोल अछि नॉर्थ पोल और साउथ पोल ए दुईटा को मेन पोल को भाजा यार दीटा एंड थाए बा ए दीटा एंड बा दीटा एज रे एटा देखो नॉर्थ पोल और एटा साउथ पोल ए एज रे दीटा एज रे हमर कोन ना डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ए जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ए दीटा एज को कहउचंती लीडिंग पोल एंड ट्रायलिंग पोल माने पोल टिप का कहबा सर गोटे डीसी मशीन रे दीटा पोल थाए नॉर्थ पोल और साउथ पोल ए जो नॉर्थ पोल देखो कि साउथ पोल तमे जे कोनसी गोटे को कंपैरिजन करी कि देखो दीटा एंड रे दीटा लीडिंग कोन दीटा पोल टिप थाए गोटे लीडिंग पोल टिप आ गोटे ट्रायलिंग पोल प्रथमे डिस्कशन करिवा कोन सर लीडिंग पोल टिप प्रथमे डिस्कशन करिवा कोन ना लीडिंग पोल द एज ऑफ द पोल which first meet to the armature conductor are they rotate कौन कहिला लीडिंग पोल टिप कहिले कौन बुझिबो सर जो एजटा पोल रे आर्मेचर जो पोल रो जो एजटा आर्मेचर कंडक्टर फर्स्ट मीट करिवो आ देन रोटेट करिवो ताको हमें कहिबा लीडिंग पोल बुझि पारिबो पोल रो जो एजटा आर्मेचर कंडक्टर रे प्रथम मीट करिवो ताको हमें कोन कहिबा ना लीडिंग पोल तापर आसीला ट्रायलिंग पोल द एज ऑफ द पोल व्हिच लेफ्ट बिहाइंड द आर्मेचर कंडक्टर एंड द मूव ई कोन कहना सेकंड बाकी तक लेफ्ट बिहाइंड द आर्मेचर कंडक्टर रो पछरे जो पोल टिप ता रहिला ताको हमें कहिबा ट्रायलिंग पोल
in a DC generator with clockwise rotation armature गोटे DC generator रे armature केमिति rotation करे सर clockwise for north pole leading pole tip is left edge and the trailing pole tip is right edge when the conductor is exist जेते बेले सर गोटे DC generator जेते बेले सर गोटे DC generator केमिति बुलुची सर गोटे DC generator मोर clockwise बुलुची जेते बेले से क्लॉक वाइज बुलुची नॉर्थ पोल ले लीडिंग पोल टिप रहउची लेफ्ट एज रे आ राइट साइड रे ट्रायलिंग पोल टिप रहउ आ राइट साइड रे कोन ट्रायलिंग पोल टिप रहउची एटा थान तापर आसीला नोट पॉइंट जानिचो परीक्षा रे नोट पॉइंट माने परीक्षा रे सेटा 100% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस leading pole tip and a trailing pole tip term defined based on the direction of armature rotation आमे केमिति एटा को कहउची लीडिंग पोल टिप और ट्रायलिंग पोल टिप सर बेस्ड ऑन आर्मेचर रोटेशन जो अनुसार करिवो सेही अनुसार हमें ना दबा कोन ना सर एटा लीडिंग पोल टिप की ट्रायलिंग पोल सेकंड पॉइंट in a DC generator the trailing pole tip increase flux density DC generator जो जगह रे ट्रायलिंग पोल टिप हो सेही जगह रे फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हो फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज होला माने ईएमएफ कोन ना इंक्रीज हो किंतु इन ए डीसी मेथड रे ट्रायलिंग पोल टिप ए रिड्यूस फ्लक्स डेंसिटी माने ईएमएफ कोन हो ना कम छी देख नोट पॉइंट रु सीधा सड़क तीनटा क्वेश्चन हम शिक्षा को पाउछ कोन सर गोटे डीसी जनरेटर रे लीडिंग पोल टिप और ट्रायलिंग पोल टिप केमिति डिफाइन करिबा ना आर डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर रोटेशन जो अनुसार थिबो हमें सही अनुसार लीडिंग पोल टिप और ट्रायलिंग पोल टिप देख बट डीसी जनरेटर रे ट्रायलिंग पोल टिप रे कोन हबो सर फ्लक्स डेंसिटी बढ़ी ईएमएफ कोन हबो बढ़ी सर गोटे डीसी मोटर रे ट्रायलिंग पोल टिप रे फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूस हबो एवं ईएमएफ मध्य रिड्यूस हबो देख तापरे हमें दीटा कंडीशन पड़िबा जते बेले आर्मेचर रिएक्शन में केतुटा कंडीशन सर आर्मेचर रिएक्शन दुईटी कंडीशन गोटे गोटे नो लोड रे आ गोटे लोड आर्मेचर रिएक्शन में केतटा कंडीशन अछि सर आर्मेचर रिएक्शन में दुईटी कंडीशन सर कोन ना गोटे नो लोड रे आ गोटे लोड देखो at no load condition there is not armature current so there any armature flux कौन कहला सर नो लोड कंडीशन में सर आर्मेचर रो करंट वैल्यू 0 तेणु करी आर्मेचर फ्लक्स रो मूल्य मध्ये 0 as field current produce field flux which flow towards the south pole from north pole तबेले को फ्लक्स टोटल सिटी फ्लो होचेती सर एटी टोटल फील्ड करंट जो फील्ड फ्लक्स फ्लो होची साउथ पोल टू कोन नॉर्थ पोल एवडा द नेट फ्लक्स ऑफ द सिस्टम कैन बी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली लाइन टोटल फ्लक्स केमिति जीवो केवल हॉरिजॉन्टली देखो कोन कहलिया सर गोटे डीसी जनरेटर रे आर्मेचर रिएक्शन को कंडीशन ना नो लोड कंडीशन नो लोड कंडीशन में स्टेप नंबर 1 कोन सर आर्मेचर रे करंट वैल्यू 0 तेणु करी आर्मेचर फ्लक्स रे वैल्यू 0 तबे हेले आउ के रहिला ना फील्ड फ्लक्स माने फील्ड करंट फ्लो होउची किछ ना किछ आउ फील्ड करंट जो फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस होउची तो फील्ड फ्लक्स कुआड जाउची ना साउथ पोल टू नॉर्थ पोल जाउची तेणु करी ए जो नेट सिस्टम रे फ्लक्स ता केमिति फ्लो हुए ना स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली भाबर केवल ही फ्लक्स ता फ्लो at no load there is no armature reaction sir गोटे डीसी जनरेटर रे इंपोर्टेंट पॉइंट कोन सर नो लोड रे कोनोसी प्रकार आर्मेचर रिएक्शन होय सेकंड पॉइंट कोन ना एमएनए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड एकाठी रहंती जीएनए सहित नेट फ्लक्स इज परपेंडिकुलर एमएनए एंड जीएनए बोथ नेट फ्लक्स ता केमिति ना एमएनए और जीएनए रा परपेंडिकुलर ना पड़िते तबले तीनटा कंक्लूजन पॉइंट कोन पिले सिखिलो सर डीसी जनरेटर आर्मेचर रिएक्शन नो लोड कंडीशन में आर्मेचर रिएक्शन हो नै आर्मेचर करंट रो वैल्यू 0 आउ एमएनए जीएनए कोइंसाइड होती आउ नेट फ्लक्स रे परपेंडिकुलर रहइबो एमएनए एंड जीएनए एक्सिस तापर सेकंड इंपोर्टेंट टर्म देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ता माने आर्मेचर रिएक्शन एटा नो लोड रे गला
एबे डिस्कशन करिबा आर्मेचर रिएक्शन लोड कंडीशन जेते बेले आर्मेचर रिएक्शन लोड कंडीशन में कंसीडर करिवो सेते बेले दी प्रकार आर्मेचर रिएक्शन देखैबो गोटे कोन ना को जगह रे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हबो नहले ता को जगह रे डी मैग्नेटाइजेशन ता माने आर्मेचर रिएक्शन नो एटा होची आर्मेचर रिएक्शन ए आर्मेचर रिएक्शन दीटा कंडीशन सर गोटे नो लोड आ गोटे लोड नो लोड रे कोन कोनोसी प्रकार आर्मेचर रिएक्शन नाही किंतु लोड रे आर्मेचर रिएक्शन होची ए जो आर्मेचर रिएक्शन होची दी प्रकार गोटी होची क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आ गोटी होची डी मैग्नेटाइजेशन होची बोली से होची प्रथम डिस्कशन करिवा सारे कोन ना क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इंपोर्टेंट पॉइंट प्रथम डिस्कशन करिवा कोन ना क्रॉस मैग्नेटाइजेशन ई क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कहिले कोन हबो ना द इफेक्ट ड्यू टू व्हिच आर्मेचर रिएक्शन डिस्ट्रॉय द टोटल फ्लक्स नोन एज क्रॉस मैग्नेटाइजेशन ता आर्मेचर रिएक्शन में जदि टोटल फ्लक्स रो वैल्यू डिस्ट्रॉय हेई गला माने आर्मेचर रिएक्शन में टोटल फ्लक्स रो वैल्यू डिस्ट्रॉय हेई गला सही प्रकार इफेक्ट टा को हमें कहिबा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट टोटल फ्लक्स डिस्ट्रॉय हेई गला त कोन कहला ना क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट देखो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट रे कोन होउची ना क्रॉस मैग्नेटाइजिंग occur wherein iron core is unsaturated in the case of both DC generator and DC motor सर से DC जनरेटर हो कि DC मोटर हो DC जनरेटर हो कि DC मोटर हो ये जो आयरन कोर व्यवहार करूथिबे आपण सेटा अनसैचुरेटेड हेतिबा दरकार सेकंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट इज मोस्ट prominent when iron core unsaturated because the condition of armature reaction only distort the main field flux without reducing the total flux per pole. Total flux per pole को reduce न करी without reduce न करी कि main field flux को से destroy कर third point. In this effect of flux becomes stronger and one end of the pole leading pole tip in case of a DC motor. A cross magnetization result on even flux distribution. The cross magnetization कौन क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एया बुझो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में नेट फ्लक्स कोन होची ना स्ट्रॉन्गर होची लीडिंग पोल तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कम कहिला इन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन आर्मेचर फ्लक्स एंड मेन फील्ड फ्लक्स ऑन नॉन-बेडिंग ए क्वेश्चन ता मध्ये पचारिबो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन ने मेन फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फील्ड फ्लक्स केते डिग्री रहउची सर 90 डिग्री रहउची ड्यू टू क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट डिस्ट्रॉय द मेन फील्ड फ्लक्स दैट इज फ्लक्स क्राउडेड इन वन साइड वीकेंड एंड द अदर गोटे साइड क्राउडेड होची अदर साइड ता वीक होची क्रॉस मैग्नेटाइजेशन ने मेन फील्ड फ्लक्स आर्मेचर कोन करूची ना डिस्टोर्शन करूची तापर आसिला कैलकुलेशन फॉर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न तापर कोन कहिला ए जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होची एटा गोटे खराब जिंस एमिति केते क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एम्पियर टर्न पर पोल होची ना एम्पियर टर्न पर पोल होची Z I फार्मूला कोन ना Z I ब्रैकेट स्टार्ट 1 divided by 2p थीटा m divided by 360 z कोन टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कोन p कोन नंबर ऑफ पोल ia कोन आर्मेचर कंडक्टर पर आ लैप वाइंडिंग रे ia by p होची करंट ia by कोन होची करंट फॉर वेव वाइंडिंग रे ia by 2 होची आ थीटा मैकेनिकल इज इक्वल टू 2 into थीटा इलेक्ट्रिकल डिवाइडेड कोन कहिली इंपोर्टेंट सर कैलकुलेशन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पोल केते क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पोल होची Z IA divided by Z IA divided by 2p minus theta divided by 3 तापर सेकंड तार ऑपोजिट टर्म ता कोन आसीला ना डीमैग्नेटाइजेशन the effect due to which armature reaction reduce the total flux सेठी क्रॉस मैग्नेटाइजेशन ए जगह रे कोन थिला ना डिस्टोर्ट थिला ए जगह रे कोन होबो डीमैग्नेटाइजेशन माने टोटल फ्लक्स कोन होबो ना कमी जीवो
The effect of due to armature reaction reduce total flux. When machine is loaded, then the brush are shifted from the GNA. Then both cross magnetizing and demagnetizing effect are due to armature. Sir, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ DC generator loaded condition ରେ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ DC generator loaded condition ରେ ଥିବ, ସେତେବେଳେ brush ଟା shift करे କଣ? Brushes are shifted GNA to the both cross magnetizing and demagnetizing effect of the due to armature reaction. Due to shift some part of the armature field directly oppose the main field flux, so total flux become like कौन कहला जत्ते बेले सर ब्रश टा हमरो शिफ्ट करे आर्मेचर फील्ड रे डायरेक्टली अपोज करिवो कोन ना मेन फील्ड डीमैग्नेटाइजेशन मींस डिक्रीमेंट ऑफ फील्ड ता माने डीमैग्नेटाइजेशन कहिले कोन हबो ना एया तमे बुझी जाओ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कमी जाଉଛି जहा फल ईएमएफ रो बहुत बात तापर आसिला कोन कैलकुलेशन और डीमैग्नेटाइजेशन एम्पियर का फार्मूला कोन Z into IA theta divided by 360 Z कोन ना टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर IA कोन आर्मेचर कंडक्टर करंट इन एम्पियर theta m कोन फॉरवर्ड शिफ्ट ऑफ अ क्रॉस मैकेनिकल theta mechanical is equal to 2 into theta electrical divided by 4 ए जिनसटा मन रखो जते बेले मैकेनिकल डिग्री थीटा रा वैल्यू 360 थीटा इलेक्ट्रिकल माने 180 थीटा मैकेनिकल और थीटा इलेक्ट्रिकल भीतर रिलेशन कोन सर थीटा मैकेनिकल इज इक्वल टू 2 into थीटा इलेक्ट्रिकल डिवाइडेड बाय 4 तापर आसिला इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन सर ए क्वेश्चन दा तमरो बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पचारि छी ध्यान दब स्टार मार्क आर्मेचर रिएक्शन जो एते पढिले तार मेन प्रभाव एते सर प्रथम काम होची डिस्टोरेशन मेन फील्ड फ्लक्स कमी जीव आर्मेचर रिएक्शन हले शिफ्ट हबो मैग्नेटिक एमएन एक्सिस सब बेले शिफ्ट करिवो थर्ड जिंस रिडक्शन ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स sparking at a brush due to poor commutation of reduced efficiency and uneven torque ता माने सर आर्मेचर रिएक्शन गोटे भलो जिंस ना खराब जिंस सर आर्मेचर रिएक्शन होची गोटे खराब जिंस तेनो करी सेही आर्मेचर रिएक्शन हेले कोन हबो सर मेन फील्ड फ्लक्स कम होची मेन फील्ड फ्लक्स कम होची नले मेन फील्ड फ्लक्स डिस्टोर होची आउ एमएनएस शिफ्ट होची स्पार्किंग प्रोड्यूस होची पोर कम्यूटेशन जो एफिशिएंसी कम होची आउ ऑन इवेंट टॉर्क मतलब प्रोड्यूस होची ता माने याकू ओवरकम करिया पई आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करिया पई हम पाखरे पांचटा मेथड अछि केतेटा मेथड सर ए पांचटा इंपोर्टेंट मेथड रो हमें आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करिया प्रथम मेथड ना कोन यूजिंग कंपेंसेटिंग वाइंडिंग एटा बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पचारि छी कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को व्यवहार करी कि हम कोन करूची ना आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करिबा सेकंड क्वेश्चन यूजिंग इंटरपोल और कंपेंसेटेड आर्मेचर यूजिंग कंपेयर टू द आर्मेचर फ्लक्स कोन कहला इंटरपोल व्यवहार करी कि मध्य एटा मध्य एग्जाम रे पचारि छी रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शनल ऑफ पोल पीसेस cross section reducing cross section of pole pieces by laminating poles by brush shifting किंतु फास्ट दीटा इंपोर्टेंट जोटा कि बारंबार तमर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सर आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करिया पय मो पाखरे केतेटा मेथड अछि ना सर पांचटा प्रथम मेथड ना कोन कंपेंसेटिंग वाइंडिंग व्यवहार करो सेकंड मेथड ना कोन इंटरपोल व्यवहार करो थर्ड मेथड ना कोन ना पोल पीसेस रो क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस करो 4 नंबर मेथड कोन पोल शू को लैमिनेशन करो 5 नंबर मेथड कोन ब्रश शिफ्टिंग करो नोट पॉइंट कोन सर नोट पॉइंट एया होची मेनली टू मेथड आर यूज्ड टू रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मशीन यूजिंग कंपेंसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल सर ए दीटा मेथड बेसी व्यवहार करा जाउची कहितली ए फर्स्ट दीटा मेथड कोन इंटरपोल एंड कंपेंसेटिंग वाइंडिंग डिटेल डिस्कशन करिबा अबाउट कंपेंसेटिंग वाइंडिंग एंड इंटरपोल 100% क्वेश्चंस आसुची फर्स्ट डिस्कशन करिबा कंपेंसेटिंग वाइंडिंग इज एन एक्स्ट्रा वाइंडिंग कंपेंसेटिंग वाइंडिंग कोन सर गोटे एक्स्ट्रा वाइंडिंग प्लेस्ड इन द स्लॉट ऑफ द पोल शू इन द फील्ड वाइंडिंग सर फील्ड वाइंडिंग रे पोल शू रे को वाइंडिंग प्रेजेंट रहउची ना कंपेंसेटिंग वाइंडिंग एटा एक्स्ट्रा वाइंडिंग प्लेस कोठी ना पोल शू फील्ड वाइंडिंग रे पोल शू
Second point, a compensating winding use order neutralize cross magnetizing effect armature reaction under main point. Sir, compensating winding कौन ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ନା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ କରୁଛି କଣ ନା क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट एई वाटा मन मत कौन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आर्मेचर रिएक्शन अंडर मेन पोल जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होची ताको रिड्यूस होची. थर्ड पॉइंट, compensating winding is connected series with the armature winding in such way that is carry current opposite direction. Sir, compensating winding रे केमिति कनेक्टेड है ना series कहा संगरे ना आर्मेचर वाइंडिंग संगरे सीरीज कनेक्टेड है. Compensating winding produce mmf which oppose the mmf produced by the armature coil. Sir, compensating winding जेहेतु coil अछि सेठी mmf produce करिवो जहा कि opposition provided करिवो armature conductor जहा कि opposition provided करिवो armature. तापर आसिला compensating winding कोन कहले in absence of compensating winding cross magnetizing effect causes sparking at the commutator and short circuiting the whole armature winding. Sir, जदि compensating winding नथांता कोन हे थांता सर जदि compensating winding रो absence थांता ना सेते बेले cross magnetizing effect रो sparking produce हे थांता commutator and short circuit हे थांता armature winding. Compensating winding ampere turn per pole केते ना pole arc by pole pitch into ampere turn पर armature ampere turn per pole एटा फॉर्मूला. तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म के लिए देखिबा कोन ना इंटरपोल. पोल मध्य रे ए जो छोटिया पोलटा रहउची ता नाम कोन सर इंटरपोल. ए इंटरपोल आर आल्सो नोन एज कम्यूटेटिंग पोल. सर इंटरपोल लो अन्य नाम कोन सर इंटरपोल लो अन्य नाम होची कम्यूटेटिंग पोल. इंटरपोल हैव फ्यू टर्न एंड थिक वेयर. सर इंटरपोल केमिति तयारी सर कम नंबर ऑफ तार एवं थिक मोटा तार आर कनेक्टेड सीरीज विथ आर्मेचर. आर्मेचर सहित इंटरपोल केमिति लागि थाए ना इंटरपोल अन्य नाम होची कम्यूटेटिंग पोल. इंटरपोल थिक वेयर मोटा तार एंड फ्यू टर्न गुडिया हेता. इंटरपोल को हमें सीरीज कनेक्टेड करूछु आर्मेचर सहित. इंटरपोल आर प्लेस्ड बिटवीन टू मेन पोल. दीटा मेन पोल मझी रे हमर जनरली को पोल प्रेजेंट होई इंटरपोल. ए इंटरपोल पोलैरिटी फॉर ए जनरेटर सेम मेन पोल अहेड द डायरेक्शन. तर गोटे इंटरपोल पोलैरिटी केमिति डिसाइड करबा ना जनरेटर रो सेम मेन पोल अहेड जनरेटर अगर एमती जो पोल थिबो सेही पोल पोलैरिटी रहइबो इंटरपोल पोलैरिटी रहइबो. इंटरपोल पोलैरिटी मोटर सेम मेन पोल बिहाइंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. कारण डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मोटर जो दिगरे करथो तार ऑपोजिट दिगरे पछर बिहाइंड रे हमर कोन सेम पोलैरिटी रहइबो. The interpole of a DC machine is tapering shape. How shape होता है ना tapering shape in order to reduce saturation in the interpole. Saturation को reduce करिया पाए interpole टा जनरली how shape ना tapering shape रा व्यवहार करना है. Next one. The interpole polarity induce EMF which is known as commutating or reversing the EMF to minimize reactance EMF and hence spark illuminate. कौन कहले सर इंटरपोल लो पोलैरिटी रे हमर कोन ना इंटरपोल द्वारा किछि ईएमएफ इंड्यूस होछि जोटा कि हमर कोन ना रिएक्टेंस वोल्टेज प्रोड्यूस होछि जे कि इल्यूमिनेट कर दोछि स्पार्क. तापर आसिला नोट पॉइंट. नोट पॉइंट इंपोर्टेंट कहि जे कोन पीआई को हेतियो नोट पॉइंट है compensating winding and interpole used for same purpose but different term. से compensating winding हो कि इंटरपोल गोटाई पर्पस रे व्यवहार करा जाउची किंतु जन भितर डिफरेंस अछि. इंटरपोल प्रोड्यूस ईएमएफ फॉर न्यूट्रलाइज रिएक्टेंस ईएमएफ where compensating winding produce mmf. इंटरपोल ईएमएफ प्रोड्यूस करछि compensating oppose the mmf produce by the conductor. ये ईएमएफ प्रोड्यूस करके न्यूट्रलाइज करछि रिएक्टेंस से एमएमएफ प्रोड्यूस करके कंडक्टर को न्यूट्रलाइज करछि. एटी को होछि चेंज. एबे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जोटा कि आर्मेचर रिएक्शन और लोडेड कंडीशन रे डिफरेंट एग्जाम रे पडितिला ताको डिस्कशन करिवा समस्त चार सेक्शन में आंसर दो. क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी जल्दी फटाफट चार सेक्शन में लाइव आंसर दवा दरकार. एट अ नो लोड कंडीशन इन ए डीसी जनरेटर आर्मेचर रिएक्शन. नो लोड कंडीशन में कौन हुई आर्मेचर रिएक्शंस.
एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 2 एट नो लोड एमएनए एंड जीएनए नो लोड कंडीशन में एमएनए और जीएनए नो लोड कंडीशन में एमएनए और जीएनए एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर सी कोइंसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 द नेट फ्लक्स एट नो लोड जो आर्मेचर रिएक्शन है नो लोड रे नेट फ्लक्स रहे एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी परपेंडिकुलर टू बोथ जीएनए और एमएनए। क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ आर्मेचर रिएक्शन एमानक मध्य को टाइप का आर्मेचर रिएक्शन नुह आजिकल तो ओएचपीसी रे नॉट क्वेश्चन हम देखुछो को बडा पचारुछ एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सर मैग्नेटाइजेशन क्रॉस मैग्नेटाइजेशन अछि डीमैग्नेटाइजेशन अछि मैग्नेटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5 क्रॉस मैग्नेटाइजेशन मेनली कॉज क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में कौन हुए एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी डिस्टोर्शन द मेन फील्ड फ्लक्स distortion the main field. Question number 6 cross magnetizing effect is most prominent when the iron core cross magnetizing effect most prominent when the iron core saturated na unsaturated excellent समस्तंकर correct answer option number B unsaturated. Question number 7 in cross magnetization armature flux interact with the main field flux क्रॉस मैग्नेटाइजेशन ने आर्मेचर फ्लक्स जो इंटरैक्ट करूची मेन फील्ड फ्लक्स केते एंगल एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 इन ए डीसी मोटर लीडिंग पोल टी बिकम्स गोटे डीसी मोटर रे लीडिंग पोल टी रो वैल्यू कोन एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर स्ट्रॉन्गर। क्वेश्चन नंबर 9 द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न फॉर पोल डिपेंड्स अपॉन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग रे एम्पियर टर्न पोल कहा पर निर्भर करूची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर अछि आर्मेचर करंट अछि नंबर ऑफ पोल अछि। क्वेश्चन नंबर 10 फॉर लैप वाइंडिंग आर्मेचर कंडक्टर करंट गोटे लैप वाइंडिंग रे आर्मेचर कंडक्टर करंट केते हो लैप वाइंडिंग रे आर्मेचर कंडक्टर ऑप्शन नंबर सी आईए पर पोल। क्वेश्चन नंबर 11 फॉर वेव वाइंडिंग रे आर्मेचर कंडक्टर केते करंट फ्लो पर वेव वाइंडिंग रे आर्मेचर कंडक्टर ऑप्शन नंबर बी IA/2। क्वेश्चन नंबर 12 डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट कॉजेस डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट कॉजेस एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रिडक्शन इन टोटल फ्लक्स डीमैग्नेटाइजेशन जो टोटल फ्लक्स कौन हुए ना रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 डीमैग्नेटाइजेशन अकर्स व्हेन डीमैग्नेटाइजेशन केतेबेले घटे एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रशेस आर शिफ्टेड फ्रॉम जीएनए brushes are shifted from GN. Question number 14 which of the following not an effect of armature reaction एमानक मध्यरु कोटा आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट नुह डिस्टोर द मेन फील्ड फ्लक्स अछि शिफ्ट एमएन होची अछि रिड्यूस मेन फील्ड फ्लक्स इंक्रीज जनरेटर वोल्टेज एटा नुह। क्वेश्चन नंबर 15 स्पार्किंग एट द ब्रश इज मेनली ड्यू कौन पाइन गोटे
डीसी मशीन रे स्पार्किंग हुए एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर पोर कम्यूटेशन जो स्पार्किंग क्वेश्चन नंबर 16 which method is mainly used to reduce armature reaction को मेथड रे आर्मेचर रिएक्शन को हमें रिड्यूस कर एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कंपेंसेटिंग वाइंडिंग आउ इंटरपोल द्वारा हमें आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस कर क्वेश्चन नंबर 17 कंपेंसेटिंग वाइंडिंग इज प्लेस कंपेंसेटिंग वाइंडिंग एमानक मध्यरु को जगह रे रखा हो एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इन द पोल शू स्लॉट पोल शू रे रखा जाए क्वेश्चन नंबर 18 कंपेंसेटिंग वाइंडिंग इज कनेक्टेड कंपेंसेटिंग वाइंडिंग कहा संगरे कनेक्टेड करा जाय एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इन सीरीज विथ आर्मेचर कंपेंसेटिंग वाइंडिंग इन सीरीज विथ क्वेश्चन नंबर 19 इंटरपोल आर आल्सो नोन एज एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर इंटरपोल को हमें ऑक्सिलरी पोल बोली कहउछ इंटरपोल को आल्सो नोन एज हमें कोन कहउछ ना सॉरी इंटरपोल को हमें कम्यूटेटिंग पोल कहउछ इंटरपोल को हमें कम्यूटेटिंग पोल कहउछ क्वेश्चन नंबर 20 द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंटरपोल काम कौन करिवो रिड्यूस स्पार्किंग करूची प्रोड्यूस कम्यूटेटिंग रिवर्सिंग ईएमएफ प्रोड्यूस कम्यूटेटिंग एंड रिवर्सिंग ए जो 20 टा डिस्कशन कली नो लोड कंपेंसेटिंग वाइंडिंग मन पे लोग कहार केतरा क्वेश्चन 20 टा ठीक है कि समस्त चार सेक्शन में डिस्कशन 18 टा एक्सीलेंट वेरी गुड आर्मेचर रिएक्शन तमर कंप्लीट हैला आर्मेचर रिएक्शन 30 टा प्रीवियस क्वेश्चंस देथिल निहाती भाबरे कोन गोटे क्वेश्चंस तमर का एग्जाम आस समस्त प्रैक्टिस करिवो एवं रिवीजन करिवो रहउची जय जगन्नाथ हमें डीसी जनरेटर क्लास रो ऑलरेडी पांचटा क्लास डिस्कशन करि देथिले आज हमें डीसी जनरेटर रो 6 नंबर क्लास को स्टार्ट करिवो ए डीसी जनरेटर पांचटा क्लास डीसी जनरेटर रो क्लास नंबर 5 पर्यंत जो माने देखिनो और रिकॉर्डेड सेक्शन ने वीडियो अछि समस्त देखिनो आजिरो टारगेट कोन तमन को कोन डिस्कशन करेबी सर आजिरो टारगेट होची कोन ना कम्यूटेशन कोन आजिरो टारगेट कोन सर कम्यूटेशन कोन कम्यूटेशन पीरियड कोन रिएक्टेंस वोल्टेज कोन गुड कम्यूटेशन कोन पोर कम्यूटेशन कोन कॉज ऑफ पोर कम्यूटेशन कोन मैकेनिकल कॉज कोन इलेक्ट्रिकल कॉज कोन मेथड ऑफ इंप्रूविंग कम्यूटेशन कोन ब्रश शिफ्टिंग मेथड कोन रेजिस्टेंस मेथड कोन ईएमएफ मेथड कोन पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर कोन रीजन कनेक्टेड फॉर पैरेलल ऑपरेशन कोन कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन कोन इक्वलाइजर बार कोन आज रो टॉपिक रे ए 12 टा टॉपिक को आज हमें भलो भाबरे डिस्कशन करिबा जो माने भी रेडी अच्छो क्लास टा को अटेंड करिया पाई कि समस्त चार सेक्शन ने यस लगिलो रेडी बोली आज रो टॉपिक रे अल्टीमेटली गोल मोर कोन तमन को कम्यूटेशन सिखेबी कम्यूटेशन कोन सेकंड जिंस सिखेबी कोन ना पैरेलल ऑपरेशन आज रो टॉपिक कोन तमन को दीटा टॉपिक भलो भाबरे डिस्कशन करेबी जहार ना प्रथम टॉपिक ना कोन कम्यूटेशन कोन और द्वितीय टॉपिक पैरेलल ऑपरेशन समस्त रेडी तो जो माने भी रेडी अच्छा क्लास टा को अटेंड करिया पे समस्त चार सेक्शन लिखि दियो यस बोली वेरी गुड देख
लास्ट देखिबा कम्यूटेशन the process of reversal of current in the short circuited armature coil is called commutation सर कम्यूटेशन कहिले कौन बुझिबो सर कम्यूटेशन कहिले मु एया बुझुची सर गोटे आर्मेचर कॉइल रे शॉर्ट सर्किट हेले जो करंट रिवर्स हुए सेही प्रोसेस को मु कम्यूटेशन कहूची कम्यूटेशन कहिले कौन बुझिबो सर गोटे आर्मेचर कॉइल जेते बेले शॉर्ट सर्किट हुए सेठी जो करंट रिवर्सल प्रोसेस हुए सेही करंट रिवर्सल प्रोसेस को मु कहूची कम्यूटेशन सेकंड पॉइंट this process of reversal takes place when coil passing through the interpolar axis the coil is short circuited through the commutator segment and brush जेते बेले सर कम्यूटेशन होउची सेते बेले कोन को एक्सिस रे होउची ना इंटरपोलर एक्सिस रे करंट कोन रिवर्सल होउची आ कम्यूटेटर आ ब्रश सेगमेंट भितरे कॉइल टाको शॉर्ट सर्किटेड होउची नेक्स्ट पॉइंट कोन कहिला ना कम्यूटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन एसी टू डीसी और वाइस वर्सा सर कम्यूटेशन कोन सर कम्यूटेशन होउची गोटे प्रोसेस जो थिरे कि एसी को डीसी रे कन्वर्ट करि परिबो वाइस वर्सा माने डीसी को एसी रे कन्वर्ट करिबो ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ कम्यूटेशन डीसी जनरेटर आर नॉट यूजुअली डिजाइन बियॉन्ड 650 वोल्ट कोन ना एक कम्यूटेशन कारण जोगु सर गोटे डीसी जनरेटर जनरेट केते करि पारुनी ना जनरेट 650 वोल्ट ऊपर को से जनरेटर करि पारु नाही कोन सिकिला कम्यूटेशन कहिला माने सर वो केते के जिंस श्योर हे गेली कोन सर कम्यूटेशन होउची गोटे प्रोसेस जो थिरे कि आर्मेचर कॉइल शॉर्ट सर्किट हेला बेले जो करंट रिवर्सल प्रोसेस होउची जनरली ताको हमें कम्यूटेशन कहउछु एक कम्यूटेशन कोठी होउची ना इंटरपोलर एक्सिस रे कम्यूटेशन ने एसी को डीसी होउची कि डीसी को एसी होउची वाइस वर्सा होउची आ एक कम्यूटेशन न लिमिटेशन जो डीसी जनरेटर हमें 650 वोल्ट जाय जनरेट कर पारुची तापर आसिला कम्यूटेशन पीरियड तापर आसिला कोन इले कम्यूटेशन पीरियड एक कम्यूटेशन पीरियड कहले कोन बुझिबो ना द ड्यूरेशन फॉर व्हिच कॉइल रिमेन शॉर्ट सर्किटेड कॉल्ड कम्यूटेशन पीरियड कोन कहिला सर द ड्यूरेशन फॉर व्हिच ए कॉइल रिमेन शॉर्ट सर्किटेड इज कॉल्ड कम्यूटेशन पीरियड कम्यूटेशन पीरियड कहले कोन बुझिबो सर जो पीरियड रे कॉइल टा शॉर्ट सर्किट हेतला सेही टाइम पीरियड को हमें जनरली कोन कहउची ना कम्यूटेशन पीरियड देखो कहली तुमको ज्वर होला कि जे कोन जिंस तमर देह खराब होला किछि समय पय होची से जो समयटा को तमे कोन कहलो ना कम्यूटेशन पीरियड जो समय रे जो पीरियड रे करंट रिवर्सल होची से पीरियड को हमें जनरली कोन कहउचे ना कम्यूटेशन पीरियड बोली कहउचे तापर आसीला नोट पॉइंट ए नोट पॉइंट रो कम्यूटेशन ना डिफरेंट एग्जाम रे तमर सब बेले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोन पड़े ना value of commutation period 1/500 second और 2 मिलीसेकंड very important एटा बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पचारि कोन सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पचारि सर कम्यूटेशन पीरियड रो वैल्यू केते ना कम्यूटेशन पीरियड रो वैल्यू होची 1/500 सेकंड और ताको मिलीसेकंड रे कन्वर्ट करले सर 2 मिलीसेकंड होची कम्यूटेशन पीरियड रो टाइम सेकंड पॉइंट there is a delay in reversal of current due to inductive property of the coil commutation जदी डिले होची कहा जोगु होची करंट रिवर्सल ना इंडक्टिव कॉइल जो कोन ना इंडक्टिव प्रॉपर्टी कॉइल रो इंडक्टिव प्रॉपर्टी जोगु बेले बेले कम्यूटेशन रिवर्सल ले डिले हुए प्रोसेस थर्ड पॉइंट when the current tries to reverse during commutation the coil inductance create a voltage called as reactance voltage सर कम्यूटेशन पीरियड रे गोटे वोल्टेज इंड्यूस हेतै जहार ना कोन ना रिएक्टेंस वोल्टेज कोन कहिला सर कम्यूटेशन पीरियड रे गोटे वोल्टेज इंड्यूस हेतै सेही वोल्टेज ना कोन ना रिएक्टेंस वोल्टेज ए रिएक्टेंस वोल्टेज कोन
ना ए डिले जो कॉइल टा प्रोड्यूस होची कॉइल इंडक्टिव प्रॉपर्टी जो वोल्टेज इंड्यूस होता है कम्यूटेशन समय रे सेही वोल्टेज टाको हमें रिएक्टेंस वोल्टेज कहू। 4 नंबर although the coil has very low resistance जो coil व्यवहार करा जाउची तार प्रॉपर्टी कोन ना लो resistance the reactance voltage can cause a large current to flow in the short circuited coil during commutation this lead to the heavy sparking कम कहिबा सर जो कॉइल व्यवहार करा जाउची कम्यूटेशन बेले तार प्रॉपर्टी कोन रहउची से कॉइल रेजिस्टेंस रहउची लो रहउची आउ से कॉइल ले जो रिएक्टेंस वोल्टेज डेवलपमेंट होउची ता कारण रु से कॉइल ले लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होउची ड्यूरिंग कम्यूटेशन जा फल रे से कोन करूची ना ओडे हेवी स्पार्किंग जनरेट करूची। नेक्स्ट पॉइंट by shifting the brush slightly हम कहला by shifting the brush slightly a small voltage is induced in the coil during commutation हम कहला सर ब्रश शिफ्टिंग रे कोन होबो ना स्मॉल वोल्टेज ता इंड्यूस होची कम्यूटेशन में the voltage help to cancel out the reactance voltage and reduce sparking फल रे कोन होबो जो वोल्टेज ता इंड्यूस होबो से वोल्टेज कम करिवो कैंसल आउट कर दबो हमर रिएक्टेंस वोल्टेज जहा फल रे हमर कोन ना स्पार्किंग ता रिड्यूस कोन कहि सर कम्यूटेशन कहिला माने मो माइंड को कोन स्टाइल करछि सर कम्यूटेशन कहिला माने मो माइंड रे मो एति कि सियोर सर करंट रिवर्सल प्रोसेस आर्मेचर रो करंट रिवर्सल प्रोसेस को हमें कम्यूटेशन कहउछु ए कम्यूटेशन जो टाइम रे टेकन रहउछि कम्यूटेशन हवा पाई से टाइम टेकन को हमें कम्यूटेटिंग पीरियड बोली कहउछु कम्यूटेशन पीरियड होउछि टाइम केते रहउछि 2 मिली सेकंड रहउछि जो कम्यूटेशन रे हमर कोन इंडक्टिव प्रॉपर्टी कॉइल इंडक्टिव प्रॉपर्टी निया जाय कि सेति गोटे रिएक्टेंस वोल्टेज डेवलपमेंट होउछि आ कॉइल प्रॉपर्टी होउछि लो रेजिस्टेंस आ जदि कॉइल ब्रश ता तमे शिफ्ट करिवो गोटे स्मॉल वोल्टेज इंड्यूस हो ए स्मॉल वोल्टेज इंड्यूस होला माने से रिएक्टेंस वोल्टेज को मिनिमाइज करे जहा फल रे हम स्पार्किंग ता कोन हो ना रिड्यूस हो। तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन आसिला ना रिएक्टेंस वोल्टेज reactance voltage in a DC generator if commutation is linear linear commutation पाई reactance voltage रो वैल्यू केते ना L into 2I divided by DC I कोन ना current through the conductor L कोन ना self inductance DC कोन ना commutation reactance voltage in DC generator commutation is sinusoidal formula कोन 1.11 L into TI सब बेले ऊपरटा लिनियर रो क्वेश्चंस आसे गोटे एग्जांपल दोची समस्त मते चार्ट सेक्शन में आंसर दो मो कहले गोटे डीसी जनरेटर रे करंट रो वैल्यू केते ना 2 एंपियर इटसेल्फ इंडक्टेंस रो वैल्यू 10 हेनरी आ कम्यूटेटिंग टाइम होउची केते ना 1 सेकंड 1 second then calculate करो कौन ना reactance voltage then calculate करो कौन reactance समस्त चार्ट सेक्शन ने प्रॉब्लम रो आंसर दियो केही भी साइलेंट रहिबोनी ए टाइप रो एग्जाम रे न्यूमेरिकल बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पचारिछि मध्य गोटे डीसी जनरेटर रे आर्मेचर कंडक्टर रे 2 एंपियर करंट फ्लो होची अदर सेल्फ इंडक्टेंस रो वैल्यू 10 हेनरी आ कम्यूटेटिंग टाइम होची 1 सेकंड देन कैलकुलेट कर रिएक्टेंस वोल्टेज जो माने न जानि पारलो सॉल्यूशन कोन कहला सर रिएक्टेंस वोल्टेज लिनियर रो फार्मूला कोन L रिएक्टेंस वोल्टेज सर L into 2I divided by T इंडक्टेंस केते देछि सर 10 into 2 करंट केते देछि सर 2 एंपियर डिवाइडेड बाय कम्यूटेटिंग टाइम के 1 2 दुगुणे 4 10 40 रिएक्टेंस वोल्टेज केते हला 40 जो माने भी बुझी पारिलो रिएक्टेंस वोल्टेज कैलकुलेशन करिला ओटे लीनियर कम्यूटेशन सिस्टम रे ठीक है समस्त मते चार्ट सेक्शन में यस लिखिला सर करि पारि बोली रिएक्टेंस वोल्टेज कैलकुलेशन करि पारि मते ए टाइप रो प्रॉब्लम करि
तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म के लिए देखिबा गुड कम्यूटेशन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कौन सर गुड कम्यूटेशन। Good commutation means that the current in the armature coil reverses smoothly when it passes under the brush without any sparking. Sir, ଯେତେବେଳେ गुड कम्यूटेशन कहिले कोन बुझिबो सर ଯେତେବେଳେ आर्मेचर कॉइल ले करंट रिवर्स हुए स्मूथली विथआउट स्पार्किंग तेबेले सेही प्रकार कम्यूटेशन को हमें गुड कम्यूटेशन बोली कहू। जे पचारिबो तुमको गुड कम्यूटेशन कहिले कोन बुझिबो सर आर्मेचर कॉइल ले करंट रिवर्स हला बेले जदी स्मूथली हे गला करंट रिवर्सल विथआउट एनी स्पार्किंग सेही प्रकार कम्यूटेशन को हमें गुड कम्यूटेशन कहता। सेकंड गुड कम्यूटेशन मींस तापर देखो गुड कम्यूटेशन माने करंट रिवर्सल स्मूथ है। तापर आसीला पोर कम्यूटेशन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन गुड पर कोन सर पोर कम्यूटेशन। पोर कम्यूटेशन कहिले कोन कोन बुझिबो सर पोर कम्यूटेशन कहिले मु एया बुझुची पोर कम्यूटेशन हापे when the current in the coil does not reverse smoothly causing spark at the brush। सर पोर कम्यूटेशन कहिले कोन बुझिबो सर करंट रिवर्सल हैला बेले जदी कॉइल ले स्मूथली करंट रिवर्सल न हुए स्मूथली न हले स्पार्किंग प्रोड्यूस हो ब्रश रे सेही प्रकार कम्यूटेशन को हमें जनरली कोन ना पोर कम्यूटेशन कहू। पोर कम्यूटेशन कहिले कोन बुझिबो सर जते बेले गोटे आर्मेचर कॉइल करंट रिवर्सल हैला बेले स्मूथली रिवर्सल न होय कि जदी ब्रश रे स्पार्किंग प्रोड्यूस हैला सेही प्रकार कम्यूटेशन को जनरली हमें कोन ना पोर कम्यूटेशन कहता। तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन ना कॉज ऑफ पोर कम्यूटेशन। पोर कम्यूटेशन का कारण कोन सर पोर कम्यूटेशन कैन ऑक्योर ड्यू टू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल रीजन। बहुत गुडे कारण अछि जेमिति मैकेनिकल किछि रीजन अछि आ इलेक्ट्रिकल किछि रीजन जो पोर कम्यूटेशन हेता। प्रथम देखिबा मैकेनिकल कोन कोन कारण हे पारे ना ऑन इवन कम्यूटेटर सरफेस नॉन यूनिफॉर्म ब्रश प्रेशर और वाइब्रेशन इन ब्रश होल्डर ए तीनटा होछि कोन ना मैकेनिकल कॉज। पोर कम्यूटेशन पाई तीनटा मैकेनिकल कॉज कोन सर ऑन इवन कम्यूटेटर सरफेस नॉन यूनिफॉर्म ब्रश प्रेशर वाइब्रेशन इन ब्रश होल्डर जो मैकेनिकल कॉज जो पोर कम्यूटेशन। समिति इलेक्ट्रिकल कॉज कोन हे पारे ना ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल ड्यूरिंग कम्यूटेशन। सर कम्यूटेशन समय रे जो ईएमएफ इंड्यूस सेटा होची इलेक्ट्रिकल कॉज। तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म डिस्कशन करिला मेथड ऑफ इंप्रूविंग कम्यूटेशन। सर एक कम्यूटेशन ता भलो जिंस ना खराब जिंस सर कम्यूटेशन ता होची गोटे खराब जिंस। एक कम्यूटेशन को इंप्रूव करिवा पई हम पाखरे केतेटा मेथड अछि सर कम्यूटेशन को इंप्रूव करिवा पई हम पाखरे तीनटा मेथड अछि। मेथड नंबर 1 कोन सर ब्रश शिफ्टिंग मेथड व्यवहार करि परिबे। मेथड नंबर 2 कोन ना रेजिस्टेंस मेथड व्यवहार करि परिबे। मेथड नंबर 3 कोन ना ईएमएफ मेथड करिबे। ए तीनटा जाक मेथड इंपोर्टेंट तमरा एग्जाम रे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने पचारि कोन पचारला ना कम्यूटेशन को इंप्रूवमेंट करिया पई हमें को मेथड को व्यवहार करू। सर तीनटा मेथड गोटे होची ब्रश शिफ्टिंग मेथड गोटे होची रेजिस्टेंस मेथड आ गोटे होची ईएमएफ मेथड। सेथिरु प्रथम मेथड ना डिस्कशन करिबा जहार ना कोन पिले ब्रश शिफ्टिंग मेथड। The position of a brush is shifted slightly in the direction of rotation for generator and opposite for the motor। कौन कहिला सर ए ब्रश शिफ्ट मेथड रे ये कौन हबो ना स्लाइटली डायरेक्शन ऑन रोटेशन जनरेटर and opposite for motor। This make a reduce sparking and improve the current reversal। ये ब्रश शिफ्टिंग मेथड कौन सर ब्रश को हमें शिफ्ट करिबा। ब्रश को शिफ्ट केमिति करिबा ना डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जनरेटर रो जो डायरेक्शन में जनरेटर जो ब्रश शिफ्ट करिबा सर जनरेटर जो डायरेक्शन ब्रश शिफ्ट को से डायरेक्शन
आ जदि मोटर केस कंपैरिजन करिया मोटर जो डायरेक्शन बुलुथिबो तार अपोजिट डायरेक्शन में आमे कोन ब्रश को शिफ्ट करिया जहा फल रे स्पार्किंग ता रिड्यूस हो आ करंट रिवर्सल मध्ये इंप्रूवमेंट हे तापर सेकंड मेथड कोन ना रेजिस्टेंस मेथड ए हाई रेजिस्टेंस ब्रश लाइक कार्बन ब्रश इन यूज कोन कहली को ब्रश व्यवहार करले आमे व्यवहार करि करे कम्यूटेशन को इंप्रूव करि परिबा ना हाई रेजिस्टेंस को ब्रश रे तयारी ना कार्बन ब्रश तो resistance limit the current during reversal, making it more gradually which reduce circulating current and sparking. Sir, जदि आपण हाई रेजिस्टेंस रो कार्बन ब्रश प्रेफर करिवे तेबे कम्यूटेशन को मतलब हमर कोन ना इंप्रूवमेंट करिवे। 3 नंबर मेथड कोन सर ईएमएफ मेथड। 3 नंबर मेथड कोन ना ईएमएफ मेथड। इट इज आल्सो नोन एज कम्यूटेटिंग पोल और इंटरपोल। ईएमएफ मेथड रो अन्य नाम कोन ना आपको कम्यूटेटिंग पोल कहउछथि बा इंटरपोल मध्ये कहउछ which has winding to produce a small commutating EMF which current reverses smoothly in the coil and neutralize the reactance voltage. Sir, EMF method रे कोन EMF method कोठी काम करूछि ना कम्यूटेटिंग पोल बा इंटरपोल ए इंटरपोल व्यवहार करिवा द्वारा हमें कम्यूटेशन को इफेक्ट को रिड्यूस करूछि ए इंटरपोल ले कोन गोटे स्मॉल अमाउंट रो EMF इंड्यूस होछि जहा फल रे से रिएक्टेंस को रिड्यूस कर दोछि कोन ना रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज कर दोछि जहा फल रे कम्यूटेशन का हमर इंप्रूव होछि तीनटा मेथड रो गोटे मेथड जो माने भी कम्यूटेशन क्लियर हैला ठीक समस्त चार्ट सेक्शन में इस लिख देला सर कम्यूटेशंस मोर क्लियर हो वेरी गुड तापर डिस्कशन करिबा कोन नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ए डीसी जनरेटर व्हेन two or more than DC generator are connected together supply power to common load parallel operation कहिले कोन बुझिबो सारे दीटा किबा दीटा रो अधिक डीसी जनरेटर जदि गोटे कॉमन लोड रो पावर सप्लाई करंती तेबेले से डीसी जनरेटर जानिबो पैरेलल ऑपरेशन कहिले कोन बुझिबो सर दीटा किबा दीटा रो अधिक डीसी जनरेटर एकाठी पावर सप्लाई करूछंती गोटे कॉमन लोड को तेबेले जानिबो जनरेटर ता कोन ना पैरेलल ऑपरेशन रीजन टू कनेक्ट जनरेटर इन पैरेलल तेबेले हमें पैरेलल कोन पाई करिबा पैरेलल ऑपरेशन पांचटा मेन रीजन जो सर एई कारण जो मु जनरेटर को पैरेलल ऑपरेशन करू रीजन नंबर 1 कोन सर कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस कंटिन्यूटी सर्विस दवा मु जनरेटर को पैरेलल ऑपरेशन करू छी पॉइंट नंबर 2 कोन सर बेटर एफिशिएंसी पाया पाई मु जनरेटर को पैरेलल ऑपरेशन करू छी पॉइंट नंबर 3 कोन इजी मेंटेनेंस एंड रिपेयर पाई पैरेलल ऑपरेशन करा जाय 4 नंबर पॉइंट कोन इंक्रीजिंग प्लांट कैपेसिटी पाई पैरेलल ऑपरेशन करा जाय 5 नंबर पॉइंट कोन व्हेन द लार्ज सिंगल यूनिट इज नॉट अवेलेबल यदि बड़ गोटे सिंगल यूनिट अवेलेबल नाही जनरेटर में जनरेटर को पैरेलल ऑपरेशन करके काम रे ताको व्यवहार करि कोन कहिला सर जेते बेले मु गोटे जनरेटर को पैरेलल ऑपरेशन करूची ए पांचटा गुण को देखि पैरेलल ऑपरेशन करूची पॉइंट नंबर 1 कोन सर कंटिन्यू सर्विस दे पारे पॉइंट नंबर 2 कोन सर एडो बेटर एफिशिएंसी पाइबा पॉइंट नंबर 3 कोन सर मेंटेनेंस रिपेयर अपने इजी हो पॉइंट नंबर 4 कोन प्लांट कैपेसिटी इंक्रीज हो पॉइंट नंबर 4 कोन जदी सिंगल यूनिट जनरेटर मिलो लार्ज यूनिट तबले पैरेलल ऑपरेशंस करी हमें ताको प्रोवाइडेड कर करी तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कोन ना कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर सर पैरेलल ऑपरेशन मन इच्छा करिबा नै सेति पय किछि कंडीशन अछि जोटा कि पैरेलल ऑपरेशन पय निहाती दरकार केतटा कंडीशन मेनली ना चारिटा कंडीशन को प्रिपेयर करा कंडीशन नंबर 1 कोन ना टर्मिनल वोल्टेज मस्ट बी सेम होबा दरकार जदि गोटे डीसी जनरेटर 220 वोल्ट चलतो ये भी मध्य 220 वोल्ट चलेबा दरकार टर्मिनल वोल्टेज सेम होबा दरकार
सेकंड पॉइंट कोन ना पोलैरिटी ऑफ द जनरेटर मस्ट बी आइडेंटिकल रहबा दरकार पोलैरिटी से माने कर आइडेंटिकल रहबा दरकार थर्ड नंबर पॉइंट कोन सिमिलर प्राइम ओवर कैरेक्टरिस्टिक रहबा दरकार चार नंबर कोन सेम वोल्टेज लोड कैरेक्टरिस्टिक रहबा दरकार सेम वोल्टेज वर्सेस लोड कैरेक्टरिस्टिक रहबा दरकार कोन कोन पहिला चारटा कंडीशन सर टर्मिनल वोल्टेज सेम रहिबो पोलैरिटी सेम रहिबो सिमिलर प्राइम ओवर कैरेक्टरिस्टिक और सेम वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक मध्य रहिबो तापर आसिला नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन इक्वलाइजर बार नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन ना इक्वलाइजर बार an equalizer bar is a conductor that connect the series field or negative resistance of compound generator working in parallel to ensure equal load sharing and stable operation. Sir, stable operation करिबा पई गोटे कंपाउंड जनरेटर को आमे इक्वलाइजर बार व्यवहार करू इक्वलाइजर बार कोन पई व्यवहार करू सर इक्वलाइजर बार व्यवहार करिबा द्वारा गोटे कंपाउंड जनरेटर हमर कोन करे ना इक्वलाइजर बार व्यवहार करिया द्वारा कंपाउंड जनरेटर स्टेबल ऑपरेशन होय तापर आसिला नोट पॉइंट ए इक्वलाइजर रो नोट पॉइंट रे बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अछि कोन ना पॉइंट नंबर 1 कोन द इक्वलाइजर बार कीप द वोल्टेज एंड करंट बैलेंस मेकिंग श्योर द जनरेटर cooperate and the system is stay stable इक्वलाइजर बार व्यवहार करिबा द्वारा मोर सिस्टम ता स्टेबल होय पॉइंट नंबर 2 कोन इट इज आल्सो यूज्ड इन डीसी सीरीज जनरेटर इक्वलाइजर बार कोड व्यवहार करा जाय मेनली ना डीसी सीरीज जनरेटर इट इज थिक कॉपर इट इज आल्सो यूज्ड कोन it is thick copper bar with very low resistance equalizer bar used to stop circulating current equalizer ring can be used lap on armature equalizer ring kon na lap on kon कहला सर इक्वलाइजर बार पांचटा पॉइंट मु कोन सिखि ना सर प्रथम पॉइंट ए सिखिली जे इक्वलाइजर बार को व्यवहार करिबा द्वारा वोल्टेज और करंट कोन होची बैलेंस होची इक्वलाइजर बार डीसी सीरीज जनरेटर रे एप्लीकेबल करा जाउछ जो इक्वलाइजर बार गोटे थिक कॉपर बार तयारी आकार प्रॉपर्टी होची लो रेजिस्टेंस इक्वलाइजर बार यूज करूची स्टॉप करूची सर्कुलेटिंग करंट और इक्वलाइजर बार केवल लैप वुंड पई व्यवहार होय वुंड पई इक्वलाइजर बार व्यवहार करा जाउ नाही तापरे अंडर कंपाउंड डीसी जनरेटर डज नॉट नीड इक्वलाइजर फॉर सैटिस्फैक्टरी पैरेलल ऑपरेशन ए पॉइंट इंपोर्टेंट बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पछन कोन सर एमिति को जनरेटर कोंतु जो जनरेटर पय इक्वलाइजर बार व्यवहार करा जाय अंडर कंपाउंड डीसी जनरेटर पय इक्वलाइजर बार व्यवहार डीसी शंट जनरेटर डज नॉट नीड इक्वलाइजर बार फॉर सैटिस्फैक्टरी पैरेलल डीसी शंट जनरेटर रे आउ अंडर कंपाउंड जनरेटर रे हम जनरल ए बीटा इंपोर्टेंट मन रखिबो शंट जनरेटर आउ अंडर कंपाउंड जनरेटर रे इक्वलाइजर बार व्यवहार एबे किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिबा जोटा तमरो प्रीवियस ईयर एग्जाम रे आसी क्वेश्चन नंबर 1 The process of reversal of current in the short circuited armature coil is called as सर करंट रिवर्सल प्रोसेस को हमें कोन कहू छी करंट रिवर्सल प्रोसेस एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन नंबर सी कम्यूटेशन कहू जे पचारिबो पिले कम्यूटेशन कहिले कोन बुझिबो ना करंट रिवर्सल प्रोसेस को हमें कहू छी कम्यूटेशन क्वेश्चन नंबर 2 during commutation the armature coil short circuited through commutation ने armature coil टा जो short circuited होची क्या एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर सी कम्यूटेटर सेगमेंट एंड ब्रश सहित शॉर्ट सर्किट होची क्वेश्चन नंबर 3 the duration for which coil remains short circuited no जो coil टा short circuit होची से टाइम ड्यूरेशन को हमें कोन कहूची
एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कम्यूटेशन पीरियड। कम्यूटेशन पीरियड कहले कोन बुझिबो सर जो पीरियड रे हमर कॉइलटा शॉर्ट सर्किट होची सेही टाइम को हम जनरली कहूची कम्यूटेशन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 4 the approximate value of commutation period ro approximate value केते मिलीसेकंड। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 मिलीसेकंड और 1/5 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 reactance voltage during commutation is mainly produced reactance voltage commutation mainly produced। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सेल्फ इंडक्टेंस इन द आर्मेचर कॉइल। क्वेश्चन नंबर 6 गुड कम्यूटेशन मींस गुड कम्यूटेशन कहिले तमे कोन बुझिबो। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करंट रिवर्स इन स्मूथली विदाउट स्पार्किंग। करंट रिवर्स स्मूथली विदाउट स्पार्किंग कहिले हमें गुड कम्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 7 which of the following not method of improving commutation एमान को मध्यरु एमिति को मेथड अछि जोटा कि कम्यूटेशन इंप्रूव में हेल्प करे। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इंक्रीजिंग आर्मेचर स्पीड। सारा ब्रश शिफ्टिंग मेथड जो कम्यूटेशन इंप्रूव होची रेजिस्टेंस मेथड अछि इंटरपोल अछि। क्वेश्चन नंबर 8 which of the following is a electrical cause for poor commutation एमान को मध्यरु इलेक्ट्रिकल कॉज कोटा पोर कम्यूटेशन का इलेक्ट्रिकल कॉज। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल ड्यूरिंग कम्यूटेशन। ईएमएफ इंड्यूस्ड कॉइल ड्यूरिंग कम्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 9 which condition is essential for parallel operation of DC generator एमान को मध्यरु को कंडीशन ता एमिति एसेंशियल बा गुरुत्वपूर्ण फॉर पैरेलल ऑपरेशन। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सेम टर्मिनल वोल्टेज आइडेंटिकल पोलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 10 द मेन पर्पस ऑफ इक्वलाइजर बार इन ए डीसी कंपाउंड जनरेटर। डीसी कंपाउंड जनरेटर रे जो इक्वलाइजर बार व्यवहार करा जाउची तार मेन पर्पस कोन। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एंश्योर इक्वल लोड शेयरिंग एंड स्टेबल पैरेलल ऑपरेशन करिबा पय हम इक्वलाइज। ए जो 10टा क्वेश्चन डिस्कशन कली कहारे केतरा क्वेश्चन ठीक केला के समस्त मते चैट सेक्शन मेसेज कर सर मोर एतिकिटा क्वेश्चन ठीक केला। वेरी गुड जो माने भी भला रेस्पोंड देछ सम 10 10 9 वेरी गुड। एतिकी रे हमर डीसी जनरेटर क्लास ता पूरा सक्सेसफुल भाबरे कंप्लीट है। जो माने भी देखिन अराउंड केते डीसी जनरेटर ता 4.4 4 5 घंटा भीतर तुमको डीसी जनरेटर ता कंप्लीट करे छी। भल से सब तक पार्ट को भल भाबरे डिटेल ले देखिबो निहाती भाबरे जे कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दाओ समस्त को हेल्पफुल होबा निहाती रे किछि शिक्षा को पाइ जो माने लास्ट पर्यंत क्लास ता को देखुतिला बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगेन। समस्त पीडीएफ समस्त को शेयर कर देछि समस्त देखि नबो रहउछि जय।